care everything. देखिए भाई, आप जरा रेडी हो जाना। 10:15 भी स्टार्ट है। यस सर। और 5 मिनट तो और है। हाँ एग्जैक्ट 5 मिनट। यस सर। ऑडियो चेक ले लो। हेलो हेलो 1 2 3 माइक ठीक है आपका मेरा ठीक है ठीक है ओके। हेलो 1 2 3 4 ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं सर। रेडी? ऐसे से विल टेक 5 मिनट्स ओके। आप तो सेट कर दो सर। वी आर रेडी। So the same mode 1 2 3 4 5. and 4 Yes. You want to be two? शुरू करें। But this fifth. They go on tinkering me. I don't mind otherwise. कि वो बोलेगा फ्रेंड से बाहर जा रहा है, इधर है उधर। नहीं सर, कोई दिक्कत, थोड़ा बहुत मैनेजेबल है। इतना जब ज्यादा हो जाता है तभी खींचते रहते हैं। और somebody ये हिंदी लिटरेचर वाले काफ़ी आ रहे हैं, तो somebody has to focus on their optional. I don't know much about Hindi literature, so अग्रवाल सर will जहाँ पे मतलब wherever people अग्रवाल have सर will do है ना? Because yesterday हमें बहुत तकलीफ। Economic survey भी नहीं पढ़ पाया। सर रेडी? economic survey I have gone through, but budget में क्या आ रहा है पता नहीं इस बार। वो तो आया अभी आया। हाँ अभी हाँ। That is not even kids won't know. अच्छा चलो start कर दो यार, start करो। You can send the person. हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसको ऐसा कर देता हूँ, ऐसा नहीं ना ऐसा कर देता हूँ। उसमें हाँ वही तो मैं बोल रहा था भाई, आप इधर दे देना, उसको मुझे इधर देना, उसको इधर दे देना, हम आराम से संभाल लेंगे उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ आपको भी इसमें तकलीफ नहीं होगी, ठीक है? तो कुछ सामान वगैरह है इसलिए, दैट इज व्हाई आई डोंट वांट टू गिव इट। ठीक है, आप बेच सकते हैं। हाँ सेकंड थर्ड आप जरा सीक्वेंस विल बी 1 2 3 4 5। वही तीन और 4 मिनट सर। आपका 3 है। 3 सर के बाद ये रहेंगे, फिर आपके बाद वही 3 और 4 मिनट रहेगा सर। That is what I think you were saying. The sequence is from the left. Normally it's from the right. नहीं वो कैमरे के हिसाब से सर वही टाइमिंग वही रहेगी सर, 3 और 4 मिनट में आपको हमें खींचना है फ्रेंड से इधर उधर मत बोलना। नहीं सर आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत हो जाएगा, चलेगा, कोई बात नहीं, मैनेज कर तो कहीं भी बैठ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैंडिडेट को बुलाएंगे। हाँ सर। Call of Duty. Playing chess. स्टार्ट Interview medium is Hindi, no, for the first candidate. Thank you.
मैं कमेंट सर। आइए। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठे। धीन। वीर नर्मद, साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी अच्छा, सर। नर्मद। अच्छा। तो ये 4 साल का कोर्स होता है या 5 साल का? सर 5 साल का कोर्स होता है। अच्छा, उसमें बीकॉम भी देते हैं, मतलब जी एक सर। डिग्री है उसके बाद एलएलबी भी? सर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, तो दोनों एक साथ करवाते हैं, दोनों सब्जेक्ट बीकॉम के और एलएलबी के। गुजरात में एक लॉ स्कूल भी है, नेशनल लॉ स्कूल का एक अंग। सर कि अगर सिविल सर्विसेज में मेरा चयन नहीं होता तो मैं सर लॉ को भी एज ए ऑप्शन देख सकता हूँ सर। तो अब तो जो काफ़ी जजमेंट्स आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, एक है जजमेंट रिलेटिंग टू द डिसमिसल ऑफ द रिव्यू पिटिशन ऑन सेम सेक्स मैरिज। यस सर। तो क्या तात्पर्य था, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डिसीजन लिया था, इट वाज एक्चुअली अ डिवाइडेड जजमेंट इन द Yes, sir. सेंस some judges actually were in favor and some judges went against. यस सर। So what do you think was the principle behind the Supreme Court's judgment? सर सुप्रीम कोर्ट ने जिस बेसिस पे सेम सेक्स मैरिज को लीगल नहीं किया है, उसका मेन रीज़न ये था कि अभी सेम सेक्स मैरिज को रेगुलेट करने के लिए भारत में कोई रूल्स या रेगुलेशन नहीं है। यदि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया जाता है और आगे जाके मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस या अडॉप्शन में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कैसे डील किया जाएगा, उसके लिए हमारे पास कोई लॉ नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको लीगलाइज करना सही नहीं समझा सर। तो मेन रीज़न ये था सर। और उनका पावर है क्या, उनको वो लीगलाइज करने का पावर है क्या सुप्रीम कोर्ट? मुझे डिटेल जजमेंट उसके बारे में नहीं मालूम है सर, पर मेन तर्क ये। एडीएम जबलपुर तो आपने पढ़ा होगा। जी सर, जी सर। एक डिसल्टिंग जजमेंट था उसमें। सर अभी याद नहीं कर पाऊंगा, सॉरी सर। अच्छा, आप उम्रा से हैं? जी सर। उम्रा का मतलब क्या हुआ? सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम। और सायन का? सॉरी सर, साइन का भी नहीं मालूम। सूरत अपना नाम कहाँ से लेता है? सर पहले इसका नाम सूर्यनगरी था और बाद में जाके सूर्यनगरी और बाद में जाके सूरत पड़ा सर। अच्छा। तो आप शतरंज खेलते हैं? जी सर। इसको शतरंज क्यों कहते हैं? सर नाम के पीछे लॉजिक मुझे नहीं मालूम सर, सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। आपने दानिक्स को नंबर 8 क्यों दिया है? तो कई ग्रुप ए सर्विसेज से ऊपर दिया आपने और तकरीबन 16 साल पीछे पड़ जाएंगे आप। ग्रुप बी से ग्रुप ए दोबारा आने में जी सर 16 एक साल लग जाएंगे। सर फर्स्ट 5-6 प्रेफरेंस थे सर, मैंने उसको ही ध्यान में रखा है कि अगर इसमें से मिलेंगे सर तो ज़्यादा बेटर होगा सर। हाँ, पर फिर भी कुछ तर्क तो होगा आपके दिमाग में कि आपने दानिक्स को, जो कि ग्रुप बी सर्विस है, देखो दानिक्स यूपीएससी क्यों लेता है, उसका कारण क्या है? सर वो यूटी है सर, तो वहाँ पे सिविल सर्विस मतलब वहाँ इंडिया में आईएएस होता है सर, वहाँ पे डायनिक्स होता है सर। हाँ, मतलब हर स्टेट का अपना स्टेट सर्विस कमीशन होता है। जी सर। तो क्योंकि यूटी है तो यूपीएससी इसका स्टेट सर्विस कमीशन है। सर तो अब एग्जाम तो होना है, यस सर। तो यूपीएससी फिर इसी के साथ जोड़ लेता है। यस सर। कायदे से तो अलग होना चाहिए। यस सर। लेकिन तो आपने इसको क्यों जोड़ा अपनी सूची में? सर 5-6 जो ऊपर के प्रेफरेंस थे सर, मैंने उसी को ज़्यादा ध्यान में से देखा था, फिर नीचे के प्रेफरेंसेस को मैंने उतना नहीं। और मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना था, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ही मुझे चाहिए था, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी सर मैंने डायनिक्स को ध्यान में चलिए, कोई रखा। बात नहीं। जी सर। आप मुझे 3 ऐसी भारत सरकार की योजनाएं बता सकते हैं जिनसे आम आदमी के जीवन में ईज ऑफ लिविंग आई है, ठीक है ना, पिछले दशक में? सर सबसे पहले मैं कहूँ तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है सर। तो ठीक है। सर उसके वजह से ग्राम सड़क योजना पिछले दशक में शुरू हुई थी कि कब शुरू हुई थी? सर थोड़ी पुरानी योजना है ग्राम सड़क योजना, लेकिन उससे ईज ऑफ लिविंग काफ़ी हुआ है, ठीक रूरल है। एरिया में रोड्स बने सर। ठीक है। और दूसरा? सर उज्ज्वला योजना है जिसमें एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है, उसकी वजह से महिलाओं को सर काफ़ी फायदा हुआ है और उसमें ईज ऑफ लिविंग का में इजाफा हुआ है सर। कितने कनेक्शन दिए गए या कितने सिलेंडर दिए गए कि कनेक्शन दिए गए? सर कनेक्शन दिया जाता है, मेन सिलेंडर नहीं दिया जाता इसमें। अच्छा, तो कितने कनेक्शन दिए गए?
सर आंकड़ा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, मुझे देखना पड़ेगा सर। कुछ अंदाजा लगाएंगे? सर मैं गैस करने से बचूंगा सर, हाँ, गैस करने से बचूंगा मैं सर। अच्छा, फिर भी अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप गैस करो। सर अराउंड 10 lakhs। 10 करोड़ है, कोई बात नहीं, ओके सर। ठीक है। हाँ, और तीसरा? और सर आयुष्मान भारत की जो योजना है सर गवर्नमेंट की, उसमें हेल्थ बेनिफिट काफ़ी दिए जाते हैं, इंश्योरेंस दिया जाता है सर, तो उससे भी सर ईज ऑफ लिविंग हुआ है सर। कितने लाख तक का दिया जाता है? सर 5 लाख तक का। कितने लोगों को दिया आयुष्मान भारत का? और सर टारगेट 10 करोड़ फैमिली था सर। अभी तक कितने लोगों को दिया गया सर वो मुझे देखना होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हाँ जी। तो आपको मैं करण बुलाऊं? यस सर। करण? करण, यस सर। थोड़ा जोर से बोलिएगा प्लीज, Yes, सुनने sir. में कष्ट होता है। श्योर सर, श्योर। इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ इंटरेस्ट रखते हैं? जी सर। अच्छा, बात करें? यस सर, श्योर। अच्छा, तो ये जो कल इकोनॉमिक सर्वे आया, जी सर। उसकी क्या खास बात है? सर माफी चाहूंगा, मैंने नहीं देखा अभी तक। नहीं देखा, छोड़िए। यस सर। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप फाइनेंस सेक्रेटरी होते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो आज जो बजट आ रहा है उसमें 5 कौन सी चीज़ों पे आप सबसे ज़्यादा जोर देते? सर सबसे पहला जो है, मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने पे फोकस देता, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से कंजम्पशन बोलते जाइए आप। सर दूसरा जो है सर, मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए उसके ऊपर काम करता सर। तीसरा सर जो है एमएसएमई सेक्टर सर जो है उसके ऊपर भी मैं फोकस करता। तीसरा सर जो हेल्थ सेक्टर के ऊपर मैं फोकस करता, और सर 5वां है एजुकेशन सेक्टर के ऊपर मैं फोकस करता सर। अच्छा, ये बताइए कि ये जो बॉटम 50% पॉपुलेशन है देश की, उसका कंजम्पशन क्यों नहीं ग्रो कर रहा है? सर इसका एक मुख्य कारण जो है वो रिमेनिंग सर जो इनकम होती है, पर कैपिटा इनकम सर जो है वो कम है, और लोगों के पास पैसे काफी कम होते हैं एक्सपेंडिचर करने के लिए सर। कितना पर कैपिटा इनकम है भारत का? सर अराउंड 2500 या उसके $2500 के आसपास है सर। थोड़ा ज्यादा है, 27 के एनीवे। हाँ, तो सर तो जो बॉटम 50% लोग जो है सर, उनके पास रिमेनिंग इनकम सर काफी कम होती है, तो एक्सपेंडिचर कम करते हैं सर, तो इसकी वजह से कंजम्पशन कम होता है सर। तो कोई उपाय नहीं है उनको कंजम्पशन बढ़ाने का? तब तो सर उपाय है सर, जो डिस्पोजेबल इनकम है सर वो उनकी बढ़ानी चाहिए। कैसे? सर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके सर, और पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट? यस सर। कैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें? सर सरकारी नौकरी देके? नहीं सर, जैसे करंट गवर्नमेंट सर जो है वो बिजनेस के ऊपर काफी फोकस कर रही है, स्टार्टअप के ऊपर काफी फोकस कर रही है, तो सर इस तरह से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं और डिस्पोजेबल इनकम को। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है क्या? अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है सर? और इट इज अराउंड 7.8% सर। हाँ, 7.8%। 7.8%? यस सर। हमको तो बताया गया कि 3.2% आ गया है सर एनीवे। यस सर। कैपिटल का फ्लो प्राइवेट सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में क्यों नहीं हो रहा है? सर मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करूं तो सर भारत में उस क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं हुआ है सर, कि जहां पे इन्वेस्टमेंट सर अट्रैक्ट कर सके, तो इसकी वजह से जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं सर वो भारत में इन्वेस्ट करने से भी बचते हैं सर, और उतना इन्वेस्ट नहीं करते। हालांकि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है और कुछ नहीं है? और भी है सर। क्या सर? जैसे भारत में स्किल्ड लेबर की सर काफी कमी है, फिर सर अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सब की भी सर कमी है। तो फिर पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहिए ना, क्योंकि वहाँ तो सब सुविधा है। बांग्लादेश में करना चाहिए, श्रीलंका में करना चाहिए। भारत का क्या फ़ायदा? ये विकसित भारत का जो हम लोग टारगेट बनाए हुए हैं कि 47 में जाएंगे और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी 2 साल में हो जाएंगे, तो ये तो सब खाली प्रोपेगेंडा ही है ना? नहीं सर, ये प्रोपोगेंडा नहीं है। नहीं, आपने जो बताया नैरेटिव, यस, उससे तो कंक्लूजन यही है कि ये तो प्रोपेगेंडा है, कुछ होने वाला नहीं है।
नहीं सर, मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए काफ़ी काम कर रही है, जिसकी वजह से हम भारत में तो स्किल। ये बताइए कि विदेश का पैसा जो है वो वियतनाम को क्यों ज़्यादा चला जाता है, फिलीपींस को चला जाता है, इंडिया में क्यों नहीं आता है पैसा? क्या रुकावट है? सर मैं जैसे आपने कुछ देश गिनाए सर, तो वहाँ पे सर सेमीकंडक्टर के ऊपर सर काफ़ी अच्छे से काम हो रहा है सर। तो अभी जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जा रहा है सर, मेनली उस पर्पस के लिए जा रहा है। और भारत सेमीकंडक्टर में सर एक इमर्जिंग कंट्री है सर, इसकी वजह से। कितना पैसा सेमीकंडक्टर में आ गया? सर जैसे साउथ ईस्ट प्रोडक्शन हो रहा है सर, इंडिया में 3 जगह हो रहा है सर प्रोडक्शन नहीं सर, फैब्रिकेशन हो रहा है सर। फैब्रिकेशन का क्या मतलब? असेंबली होती है कि मैन्युफैक्चर होता है? सर असेंबली होती है, मैन्युफैक्चर नहीं होता भारत में फिलहाल। सिर्फ असेंबली होती है? यस सर। तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कैसे बोलते हो? सर उस क्षेत्र में भी काम पढ़िएगा। अच्छा नॉर्मल करण, यस सर। आपका इसमें ये प्रोफेशनल एथिक्स कोर्स आपने किया है? यस सर। एथिक्स क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स कैसे होता है? सर एथिक्स वो होता है जो लोग सामान्य जीवन में अपने जीवन में अपनाते हैं, जैसे ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, और वो अच्छा है, वो चीजें समझ सकता हूँ। यस सर। ये प्रोफेशनल एथिक्स क्या है? ऑनेस्ट नहीं है तो प्रोफेशनली ऑनेस्ट बनना वही है? सर प्रोफेशनल एथिक्स हर फील्ड के हिसाब से अलग अलग होते हैं सर। जैसे यदि कोई डॉक्टर बनता है तो उसमें प्रोफेशनल एथिक्स अलग हो गए सर। यदि कोई लॉयर बनता है, अभी लॉयर का एथिक्स क्या है? सर लॉयर के एथिक्स में कुछ अगर मैं कह पाऊँ तो ये है कि अगर क्लाइंट आता है उसके पास तो उसको झूठा आश्वासन ना देना, जो केस की जो रियल स्टेटस है सर वही उसको समझाना। अभी क्रिमिनल आपके पास आया जी सर, उसने बोला मैं साहब मैंने कदम किया वो आदमी को, बट मेरे को बचाओ, आपको अच्छा पैसा देंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रोफेशनली उसको सेव करना है, उसमें क्या करेंगे आप? सर इसमें मैं सबसे पहले ये करूंगा कि क्लाइंट को मैं ये आश्वासन नहीं दूंगा कि मैं केस जीती जाऊंगा। अगर इस सब के बावजूद भी आपको अगर मुझे केस देना है तो आपका प्रेरोगेटिव है सर। और किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में पेश करना, उसका बचाव करना सर, ये उसका अधिकार है। वो बोल रहा है कदम मैंने क्राइम किया है। यस सर। आप फिर भी बचाएंगे? सर मैं बचाऊंगा इसलिए क्योंकि सर कॉन्स्टिट्यूशन जो है सर वो सबको अधिकार देता है अपनी बात रखने का सर कोर्ट में। तो उस चीज को मैं ध्यान में रखते हुए मैं उसको सर उसका बचाव करूंगा कोर्ट में। और कोर्ट में सर क्या फैसला आएगा सर वो कोर्ट का सर। इसलिए बोलता है लॉयर इज ए लायर, ऐसा बोलता है, प्रोफेशनल लायर, वही प्रोफेशनल एथिक्स होता है लॉयर का, ऐसा समझता हूं मैं। सर ये सब लॉयर पे लागू नहीं होता, मैं ऐसा नहीं है ना? इंजाम लगाते हैं ऐसा? यस सर, इंजाम लगता है। यस सर। अच्छा एक चीज बताइए, अभी इकोनॉमिक सर्वे में बोला है डिफिसिट हो रहा है, ये ट्रस्ट डिफिसिट हो रहा है, ट्रस्ट डिफिसिट बनाना है, कम करना है, ये क्यों? सर इकोनॉमिक सर्वे ने किस संदर्भ में ये कहा सर, इसका मुझे भी ध्यान नहीं है, मैंने इकोनॉमिक सर्वे अच्छा, सर पे नहीं ठीक है, देखा। फिर तो वो बात नहीं करेंगे आपसे। यस सर। आप ये बताइए, ईज ऑफ लिविंग, सर ने पूछा आपसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यस सर। हम तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करते रहा, रैंक भी अच्छा हो गया, फिर भी FDI, FII, इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, सो किसके पास पैसा है वो सब बाहर जा रहा है पैसा लेके, ये क्यों हो रहा है? एंड इंडियन इकोनॉमी इज नॉट डूइंग दैट ग्रेट एज एक्सपेक्टेड। सर जैसे मैंने पहले भी कहा था और मैं अभी भी सर वही कहूंगा कि सर कई सारे रीजन है जिसकी वजह से भारत में FDI नहीं आता, और आता है तो चला जाता है। सबसे पहले सर जितने रेगुलेशंस है सर बिजनेस को, हाँ सर, वो सारे वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और काफी लैक्स है। हालांकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम किया है सर इजी करने के लिए, और काम करना है। यस सर। सर दूसरा सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, ये सब लॉ का प्रॉब्लम है, आपका प्रोफेशन का प्रॉब्लम है। यस सर। इसलिए तो बिजनेस बूम नहीं हो रहा है सर। अच्छा एक चीज पूछता हूँ, आप हिंदी लिटरेचर का है, कोई पूछा नहीं आपसे। यस सर। ये गोदान का, सब लोग गोदान प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद का कहानी पढ़ते रहते हैं। यस सर। इसे आपको क्या फायदा है? गाय दिया, गाय को कोई पॉइजन किया, गाय मर गया, ये सब कहानी पढ़ने से आदमी कैसे अच्छा सिविल सर्वेंट बनाएंगे? सर इसके ऊपर मैं ये कहूंगा कि एक व्यक्ति जो साहित्य नहीं पढ़ता
और एक व्यक्ति जो साहित्य पढ़ता है, जैसे यदि मैं एक कॉमन एस्पायरेंट की बात करूं जिसने साहित्य नहीं लिया, तो जब वो अखबार पढ़ेगा और जब वो देखेगा कि भारत में जो फार्मर की स्थिति है सर काफी खराब है, तो उसकी वजह से वो उतना डीप इम्पैक्ट नहीं आएगा सर। लेकिन एक व्यक्ति जो साहित्य पढ़ रहा है वो साहित्य में इस तरह से पढ़ेगा सर कि उसके ऊपर परिवर्तन सर गहरा देखने को मिल सकता है सर। इसमें आपने क्या व्यक्तित्व में, आपका व्यक्तित्व में क्या गोदान पढ़ने के बाद आपको क्या व्यक्तित्व में आपने क्या गेन किया है? सर मेरी दृष्टि जो फार्मर के प्रति है सर वो थोड़ी सही। अभी भी फार्मर मर रहा है। यस सर। अभी महाराष्ट्र में देखेंगे तो फार्मर कुछ नहीं कर रहा है। यस सर। ये क्यों? अभी गोदान के बाद वो तो कॉलोनियल पीरियड है। यस सर। अभी कॉलोनियल पीरियड नहीं है, इंडिया तो इंडिपेंडेंस है। यस सर। अभी डेवलप इकोनॉमी बोल रहा है विकसित भारत, क्यों मर रहा है? सर हाँ मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि तब कॉलोनियल पीरियड था, लेकिन सर अभी सिर्फ उसके अलावा काफी सारे फैक्टर काम करते हैं, जैसे सर ड्रॉट बढ़ना, क्लाइमेट चेंज होना, इसकी वजह से सर फसल को काफी डैमेज होता है सर। तो ये सारे ऐसे फैक्टर है सर जो ह्यूमंस के हाथ में नहीं है सर। तो इसकी वजह से सर फार्मर डिस्ट्रेस काफी हमको देखने को मिलता है सर। थैंक यू सर। करण, यस सर। आपने साहित्य पढ़ा, जी सर। कोई कवियत्री आपको पसंद है सबसे ज्यादा? चलिए मैं कर देता हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम आपने सुना होगा। सर माफी चाहता हूँ मैंने नहीं पढ़ा। सुभद्रा कुमारी चौहान आपने नहीं पढ़ा? सर सिलेबस में नहीं थे। चमोखटी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आपने नहीं पढ़ा? नहीं सर, खेद है मुझे, मैंने नहीं पढ़ा सर। चलिए ठीक। भारत के संविधान में राज्य को कहाँ परिभाषित किया गया है? सर आर्टिकल 12 में। क्या है उसकी परिभाषा? सर 4 अलग अलग चीजों में विभाजित किया गया है सर। सबसे पहला है यूनियन एंड इट्स पार्लियामेंट, दूसरा है स्टेट एंड इट्स लेजिस्लेचर सर, तीसरा सर जो है वो चलिए yes, क्या न्यायपालिका भी राज्य की परिभाषा में आएगी? यस सर। और जुडिशरी सर। ठीक है, बढ़िया है। और कर्नाटका सरकार ने अभी मर्सी किलिंग, आप जानते हैं ना, इथुनेशिया, यस सर, उसको अलाउ कर दिया है। जी सर। आपको लगता है कि ये वैध है, ये सही है, मानव हितों के साथ है ये? सर जैसे अगर मैं भारत की स्थिति की बात करूं सर, तो भारत में पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है सर, लेकिन काफी स्ट्रिक्ट मेडिकल रेगुलेशंस के बाद। तो सर अगर कर्नाटक गवर्नमेंट सर उसको रेगुलेट लीगलाइज करती है सर, तो मैं मानता हूं कि उसमें गलत नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्ट मेडिकल रेगुलेशन और चेकअप के बाद सर पैसिव यूथेनेशिया अलाउ करना चाहिए सर, एक्टिव यूथेनेशिया अलाउ नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए। ये आज के अखबार में एक अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ एक शब्द आया है, डिसइंफ्लेशन। यस सर। जानते हैं क्या होता है? सर सुना है, एग्जैक्ट अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। भारत की जीडीपी कितनी होगी? सर अराउंड 300 लाख करोड़ सर। श्योर? सर जहां तक मुझे मालूम है सर। चलिए मान लीजिए 2047 तक हमको विकसित भारत बनाना है। जी सर। तो आपको क्या लगता है हमारी कितनी होनी चाहिए तब तक हमारा सकल घरेलू उत्पाद? सर $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की सर बात की गई है, तो उतना सर होना चाहिए। तो आपको लगता है करण कि अगर हम 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना लेंगे तो क्या हम विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएंगे, या और भी कुछ हमको चाहिए? सर इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए, जैसे सर स्किल्ड लेबर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए सर, ईज ऑफ लिविंग होना चाहिए, पॉल्यूशन कम होना चाहिए सर, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में हम मूल्यांकन नहीं कर सकते सर। ठीक है करण, धन्यवाद। थैंक यू सर। प्लीज। देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप क्या मानते हैं? पॉवर्टी, करप्शन, इनएफिशिएंसी या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन? जैसे आप बोल रहे थे कॉम्प्लिकेटेड लॉज है और स्टेट गवर्नमेंट कुछ कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और, तो इसमें कौन सा मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम? सर मैं अनएम्प्लॉयमेंट को सर सबसे बड़ी समस्या मानता हूँ फिर अभी के समय में, क्योंकि सर भारत
एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के फेज से गुजर रहा है सर। यदि सर भारत इसको रीप नहीं करेगा, इसको डेवलप नहीं करेगा सर, तो भारत को आगे जाके नुकसान हो सकता है सर। तो मैं अनएम्प्लॉयमेंट को सर अभी सबसे बड़ी समस्या मानता हूँ। स्किलिंग के लिए क्या कर सकते हैं हम? सर स्किलिंग के लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सर चला रही है सर। उसके तहत स्किल प्रोवाइड की जा रही है। उसके अलावा सर वोकेशनल ट्रेनिंग भी सर प्रोवाइड की जा रही है सर। तो और एक अप्रेंटिसशिप स्कीम भी है। यस सर। वो क्या है सर? सर अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ अप्रेंटिसशिप स्कीम को। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अब इंटरव्यू खत्म हुआ है। थैंक यू सर। फीडबैक के तौर पर आपको फीडबैक चाहिए कि नहीं? यस सर। अच्छा, वील गिव अ वेरी शॉर्ट फीडबैक। अगर आपको कुछ पूछना है तो उसके बाद पूछ सकते हैं। ओके सर, श्योर सर। मेंटल अलर्टनेस की कमी है थोड़ा सा। आप जब आए थे उस समय यू आर वेरी नर्वस। ओके सर। You have to get over the nervousness. I think you have a problem of being nervous. And see, on questions, you can definitely expect questions from the subject of law. Yes, sir. क्योंकि you have studied law. Yes, sir. And you are quite weak in law. Yes. जैसे मैं देख रहा हूँ तो you are quite weak. Recent Supreme Court judgments, ये सब आपको पढ़ना है। Okay, और sir. हिंदी लिटरेचर में भी थोड़ा बहुत आपको ब्रशअप करने की ज़रूरत है। Okay, sir. क्योंकि हिंदी लिटरेचर में ऐसा है ना, यू आर फ्रॉम गुजरात, Yes, sir. बट आई थिंक योर मदर इज फ्रॉम उत्तराखंड, Yes, sir. तो मे बी दैट्स व्हाई यू आर गुड एट हिंदी। Yes, sir. बट दैट डजंट मीन यू कैन मैच द पीपल फ्रॉम आंध्र, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। Yes, sir. यू हैव टू कम अप टू देयर लेवल। Okay, sir. तो ये आप देख लीजिए। दैट्स मेंटल अलर्टनेस इज वन थिंग। ड्रेस ऑफ कोर्स आई सपोज यू विल, इफ यू आर वेयरिंग अ शर्ट यू डोंट बटन अप योर शर्ट, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू वेयर अ टाई एंड अ कोट आई सपोज। Okay, sir. वो तो करेंगे ना आप? Yes, sir. हाँ, ब्लेजर सर। द ब्लेजर या जो भी है should be matching. Yes, sir. And have a good tie. Appearance अच्छा है। Suddenly you said civil services में तो मुझे आना ही है। Yes, sir. तो I don't care whether I get Dynix or not. तो क्या मतलब था उसको? I couldn't understand. तो मतलब सिविल सर्विसेज में मुझे आना मतलब IAS है आपका जो मकसद, ऑब्जेक्टिव वही है। सर 5 जो प्रेफरेंस थे सर वो मैंने सोच के दिए थे और मैंने यही सोचा था कि अगर होना होगा तो सर इन 5 में होगा। उसके बाद फिर मैंने ऑर्डर को इतना ध्यान नहीं दिया था सर। हाँ, वो तो ठीक नहीं है ना, वो बताना भी ठीक नहीं है। आप पहले ध्यान नहीं दिया वो अच्छा नहीं है। दूसरी बात है कि उसके बाद आप बता भी रहे हैं कि वो मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके सर। आई मीन ऑलमोस्ट इनडायरेक्टली, ये ठीक नहीं है। यू हैव टू से दैट यू अप्लाइड योर माइंड। ओके सर। जैसे मतलब जो भी है आपका मतलब प्रेफरेंस, Yes, यू हैव टू जस्टिफाई योर प्रेफरेंस। नाउ यू कांट चेंज द प्रेफरेंस। यस सर। ठीक है, उसके लिए आप एक अच्छा आर्ग्यूमेंट आप तैयार करिए। यस सर। इंटरव्यू कब है? 11 फरवरी, टाइम है आपके पास। यस सर। करंट अफेयर्स में बिल्कुल जीरो है। क्यों पढ़ नहीं रहे क्या न्यूज़पेपर्स? सर इकोनॉमिक सर्वे नहीं देखा, बाकी उसके अलावा का मालूम है सर। क्या देखा होगा? फिर पोटामैक रिवर में क्या हुआ कल? किस में सर? पोटामैक रिवर में। पोटामैक रिवर मुझसे मत पूछिए कि कहाँ है। सर सॉरी सर। इसका मतलब है आप पेपर नहीं पढ़ रहे हैं सर, और टीवी चैनल भी नहीं देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल। पेपर तो पढ़ रहा हूँ सर। देख लीजिएगा। यस सर। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कभी देना नहीं है। यस सर। इस सेमी कंडक्टर का क्या बात है? तो आप कुछ बोलना चाह रहे थे कि, लेकिन अभी अभी शुरू हो रहा है सेमी कंडक्टर का फैक्ट्री। यस सर। असेंबली कहाँ से हो गया? सर भारत में 3 जगह है, एक तो आंध्र प्रदेश में, एक आसाम में और एक गुजरात में सर। तो इन 3 जगह पे हो रहा है सर। हाँ, असेंबली या इन्वेस्टमेंट? असेंबली हो रहा है सर। गुजरात में तो असेंबली हो रहा है, आंध्र प्रदेश में भी सर असेंबली हो रहा है। आसाम का मुझे मालूम नहीं है कब से शुरू हुआ? सर गुजरात में सर जो है वो 2019 के आसपास से सर शुरू हुआ है। अच्छा, एनीवे यू चेक अप ऑन दैट। यस सर। अब कुछ आप आकर के सबको गुड मॉर्निंग बोल रहे थे। यस सर। सबको बोलने की जरूरत नहीं है। यस सर। अगर लेडी है बोर्ड में यस सर। तो चेयरमैन पहले लेडी को फिर चेयरमैन को, बस। ओके सर। चेयरमैन को पहले वही, कोई चेयरमैन गिव्स द मार्क्स। नहीं ठीक है। चेयरमैन को पहले करो, उसके जैसे बाद। अगर लेडी चेयरमैन है तो उनको विश कर देंगे, फिर एक खत्म हो जाएगा। ओके सर। अदरवाइज चेयरमैन को विश करना, फिर लेडी को विश करना, खत्म। ओके सर। ठीक है। तो जब वापस जाएंगे तब भी सबको थैंक्स करने की जरूरत नहीं। ओके सर। और आप मुस्कुराते हो तो अच्छे लगते हो, तो मुस्कुरा क्यों नहीं रहे थे? ध्यान रखूंगा सर। देखो ये पूरा एनर्जी एक्सचेंज है। यस सर। तो अगर आप दुखी रहोगे तो आप हमसे एनर्जी लोगे तो फिर हम नंबर नहीं देंगे। यस सर। ठीक है, इतना ध्यान रखो। ठीक है सर। ओके। गुजराती लिटरेचर क्यों नहीं लिया पूछेंगे तो आंसर देना। यस सर, फॉर श्योर। बस। और कुछ आप टागोर सबसे पहले इंडिया में एक ही
कवि को मिला है नोबेल प्राइज लिटरेचर में, यस सर, उनके बारे में भी पता होना चाहिए। शेक्सपियर का इन्फ्लुएंस, बाकी बंगाली लिटरेचर का इन्फ्लुएंस इन हिंदी, ऐसा कुछ थोड़ा सा सीखना आपको। ओके सर, एक ही गोदान यही लोग बोलते रहते हैं, यस सर, इसलिए मैंने आपसे सिर्फ गोदान पूछा। Yes, मतलब अभी जयपुर में लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा है, वेंगी रामकृष्णन इज एड्रेसिंग, ही इज ए नोबेल प्राइज विनर, यस सर, वो जो दूसरा चीजें बोल रहा है Yes, वो सब थोड़ा सा पढ़ना। आपने पढ़ाई किया वेंगी रामकृष्णन क्या बोला? नो सर, देखना होगा। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा? ये न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ उसमें आया था, आपने पढ़ा? सर, स्किप हो गया होगा सर। स्किप हो, ये आपका फील्ड है भाई, जो आपका रेलेवेंट है यस सर, वो चीजें पढ़ने वक्त ध्यान कर। श्योर। जैसे अभी स्टैम्पीड हुआ, Yes, sir. उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का फेलियर क्या है, पुलिस का फेलियर क्या है, Yes, sir. ये सोचना है आपका काम। यस सर, समझ गया? यस सर, पोटोमाक रिवर में क्यों गिरा, कहाँ गिरा, क्यों एविएशन फेलियर कैसे हुआ, ये Yes, sir. सोचने का। पढ़ने के वक्त। यूएसए वाला इंसिडेंट सर। यूज योर माइंड। ओके सर, पढ़ना सिर्फ नहीं है, ओके सर, सोचना। Sure, अभी फिर आएगा आईएएस का क्वेश्चन आंसर। ओके, ओके सर। If you want to ask something. The semiconductor thing is very clear. They have not started. ओके सर, आप पढ़ लीजिए। ओके सर, तो ओनली द प्लांट कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। ओके सर। तो नो, आपको क्या कुछ पूछना? सर, कोई मेजर प्रॉब्लम सर आपको दिखी हो ऐसे? मेजर प्रॉब्लम इज योर पर्सनैलिटी इज नॉट कॉन्फिडेंट। ओके सर, यू आर अपियरिंग टू बी वेरी वेरी नर्वस, एज आई टोल्ड यू। ओके वो सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नाउ दैट विल पुल डाउन ऑल योर अदर क्वालिटीज। ओके सर, जैसे आपको अगर कोई जानकारी भी हो तब भी आप बता नहीं पाएंगे, यस सर, बिकॉज यू विल नॉट बी, इट वॉन्ट कम टू योर माइंड। और दूसरा है आपका नॉलेज बेस बहुत कम है। सर पोटा में को आपने कहा, फिर मुझे बाद में याद है कि यूएस बेस तो इसका मतलब है आप नर्वस हैं, इसलिए आपको याद नहीं आया उस समय। ओके सर, 5 मिनट के बाद याद आने से क्या फायदा है? यस सर, जब आपका इंटरव्यू खत्म हो गया तो उस बाहर चले गए, उसके बाद आपको कुछ याद आया तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो दैट इज वाई नो, बट देयर इज नॉट मच टाइम, यस सो सर, ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। यस सर, तो कुछ मेडिटेशन करो, कुछ ध्यान करो, मतलब जो भी आपको मतलब अच्छा लगे। ठीक है ट्राई सर, टू इम्प्रूव योर मेंटल abilities. ठीक है सर, I mean, I can't give you much because there's not much time. यस सर, But what I can only tell you is that this is very essential for the interview. यस सर, Confidence is very essential. ओके Like I gained my confidence, I can tell you. I was also very nervous before the interview. I gained my confidence by thinking about somebody whom I considered as my role model. यस सर, तो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिला जब मैं इंटरव्यू हॉल में जो अंदर घुस रहा था। तो उस समय उस टाइप का आपको मतलब यू हैव टू सेल्फ इंस्पायर योर सेल्फ, देयर इज नो अदर वे। यस सर, I can understand you have certain problems and so naturally you might feel, Yes, sir. but you have already eliminated those services. IPS में तो आप जान ही रहे हैं, यस सर, तो आपको क्यों मतलब, I think you are probably feeling that you are not up to it. वो फीलिंग नहीं होना है। ओके तो सर, अब तो IAS में आपको आना है, यस सर, तो you are up to it, isn't it? I mean mentally if you are fit, यस सर, then government feels that you are able, you can enter the service. Then what's your problem? यस सर। हाँ? सर नर्वसनेस थोड़ा है, उसके ऊपर मुझे देखना होगा सर। तो आप देख आज लीजिए। से लेके 22 तारीख तक मुस्कुराते रहना, ये आपका- नर्वसनेस खत्म हो जाएगी। देखिए जो आपका अपीयरेंस है ना, यस सर, वो सूटेबल नहीं है। यस सर, आपको अभी इंटरव्यू में ऐसे नहीं आना चाहिए था। आपको जैकेट पहनना चाहिए था, टाई लगाना चाहिए Yes, था, sir. प्रॉपर्ली ड्रेस्ड होना चाहिए था। शर्ट भी आपका ठीक नहीं है, तो टाई वगैरह लगाइए। इसी दैट शोज कैजुअल अप्रोच एंड द बोर्ड विल नॉट लाइक कैजुअल अप्रोच। सर वहाँ पे पहन के जाना वाला पूरा। तो वहाँ पर यहाँ पे क्यों नहीं आए आप? Yes, sir. दिस इज मॉक इंटरव्यू। यस सर, जहाँ नहीं आए तो फिर वहाँ इससे क्या मतलब है? ओके सर, और स्पीच बहुत स्लो है आपकी, जोर से बोलना चाहिए। इतना धीरे बोलते हैं, लगता है कॉन्फिडेंस है ही नहीं। बहुत से सवाल हमने पूछे, उसका आपने सही जवाब ठीक बता नहीं पाए। ओके सर, तो पढ़ना पड़ेगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। That's basically confidence and knowledge base. हाँ, तैयारी करना पड़ेगा। अभी आपका बहुत फाउंडेशन कमजोर है। ओके सर, अच्छा तैयार करो। यस सर, टेक 1 or 2 more mock interviews. यस सर, ठीक है, चलिए। ओके, All the थैंक यू best. सर, थैंक यू सर। But don't feel anything. I mean, you are not physically. I mean, you should not feel about
if that is the cause for nervousness, Yes, sir. you should not feel bad about it. अरे भाई रिटर्न में 6 लाख में से 2800 में आ गए हो यार, तो मेरिट तो टेस्ट हो गया, इंटेलिजेंट आदमी हो ना, Yes, sir. तभी ना हमारे सामने आ सके, Yes, sir. तो फिर क्या है? You will make it. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Next. अगला भेजिए, याम्बूर, प्रथम याम्बूर. कोई भी हो भाई यस बन जाए. Feedback took a little longer than expected. नहीं ये physically handicap. पीछे रहना चाहिए हल्का That's why it's not a फ्रेम चेक कर लीजिए. right hand. हाँ ठीक है अच्छा. सर ये पॉलिसी है ना, physically challenged people, taking so many of them in surveys. Is it the right thing? Yesterday Trump has spoken against it. Yesterday Trump has said that the accident took place because of taking such people. Trump is bold. Physically handicapped. Very sometimes sounds very awkward also at times to. He said कि handicap people को वजह से हो सकता है. हाँ. अभी मैं पैथेटिक क्वालिटी के आ रहे हैं. फिर से सर एक और. चेयर कट रही है. There are 2 accidents which have taken place. It is history में second हल्का दो one time and coming back. It's very sometimes we are not even able to repeat what is From unpredictable. एक सेकंड ना. नेक्स्ट कौन है प्रथम? Yes, sir, Pradhan. एक सेकंड. नहीं ये जरा फीडबैक होने दीजिए. He is good, but I think he needs to improve a lot. आदमी अच्छा है, straightforward है. Sincere fellow. Problem is we don't look for that alone. भूमि चाहिए उसके. हम 12 करेंगे ना, 12 हो जाएगा, आपको 14 करना है, पता ही नहीं होगा. आज और ज़्यादा होंगे सर. 20. 9:30 बजे पहुंचा सर मैं घर कल. You got some time. No sir, 9:30 बजे पहुंचा. Then I cooked my meal and slept. And then I was not able to read anything. Life ही नहीं है. देखो, we can't even do exercise, nothing. Nothing, no. Absolutely अरे अपनी वाइफ से बात ही नहीं किया, सब जाके सो गया बस. वाइफ से बात कर लीजिए. हिम्मत ही सर पूरा दिन. आज सर्वे में यही ना है, ऐसा फैमिली को आप टाइम नहीं दोगे, आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है. एक्चुअली मैं भी सीएसएफ में इस बार सिलेक्ट हुआ था, तो वो भी Sharing बैच हो LNT का जो बोल रहा था ना वो 90 hour week करना चाहिए आपको. You have nothing else to do but go back to your house and keep staring at your wife. क्या बोलता है? I don't understand why people have to come out public with all these stupid statements. Mr. Pratham. यस. गुड मॉर्निंग सर. Good morning. Please sit down. Mr. Pratham, you are Yes. from Himachal Pradesh यस and सर. you studied political science. यस सर. And in political science, you know the Constituent Assembly was set up in 1946. यस सर. And by 1950, the Constitution was ready and adopted by the Constituent Assembly. यस सर. The first elections were held in 1952. So, what happened between 1950 and 1952? Who was the President of India? Sir, Dr. Rajendra Prasad was the President of India. Or did the Governor General continue? I think, sir, after adoption of Constitution, the President of India was Rajendra Prasad, Dr. Rajendra Prasad, sir. In 1950 or 1952? Sir, in 1950 onwards, sir. 1950. Yes, sir. And then when was the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir set up? Sorry, sir. I don't know, sir. Okay.
I'll read about it. When was it wound up or dissolved? Sir, 2019. Oh, sorry, sir. Constituent Assembly of Jammu and Kashmir. Sorry, sir, I don't know. I'll read about it, sir. Now, in between, are you aware that people of the Muslim League were also part of our Constituent Assembly in the initial stages? Yes, sir. And some of them were also part of the drafting committee. Yes, sir. So, who were the members of the drafting committee of the for the Constitution? Sorry, sir, I'm not able to recall, sir. Achha. Now, you have been selected for the CAPF. Yes, sir. Can you list out or at least name a few Central Armed Police Forces? Yes, sir. CISF, ITBP, BSF, and NSG, as well as CRPF, sir. But there are 7 of them. Which are the 2 left? Assam Rifles. Okay, anyway. Yes, sir. Now, are you planning to take up the job or you're planning to decline? Yes, sir. I'm planning to take the job. So, when is it likely to be? Sir, the dates of training has not came out, but it's probably after March, sir. And yesterday, the economic survey was laid in Parliament. What is the growth rate projected for this year, this financial year? Sir, it is 6.4 to 6.8%, sir. 6.4% or 6.8%? Or for Yes, the sir. next year, it's 6.3 to 6.8. What is the correct position? Sir, for financial year 26, sir. 25-26. 25-26. I think, sir. Anyway, that doesn't matter. Okay, sir. Now, if India has to grow at 10%, they're all talking about India growing at 10%. How will India grow at 10%? Give me the logic behind it. There are certain challenges, sir. For example, for Now, instance. apart from the challenges, I want the arithmetical calculations, Okay, sir. which were explained by the chief economic advisor yesterday. For 10% growth rate, sir. Yeah, he was explaining that this is possible. Sorry, And sir. It's well within our capacity to do it. Sorry, sir. I haven't went through his speech, sir. You haven't gone through speech, but what about the statement made in the economic survey? I haven't read, sir. You haven't read the survey. economic Yes, sir. survey. Okay. Pratham, Yes, sir. you are from Kamru. Yes, sir. What is the meaning of Kamru? Sir, I don't know, sir. Sangla? I don't know, sir. I'll look upon it, sir. Kinnor? Sorry, sir. I don't know. कोई बात नहीं. Can you tell us what are the sources of power for India? How much power comes from what source and how it is utilized? Yes, sir. Around, sir, 43% is the renewable energy capacity, and rest comes from majorly coal and fossil fuel based. And there is Percentage is okay. What is the quantum? quantity, sir. Around 77 gigawatt from solar and 47 gigawatt from hydropower projects, and apart from it, 10 gigawatt from biomass based energy, and others I am not able to recall, sir, exact data. What are the other sources? Sir, wind energy, nuclear energy, and fossil fuel based energy, sir. So nuclear is renewable or non-renewable? Sir, nuclear is non-renewable, sir. And the other ones, how much? Total power generation is how much in India? Sorry, sir, I am not able to recall the data. Total, you're not aware? Yes, sir. I'll read about it, sir. Okay, doesn't matter. And what about the usage? Who uses most of the power? So which sector, sir? Sector, sir? Which sector, yeah? Sir, I think industries, sir, MSME. Industries, sir. How much? Sorry, sir, I don't know the data. And after that? I think, sir, I'm not sure, sir. I'll read about it. But who are the main users?
Main users, sir. Apply your mind. Yes, sir. Agriculture sector, sir. Yes. And MSMEs, agriculture sector, and apart from it, sir, IT industry. Yeah, one is industry, Yes, sir. then the agriculture. Who else? Households, sir. Yeah, residential sector. Yes, sir. Yeah. Who else? Mobility, transport, sir. Railways. Yes, Railways. very good. Who And else? So defense, but it's in general. And sir, And public lighting. yes, sir. Okay, sir. That of course uses substantial energy. Okay, my last question. What is the triad doctrine? Sorry, sir. What is the triad doctrine? Triad doctrine, sir. Sorry, sir. I'm not able to recall. It's something to do with defense. Being able to defend yourself from. Okay, sir. Okay. From, I think from, sir, three Air Force, Navy, and military, sir. From all the possible attacks, sir. I think Yeah. that could be. That. So what has India done regarding this? Sir, India is starting the process of theaterization of commands, so that there would be a integrated command control for all this. That's okay. Yes, sir. Regarding the triad doctrine, what has India done? Okay, sir. Which one was missing? Which one is missing, sir? I think, sir, Chief of Defence Staff is one of the initiative. Nuclear submarine, that INS Arihant has been launched. Okay, sir. Okay? Okay, sir. Yes. Thank you, sir. So, PSIR is your optional, Yes, sir. but foreign service is preference number 5. Yes, sir. Why? Sir, when I started preparing for civil services, sir, I started it because the impact that I have seen in my area because of the, sir, local governance, and I have seen, sir, district magistrate as well as, sir, police administration working there. So that's why I wanted to join civil services, and because of that reason, sir, I have kept these services at priority, and that's why, sir, I wanted to work within the country, sir. So these are the considerations. What do you understand by the term civil service? What does it mean? Civil services, primarily. It is civil service, not services. Please be careful. Okay. Okay, sir. So it primarily deals with the welfare of the citizens as enshrined, providing welfare services to the citizens. And Welfare services. Yes, sir. Okay. As well as taking care of the grievances and delivering the government policies at the ground level are some of the works that civil servants do, and also maintaining the transition between political regimes, whereby bureaucracy acts as a Maintaining? the transition, sir. When political regimes change, the bureaucracy remains, sir, and it provides the continuity in administration. I didn't understand what you are saying. What Sir- is the transition? Sir, for example, after elections, the regimes change. However, the bureaucracy works on a continuous basis, sir. It provides that continuity. What do you mean by regime change? The existing Prime Minister, even if elections are held, he remains in office till the new Prime Minister takes over. So where is the vacuum? Where is the vacuum? Vacuum, sir, vacuum in terms of, sir, at that point of time, elections and model code of conduct, there is a. So there is model code of conduct going on in Delhi. You mean Chief Minister had demitted the office? No, Atish sir. is saying? No, sir. Then Uh, what is your answer? the politicians at that point of time, sir, are more. Anyway, Yes, sir.
what are the primary responsibilities of the civil servant, like district magistrate? You said at the ground level. Who works at the ground level? Does the SDM and deputy commissioner or DM, they work at the ground level or somebody else? Sir, somebody else. How? Who? Sir, at ground level, panchayats work as well as. So they are also civil servant? They are also IAS officers? Yes, sir, they are also civil servant in a way. However, the IAS or IPS acts as a coordination between different departments in the district. You mean to say a punch in the panchayat, he is a civil servant. He has the constitutional protection of 311. No, sir. Then why are you mixing up your answers? Sorry, sir. And what does he? Who maintains law and order in the district? Sir, SP and under the which subordinates. power? Sir, Indian IPC. Now the rules have changed. From where does he get the power to maintain law and order? Bharatiya Nyaya Sanhita. Huh? Sir, BNS, sir. What is BNS? Sir, Bharatiya Nyaya Sanhita. That is Indian Penal Code. Yes, sir. And district magistrate has no role. District magistrate has the role, sir. What role? To just look at the face of the SP. No, sir. Then district magistrate has power in terms of, sir, where there is SP no can open commissioner. fire. Sorry, sir. SP can open fire if there is a riot. Can you open fire? Who, sir? SP, sir. He has to take permission in case it's not in commissionerate system. All right. Thank you, sir. Pratham, Yes, sir. what is the linkage between economic survey and budget? Is it the same? Or what way it is linked? Economic survey provides the challenges that India faces in a financial year, and budget has three components whereby it provides estimates for future and present outlooks as well as the previous year, the actuals also, sir. So budget has 3 years component whereby economic survey provides the major challenges and potential solutions for a year. Okay. You are a political science student. Yes, sir. Whether I am not able to understand which democracy is good. Indian democracy, we will say, Indian democracy, democratic indices, Yes, sir. how the quality of democracy is measured. Let us say China says it is democracy. Yes, sir. Pakistan says it is democracy. Yes. India also says democracy. How do you rate? What are the criteria you will use? Okay, sir. May I take few seconds to think, sir? Okay. First would be, sir, every adult has a right to vote, universal adult franchise. Second would be, sir, the nature of polity should be republic, where the rule makers are chosen by the citizens. And third would be, sir, accountability insurance of the government towards the citizens, and the regime of rights that the country maintains for liberty, equality and other substantive justice are some of the criteria that I think for a just They are democracy. good, very good criteria you said, but rate Pakistan and China Yes, sir. in your criteria. Your criteria is good, are good. With, sir, Pakistan, the issue is that the civil control, it's not, the civil control over the administration is less, whereby the army dictates rules in various terms. And apart from it, sir, the accountability in elections have been challenged by multiple media houses internationally, whereby the elections have been not held transparently in some areas. As well as, sir, in terms of, sir, China, the nature of polity whereby only one party democracy
one party rule is there, and there is no other choice to the real choice to the people. In that sense, sir, and the challenges in terms of, sir, freedom of speech and expression in these countries is a challenge. Okay, very good analysis. Where is that founder of Alibaba now in China? Where is he? In China, sir. In China? Sir, Any idea? no, sir. I don't know, sir. So your freedom of speech, even freedom of doing business is difficult. Yes, sir. So political thinkers, many you have seen. Some thinkers will add some value to international relations. The entire international relation theoretical framework can be taken from some of the political thinkers. Can you identify the political thinkers who contributed for laying down the foundation of international political theories? Okay, sir. There are different school of thoughts which have contributed promptly for international relations. First would be, sir, realist school of thought, whereby Morgenthau has begun the real political nature of international relations, and further it is developed by Mearsheimer and Kenneth Waltz. And in terms of, sir, liberal school of thought, thinkers like Joseph Nye has contributed immensely. And apart from it, sir, Marxian school of thought? Marxist school thought, yes, sir. Immanuel Wallerstein also contributed to the economic flow of goods and services in international relations, sir. Okay. Thank you, sir. Pratham, Yes, sir. please. To be first, sir. To be first, who is the first citizen of India? Sir, President of India, sir. Okay, Pratham, tell me, if the President of India says no to addressing the joint session of Parliament before the budget session, what will be the consequence? Joint session of the Parliament before, sir, starting the session, sir. She says, I will not take the session, I will not address the joint session. What will happen? Sir, may I take a guess, sir? I think the session will not start, sir. Pratham, go back and read the conditions of impeachment of President and you will find out. Okay, sir. Okay. Now, second question I have, there is something mentioned as disinflation. Do you know what is disinflation? Yes, sir. Disinflation means the rate of inflation has declined. However, in general, the prices are still going up. It's a very good answer. Now, I hope you know about the ultra processed foods. You have a generic idea. The question Yes. is not on that. The question is that economic survey is talking about imposing a health tax on these type of foods. Now, if I ask a suggestion from you, should the consumer be taxed or should the producer be taxed? Who is the culprit here? I think, sir, the producer should be taxed. However, the tax system works in a way that the taxes are transferred and the burden is transferred on the consumer, sir. So the regulations or the health tax could be in such a way that the producer should be deterred to use such chemicals or preservatives, and it should be alternatively some healthy preservatives or other things could be used. So nudging the producer should be a better way. Okay. There is some report on Hindu in this. Go and read that. Okay. Now let's mix international relation with economics. Okay. Okay, sir. So India wants to be a developed country by 2047. In this regard, don't you think that we should take the most advantage of China plus one, or have we lost the opportunity? I think, sir, we should take the opportunity, and for that, sir, India has taken multiple initiatives. For example, PLI scheme, Make in India, and other initiatives. For example, ease of doing business by providing single window But clearance. still, India is getting investment in terms of foreign institutional investment. What about the physical investment in India? Physical investments, sir, FDI, sir. FDI, any other type of the companies coming to India and producing here, creating employments here. There have been companies which are coming here for assembly purpose. However, there is a need to increase the manufacturing for the inputs that the assembly is made in India, and
Also, sir, there are challenges in terms of credit availability and some other challenges. For example, sir, land clearance is there. That is preventing such companies to come and set up their businesses. Sir. Do you So, think there's a skill mismatch too? in India, yes, sir, there is a skill mismatch also. Any recommendation for that? Yes, sir. From school level, we need to inculcate the news skills, for example, artificial intelligence, news on new technology, for example, artificial intelligence, machine learning, as well as other soft skills which are required. And in, sir, later on, NEP has suggested that vocational training should be promoted, and there should be an industry academic linkage that should be strengthened. Okay, Pratham, I hope you are still Pratham in the ex-services. Thank you so much. Sir, please. Thank you, sir. When did the uniform civil law come into force in Uttarakhand? Sir, date I'm not sure, but it's this in this week, sir. This week. Yes, sir. Okay. Similar law you think can be implemented in Himachal Pradesh also? Yes, sir, it could be possible because the demography of Himachal is almost 99% are Hindu. So it could be possible. However, there is a challenge of certain tribal population living there. That could be a challenge. And what about the live-in relationships? Are they quite common in Himachal Pradesh? In some cities like Shimla and Dharamshala, there are some instances. However, in general, sir, society do not accept live-in relationships so far, sir, So, in rural areas. so do you think the relationship should be registered? So in principle, it looks good that it will prevent such cases. However, in practical, sir, it will intervene. The state intervene in the No, privacy. finally, you have to look at it as an administrator. It can't be theory and practice. It has to be put together. Yes, sir. So You can't have the cake and eat it too. yes, sir. Give me a final position. Okay, sir. May I take few seconds to think, sir? I think, sir, it should not be registered as such. Why? If marriages are compulsorily to be registered, why not live-in relationships? Sir, in marriage, the legal obligations, for example, legal obligations are there whereby adoption. Live-in relationships also carry legal obligations. It's permitted under the law now. So there are obligations. Yes, sir. The Domestic Violence Act will operate, Yes, sir. will it not? Sorry, sir. I'll read about it, sir. Okay. Is TikTok banned in USA now? TikTok, sir. The TikTok has been, the initiation has been begun. However, Trump has put an pause on it so that the Trump is arguing Who's to Trump? Is your servant or what? Sorry, Who's Trump? President Trump, sir. President Trump has paused the beginning of the and he is trying to transfer the funds of equity of the company to the some US owned company. Okay, thank you. Thank you, sir. Right, so shall we come to the points? Now, the interview is over. Okay, sir. You have a very good appearance. When you walked in, I thought you will score 200, 190, 200. But your expression is very weak. A, because you have a flat voice. I mean, I think you can modulate if you want, but you are not doing it. And B, because you are halting in your speech. Either you are thinking for every word that you speak, or you have the information but you don't want to let it out. Is that a habit with you? You're speaking very slowly and in a halting manner. Speak slowly is fine. Okay, sir. But why in a halting manner? Yes, sir. I think I need to practice more. It's a general quality which I would request you to focus on. A knowledge base has to improve, particularly when it comes to your own. Now you got into the police force, so questions on the police force, questions about CAPF, questions about Himachal Pradesh again. So these are knowledge base is quite weak. Okay, sir. Political science you are not bad, but I think current affairs again you need to brush up a lot. Particularly economic survey and things. So you almost, you said I haven't read the economic survey, so that's not done. Lastly, as a part of my preliminary comments, I would only like to say that you have a very good chance of success. Is this your first interview before the UPSC?
Yes, sir. Apart from for civil services, it is the first one. Yeah, and so but maintain a certain consistency in your views. See, you said registration is okay, then it's not okay, then it's okay, then give me a few seconds. Then you say theory, practice. All this is not required. I mean, it's a very simple decision to make. Okay, sir. Either you say it should be registered because marriages are registered, so why not live in relationships? And the government has done it. Yes. It's a government which is the same party in power in state at the center. So obviously the central government is in sync with it, isn't it? Otherwise that state wouldn't have done it. And you also said your state is very similar, and I asked you specifically for your state. Yes. So in your state, if Uttarakhand has done it, why not Himachal? So you are contradicting yourself. If you are similar to Uttarakhand, you should say, yeah, it's a good law and it should be implemented here. Okay, sir. Because it makes sense. For example, sir, if I may ask, if I disagree to that, Yeah. is it okay in the interview or sir? No, if you disagree, then where is the logic? You tell me the logic, I will Okay, agree. sir. You tell me what is the logic behind disagreeing. Himachal is not an urbanized place, Yes, sir. and everybody knows everybody else almost, except in one or two places, cities probably. So in general, I'm speaking, sir. In general, yeah, if you disagree, I am asking specifically for Himachal, but if you talk about the country as a whole, Okay, sir. I think as of now, the central government hasn't come out with a uniform civil law. Now it's for every state to decide what to do. Yes, sir. The states decide to do it, then obviously they're using common sense to decide on it, Okay, sir. right? Yes, sir. So it's for the states to decide as of now. I'm Yes. sure the central government is trying to build up a consensus of some sort before implementing it in the country. Yes, sir. But finally, what is your opinion? That has to be logical. Okay, sir. Forget about what the government does. What is your logic behind not registering a live-in relationship? Okay, sir. It's a very simple thing. That means that I'm just confused that I can take any stand, but it needs to be justified by. No, you can take some stand, but it can't be justified. This one is very difficult to Okay, justify. sir. Okay, sir. Because the child is a legitimate child. If the child is legitimate, then how will the child get inheritance from the parents if the relationship is not registered? Okay. Tomorrow they will say it's not our child. You can't have a DNA check for every child. Okay, sir. It's not possible. Practically speaking, it won't work. Okay, sir. And morally speaking, if you have to register a marriage, why not a live-in relationship? Yes, sir. So, I mean, secrecy cannot be to that extent guaranteed. After all, you have to look at what is called as societal correctness. Yes, sir. Up. Yeah. Your only thing which I found missing is a smile. Okay? Since you have already been selected, bar will be slightly higher for you. Keep smiling till 20 seconds. Things will go very well for you. Thank you, sir. Okay? Cheer up. Nothing more. Pressure में आ गया थोड़ा. You are looking good. Very good. Excellent. That's what I said when he came in. I thought he's going to get 200. Dressed very well. While answering about the civil service, you have to know the things properly. See, like saying SP maintains law and order, then saying they work at the ground level, then saying that the panchayat member is also a civil servant. See, please, for God's sake, don't make off-the-cuff remarks. It's a serious business. See, civil service is a service which implements the laws of the country on behalf of the sovereign. Who is the sovereign? The government. Government is the sovereign in India. Okay, and it is the civil service which implements the laws. So it's a very serious business. Except for judicial functions and military functions, all functions of the sovereign are discharged by the civil service. It's a very serious affair. So you got to know precisely. The district magistrate alone can order firing, and the SP is only for crime prevention and investigation, not for maintaining law and order. That is the DM. He doesn't know about the Police Act. आपको पता नहीं. There's something called an Indian Police Act. Yes. Please read carefully. Okay, sir. Okay. Thank you, sir.
Thank you, sir. Anything else? No, sir. If you want to ask Thank you. something. No, sir. I think one thing, sir, I need to ask, if I may, sir, that I could not answer some questions, so I felt underconfident. So how does it, sir? Is it like impact the overall assessment, or sir, how is it, sir? No, it will definitely impact. Yes, sir. Depends on the question, but Yes, sir. see, if it's a question which is very difficult, I may even say, well, it doesn't matter because it's quite possible you haven't read about it. But if it's something which concerns the day-to-day developments, yesterday, today, and kind of, which is engaging public attention, Yes, sir. and you are not aware of it, that shows that you have no curiosity to know, to understand. That's important. Secondly, things about your subject which I might ask, and if you say I don't know, then obviously you are trying to cheat the board. Okay, sir. Because you would have read it, but then you were not able to recall. And you're just trying to escape by saying, well, I don't remember. So that's not acceptable. So it depends upon the question and it depends upon how you answer it. Okay, So I think generally keeping abreast with the developments of, around you is very important. Okay, sir. At the same time, well, there could be certain questions for which you may not have the answer. You must have the honesty to say, I don't know. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay. अरे सही, क्या फायदा सही जाने से? नहीं मानते यार, वो बुढ़ऊ हैं दोनों, क्या नहीं मानते। 7 से 8 मिनट में बैठ जाता है। बोलता हूँ मैं, पर यार सुनते नहीं हैं, क्या कुछ भी नहीं। कितना? ये तो फ्लैट बनाने मैं भी अगर चाहूँ तो नेबर बन सकता हूँ। भी है उधर अरे he is very resourceful. 2 lakh 250 per square yard. Ready? गुड़गांव पर यार बहुत महंगा He is expanding like anything. चल, आप मेरी बैठ रहे हो क्या? नहीं, because he is from the Kader, he is director. No, he has full. He has a kind of position. He is very resourceful, Sunil sir. नहीं नहीं May I come in, sir? आइए Good morning, sir. Good morning, sir. भाई आइए Thank you.
आप हैं ममता जोगी। जी सर। अब कहाँ काम कर रही हैं? सर मैं बीकानेर में, जो मेरा गृह जिला है, वहीं पर लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर। यहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तोलिया सर। थोलियास, राइट। वो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में आता है क्या? जी सर। अच्छा, तो लेक्चरर का काम में मतलब आपको सुबह से शाम तक काम है, कैसा है वहाँ? हाँ जी सर, स्कूल लेक्चरर है, 11th-12th के बच्चों को हिंदी। 11th-12th, अच्छा। जी सर। तो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जी सर। 2020 में जो लागू हुआ है, तो उसमें फीचर्स क्या है स्कूलिंग के बारे में, स्कूल एजुकेशन के बारे में जो है, क्या है इम्पोर्टेंट फीचर्स? सर सबसे इम्पोर्टेंट तो फीचर स्टेज वाइज डेवलपमेंट है, 5+3+3+4 जो है, और इसमें प्री एजुकेशन को भी शामिल कर लिया गया है एजुकेशन में। दूसरा इम्पोर्टेंट फीचर है सर, इसमें 6 क्लास से वोकेशनल एजुकेशन, वो तो अभी मतलब कई स्कूलों में लागू भी कर दिया है उसे, तो 6th क्लास में वोकेशनल के लिए, और उसमें सब्जेक्ट डाइवर्सिटी काफ़ी रखी गई है, केवल IT ऑटोमोबाइल तक ही नहीं, कई और भी सब्जेक्ट इसमें शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा है त्रिभाषा जो फॉर्मूला है वो लागू किया जा रहा है, जिसमें 3 जो लैंग्वेज है, उत्तर भारत में जैसे सिर्फ संस्कृत पर ज़्यादा दिया जाता है, उसकी जगह साउथ इंडिया के जो लैंग्वेज है उनको वेटेज पर काम करने के लिए सुझाव दिया गया है। और सर इसमें स्कूल एजुकेशन के लिए एक और है इम्पोर्टेंट जो फीचर है सर, हायर एजुकेशन के लिए तो याद कर पा रही हूँ, पर स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन आप बताइए, ठीक है, एक फीचर बताइए। हायर एजुकेशन के लिए सर मल्टीपल एग्जिट एंड मल्टीपल एंट्री का प्रोविज़न किया गया है इसमें, ताकि बच्चे का जो डिग्री में जो लॉस है वो ना हो। टीचर ट्रेनिंग के बारे में क्या कहा गया? सर टीचर ट्रेनिंग में इसमें ऑनलाइन जो निष्ठा प्लेटफॉर्म है, दीक्षा पोर्टल है, उसके माध्यम से अच्छा ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया है। आपके प्रेफरेंसेस में फॉरेन सर्विस नंबर 3 प्रेफरेंस है। जी सर। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया है कि बांग्लादेश, मतलब सारी जो कंट्रीज हैं दुनिया में, सबका जो फॉरेन एड जाता था USA से, वो अभी उन्होंने बंद कर दिया। जी सर। तो उससे असर क्या पड़ रहा है बांग्लादेश में? सर इसके बारे में मैंने सोचा नहीं, पर अगर मैं सोचूं इसके बारे में, हाँ बताइए। तो एक जो पैसे मिलते हैं, एक डेवलपिंग जो कंट्री होती है, उनको जो भी सहायता, आर्थिक सहायता जो मिलती है, उससे वो अपने जो भी सामाजिक क्षेत्र है उनमें डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, तो वो एक क्षेत्र प्रभावित हो सकता है सर। अच्छा, लॉजिकली करेक्ट आंसर। अच्छा, राजस्थान में आप कौन से डांस वगैरह आप प्रैक्टिस करती हैं वहाँ? अब कुछ लिखा है आपने जो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। कालबेलिया डांस सर। कालबेलिया। हाँ जी सर। अच्छा, उसमें और घूमर डांस में क्या फर्क है? सर घूमर डांस तो राजस्थान का एक राज्य नृत्य है, तो राजस्थान के हर क्षेत्र के हर तरीके के लोग करते हैं। कालबेलिया जो डांस है वो एक लोक नृत्य है, तो केवल कुछ जो कालबेलिया समुदाय है उन्हीं के द्वारा किया जाता है, और दूसरा अंतर एक व्यावसायिक डांस है सर ये। अच्छा, बहुत बढ़िया। इनकम टैक्स के बारे में आप बताइए, इनकम टैक्स स्लैब्स क्या है जो अभी हमें पे करना पड़ रहा है इस साल, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब इस असेसमेंट ईयर में जो होगा, अभी का स्लैब्स आप बता सकती हैं? सर मैं कोशिश कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल। सर जो पहला स्लेब है मे भी वो 10% पे है सर। नहीं, कब तक, मतलब कहाँ तक कोई टैक्स ही नहीं है? सर 7 लाख शायद। 7 लाख तक शायद। तो दो पैटर्न्स है ना, एक ओल्ड सिस्टम है, एक न्यू सिस्टम है। तो ओल्ड सिस्टम में क्या है, न्यू सिस्टम में क्या है? ओल्ड सिस्टम में शायद 5 लाख था। अच्छा। और न्यू सिस्टम में शायद 7 लाख। ठीक है, उसके बाद हाँ, उसके बाद बताइए। उसके बाद सर जो स्लेब है वो 15% का है शायद। अच्छा। हाईएस्ट जो मैं याद कर पा रही हूँ वो 30% का है। उसके ऊपर सेज, सरचार्ज और कुछ ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा। नंदा जी, इसी सवाल में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ आइडिया है कि भारत में हर साल कितने लोग हवाई जहाज की यात्रा करते हैं? नहीं सर। 15 करोड़, ठीक है ना। और रेल में हर रोज 2.4 करोड़ लोग यात्रा करते हैं।
कारें कितनी हैं हमारे देश में, कुछ आइडिया है? नहीं सर। 6 करोड़ कारें हैं। ठीक है सर। और स्कूटर, टू व्हीलर कहा जाए तो कितने होंगे? नहीं पता सर। अगर 6 करोड़ कारें हैं तो टू व्हीलर कितने होने चाहिए आपके, कुछ आपका क्या तर्क क्या कहता है? सर ज़्यादा ही होने चाहिए। हाँ, कितने ज़्यादा होने चाहिए? 8 करोड़ 9 करोड़ कुछ होने चाहिए। 27 करोड़ टू व्हीलर है। अच्छा सर। तो इस सब को देखते हुए आपको लगता है कितने इनकम टैक्स पे करने वाले होने चाहिए देश में? सर इनकम टैक्स अपनी, जो मैं समझ पा रही हूँ उसमें अपनी जो आवश्यकताएं जो होती है वो पूर्ति के बाद पे करने वाले कितने होने चाहिए जो पे करते हों हर साल? सर मैंने जो लास्ट टाइम कोई डेटा पढ़ा था उसमें इनकम टैक्स का पढ़ा था सर, तो इनकम टैक्स में शायद 4% या 5% के आसपास पढ़ा था सर। 5% लोग पे करते हैं? हाँ मैंने मतलब ऐसा पढ़ा था सर, याद नहीं आ रहा। ये तो इसको देख लीजिएगा। जी सर। रिटर्न फाइल करते हैं तो 7%। अच्छा। पर पे करने वाले तो बहुत कम है। अच्छा सर। तो उसको देखिएगा। तो ये जो मैंने आपको आंकड़े बताए, इससे आपको लगता है कि इनकम टैक्स पे करने वाले ज़्यादा होने चाहिए? सर इनकम टैक्स इनकम पे लगता है मेरे हिसाब से, तो एक साधन होना, जैसे जो एरोप्लेन में, जैसे मैंने कभी अभी तक यात्रा नहीं करी, मेरे हिसाब से जो एरोप्लेन में जो यात्रा करते हैं जो है उनमें ये माना जा सकता है कि शायद वो थोड़े से हाई क्लास के लोग होंगे, तो इतने लोगों को तो करना चाहिए। ट्रेन में ये है कि जनरल की भी होती है। हाँ वो ठीक है। तो उस हिसाब से वो तो एक जो आम आदमी होता है सर, उसके हिसाब से। चलिए, आप ये बिग्गावास से हैं, जी सर। इसका क्या मतलब है बिग्गावास का? सर बिग्गावास का मतलब है जो श्री डूंगरगढ़ जो तहसील है उसके पास बिग्गा एक गांव है, जो वहाँ एक बिग्गा जी जो भगवान है उनका मंदिर है। अच्छा, उसके नियरेस्ट होने की वजह अच्छा, से। ये बताइए कि TFR क्या है हिंदुस्तान का अभी? सर 2 पढ़ा था मैंने लास्ट। 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं अगर 8वीं का बच्चा हूँ, मुझे कैसे समझाएंगे कि TFR 2 का क्या मतलब है? सर एवरेज जो औसत होना चाहिए वो 2.1 होना चाहिए। तो मैं बच्चों को ये समझाऊंगी, अगर बच्चे सामने मेरे बैठे हैं तो मैं ये समझाऊंगी कि इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में भारत के पास जो युवा जो है और जो कम होंगे, तो जितने माता पिता है, हाँ, जितने माता पिता है उनसे कम बच्चे, जैसे 2 से 2 बच्चे पैदा होने चाहिए, जिससे एक जनसंख्या की लाभांश है वो संतुलित रह सके। पर भारत इसमें नेगेटिव की तरफ जा रहा है सर। हाँ, थोड़ा और सिंपल करके कह सकते कि 2 व्यक्ति जाएंगे तो 2 जने पीछे छोड़ जाएंगे। ठीक है ना? उसके लिए 2.1 क्यों बोलते हैं फिर? हाँ 2.1 क्यों चाहिए फिर? सर 2 के बदले 2 रख दो तो हो गया काम। सर इसका मतलब है कोई डेथ हो जाए किसी की बीमारी से, कुछ भी किसी भी कारण से, तो औसत रूप से। चलिए, आखिरी सवाल, अभी IMR कितना है इंडिया का? सर मैं ये गेस करना चाहूँ, मतलब याद। हाँ गेस करो। सर 96 94 कुछ, मतलब। अभी IMR 28 हो गया है। अच्छा। और एक बड़ा मेजर कारण है वो, जो आप देख लीजिए कहीं, स्वच्छ भारत की वजह से, स्वच्छ भारत मिशन की वजह से IMR काफ़ी डाउन आ गया। ठीक है? हाँ जी सर। देख लूँगी सर। मैडम। जी सर। आप बीकानेर से हैं? जी सर। ठीक है। तो ये बताइए कि IAS अफसर बन करके आप क्या लाइफ में अचीव करना चाहती हैं? सर मैं सबसे पहला काम तो करूँगी, थोड़ा सबसे पहला काम तो मैं ये करूँगी सर कि मैं जिस भी जिले में जाऊँ कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, भूख की वजह से ना मरना पड़े, मतलब भूखा नहीं रहना पड़े। दूसरा सर मैं शिक्षा के क्षेत्र में करूँगी। शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ पर 100% 12th के साथ गुणवत्ता के साथ सारे बच्चों को शिक्षा मिले।
तीसरा सर जो मैं काम करूंगी, मेरा जो जिला है वो टॉप 10 जो स्वच्छता रैंकिंग में है, टॉप 10 जो स्वच्छता की जो रैंकिंग आती है भारत में, उसमें टॉप 10 में शामिल हो सर। ये बताइए कि राजस्थान की मूल 3 क्या समस्याएं हैं? सर पहली तो मैं समझ पा रही हूँ महिला शिक्षा का, भारत में सबसे नीचे का जो जिला है वो राजस्थान ही है, 52% ही है राजस्थान में महिला शिक्षा। सर दूसरी जो मैं कमी में समझ पा रही हूँ कि वहाँ पर एग्रीकल्चर में जितनी बोई जाती है जमीन, उस हिसाब से किसानों को उत्पादकता मतलब रिटर्न नहीं मिलता है, पानी की कमी की वजह से, और जो मरुस्थली जमीन है उस वजह से पीने के पानी की भी समस्या है। और तीसरी जो सर मैं समस्या समझ पा रही हूँ, इस वजह से वहाँ इन्वेस्टमेंट और उद्योग जो बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं वो नहीं पहुँच पाती है सर। तो ये क्या विडंबना है कि शेखावाटी क्षेत्र से बड़े बड़े सेठ हुए जो पूरी फैक्ट्री दुनिया में लगाई उन्होंने, बांगड़, बिरला, तोदी, मोदी सब, लेकिन राजस्थान में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट किया? एक पिलानी में कॉलेज खोला, ऐसा क्यों? सर मैं खुद बीकानेर से हूँ, तो उस एरिया के मैं सोचूं तो वहाँ संसाधन कम है, एक क्षेत्र से दूसरे। मैं तो राजस्थान की बात कर रहा हूँ ना, केवल आप IAS अफसर तो बीकानेर के लिए थोड़ी बनेंगे, राजस्थान के लिए। शेखावाटी क्षेत्र सर बीकानेर के पास में ही है। तो क्या राजस्थान में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं आता है? सर एक तो ट्रांसपोर्टेशन दूर दूर है, जो क्योंकि बड़ा एरिया है क्षेत्रफल की वजह से, तो जो मुख्यालय हेडक्वार्टर और जो आपस में जो दूरियां होती है वो काफी ज्यादा है। तो सड़क बनाने से ठीक हो जाएगा, पर सर ज्यादा बनानी पड़ेगी दूरी डेवलपमेंट के लिए। और गुजरात इतना आगे बढ़ गया तो राजस्थान क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्या रुकावट क्या है? सर एक गुजरात और राजस्थान में कंपेयर करें तो गुजरात में कोस्टल एरिया है सर, और राजस्थान में सारा डेवलपमेंट कोस्टल एरिया में थोड़ी हुआ है। राजस्थान और बड़ौदा है, सूरत है, अहमदाबाद है, ये सब कोस्टल एरिया थोड़ी है। राजकोट है, कौन सा कोस्टल एरिया है? सर उनके नियरेस्ट तो है सामान अपने को मैन्युफैक्चरिंग करना, पहुंचाना, कच्चा माल उपलब्ध होना। तो इसका मतलब राजस्थान का कोई फ्यूचर नहीं है? नहीं नहीं सर, राजस्थान जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में अच्छा काम कर रहा है। कितना? सर 19% योगदान है भारत का, हाईएस्ट प्रोडक्शन है। ओके। अच्छा ममता जी, आप तो हिंदी लिटरेचर का है ना? जी सर। गरीब के बारे में हिंदी लिटरेचर में काफ़ी है, जी सर। वहाँ लेडीज़ के बारे में भी है। जी सर। अभी थर्ड सेक्स भी है, उनके बारे में भी होगा लिटरेचर। थर्ड सेक्स ऐसा क्या बोलूँ मैं, ट्रांसजेंडर को आपका हिंदी में बोलेगा तो मेरे को इतना आता नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। आप गरीब का कहानी मेरे को मालूम है, सब लोग बोलेंगे गोदान, उसके अलावा कुछ बोलिए। सर श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी है, उसमें ग्रामीण पृष्ठभूमि का राग दरबारी में आपने क्या सीखा राग दरबारी से? सर मैंने ये सीखा कि अगर ग्रामीण स्तर का जो प्रशासन है वो अगर मजबूत और सही तरीके की दिशा में काम करे तो प्रत्येक ग्राम का विकास होगा, तो पूरे देश का विकास। ये करप्शन क्यों हो रहा है? आपका राग दरबारी में करप्शन के बारे में लिखा है ना, करप्शन क्यों हो रहा है? सर जो मैं समझ पाई थी उसे पढ़ने के बाद, उसका मैं ये समझ पाई थी कि जो ग्रामीण स्तर का जो प्रशासन है वो उन्हीं में से, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्हीं में से बना है। ये 1993 के बाद पंचायती राज संवैधानिक बना था, और राग दरबारी लिखा गया था 1970 के दशक में। तब तक जो ग्रामीण जो पृष्ठभूमि थी उसे संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया था उस टाइम तक। अभी करप्शन नहीं है, मतलब संविधान का अधिकार मिलने के बाद करप्शन नहीं है? नहीं सर, काफी सुधार हुआ काफी सुधार है। जी सर। अच्छा, ये तो अच्छा है। फिर ये अभी हमारा देश में एक आप अभी राजस्थान के बाहर आए, अभी अपना देश को ना कितना विकसित भारत में कितना
इनकम होना चाहिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, कब बनना है? सर 5 ट्रिलियन तो अभी 25 का ही था लक्ष्य। पहले 25 30 में? पहले 30 का किया था, फिर संशोधित कर दिया था मैं भी। अभी कब तक बन जाएंगे हम? सर अभी जो मैंने जो लास्ट पढ़ा था वो 3.9 ट्रिलियन भारत है अभी, 8%। अच्छा, वेरी गुड। तो मेरे हिसाब से कितना ग्रोथ रेट होना चाहिए, जीडीपी रेट? सर अभी जो कल का जो डेटा मैंने देखा था वो 6.4 बता रहा था, इकोनॉमिक सर्वे जो आया था। हाँ। और अगले साल का 6.3 से 6.8 के बीच बताया उससे है। नहीं हो पाएगा। हाँ, पर हाँ ठीक है, आप पढ़ लीजिए। मैं एक चीज पूछता हूँ, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब बोल रहा है ओनली 2 सेक्स होगा अमेरिका में। जी सर। हमारे इधर भी 2 सेक्स ही होना चाहिए, आदमी और औरत, और कोई नहीं चाहिए। इससे कोई फर्क है, कोई प्रॉब्लम है? जी सर। क्या प्रॉब्लम है? सर जेंडर मेरे हिसाब से सेकेंडरी चीज है, पहले एक इंसान इंसान होता है। बल्कि अगर मुझे लाइफ में कभी मौका मिलता है तो मैं ट्रांसजेंडर के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में जैसे बहुत कुछ करना चाहूँगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो शिक्षित हो, बड़े बड़े पोस्ट पर आए, कुछ बिजनेस करे, कुछ नौकरी करे, जिससे वो अपने इंसान मतलब पहली जो पहचान है उसके काम से, उसके व्यक्तित्व से देखी जानी चाहिए। सर आप ये बताइए, आपका ये राजस्थान में भ्रूण हत्या क्यों इतना ज्यादा होता है? सर इसकी जो मैं समस्या देख रही हूँ इसमें, क्योंकि राजस्थान में महिलाओं को एक तो सुरक्षा का कारण था, ऐतिहासिक कारण देखे तो जो भी आक्रमणकारी आते थे इसी रास्ते से होकर आते थे। और मारवाड़ी जो समुदाय है वो कृषि क्षेत्र था नहीं, तो आदमी जो थे वो बाहर रहते थे। तो एक तो सुरक्षा के दृष्टि से ऐतिहासिक कारण देखने को मिलता है। दूसरा कारण था दहेज की समस्या राजस्थान में देखी जाती है। तो उस इसलिए ये भ्रूण हत्या ठीक है या ना? सर गलत है ये तो। या आप बोल रहे हैं ये जवान के लिए आदमी लोग चाहिए, लोग अटैक करेंगे तो आदमी लोग चाहिए, इसलिए मेल चाइल्ड अच्छा है, ये आप जस्टिफाई कर रहा है। भ्रूण हत्या अच्छा है नहीं है, ये बताइए। सर नहीं है। नहीं है, अच्छा नहीं है। नहीं सर। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपका राजस्थान गवर्नमेंट क्या कर सकता है, इंडिया गवर्नमेंट क्या कर सकता है? सर जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चला था, जब ये चला था 10 साल पहले तो 943 लिंगानुपात था, सेक्स रेशियो जिसे कहते हैं। अभी मैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा पढ़ रही थी तो 1020 है भारत का, और राजस्थान का मुझे पढ़ के अच्छा लगा कि 1009 है। ओह वेरी गुड। तो ये देख के ये चीज अच्छी लगी कि कोई ऐसा अभियान जो जन आंदोलन तक पहुंचे। ये एक चीज पूछता हूँ, ये डेटा मैनिपुलेट कर सकता है ना? डेटा भी ऐसा बोलता है इंडिया का जीडीपी डेटा चेंज करना है तो स्टैटिस्टिशियन लोग कुछ करके डेटा सब चेंज करते हैं, ऐसा कुछ करते नहीं ना? नहीं सर, सरकार जनता के भरोसे। ओके, थैंक यू, यू आर गुड, वेरी गुड। ममता जी, कालबेलिया नृत्य, जी सर। किनका नृत्य है ये? कोई विशेष समुदाय है? जी सर। कौन? कालबेलिया समुदाय सर। क्या काम करते हैं? सर मैं खुद भी कालबेलिया समुदाय से ही हूँ, और उसका जो मेन काम होता है सांप पकड़ने का काम होता है। और इसके सांप का जो होता है उससे जहर निकालकर कुछ जो राजस्थान में जो स्थानीय रूप से वनस्पतियाँ होती हैं उनमें मिलाकर जो उपचार, बिच्छू है, सांप है, जहरीले जो जीव जंतु है उनका उपचार करने का काम करते थे। पर भारत सरकार क्या आप सपेरों को काम करने देती हैं? हाँ, मैं यही आगे लाइन बोल रही थी सर। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया था, उसके बाद से इसे। ठीक है, तो राजस्थान के विषैले सांपों के नाम बता सकती हैं आप? सर एक तो पीणिया सांप है राजस्थान में, जो पीले कलर का होता है, वो हमारे उस क्षेत्र में सबसे जहरीला माना जाता है। उसके अलावा एक दो मुंहा सांप होता है सर, जिसको जहाँ से बीच में से मतलब काटते हैं तो उसके दोनों डायरेक्शन में मुंह दिखते हैं। ये एक जो काले कलर का जो सांप है, जो हमारे लोग एरिया के जो लोग हैं उसे पालते हैं। आप इसके बारे में पढ़िए, है ना? जी सर। सपेरे बीन बजाते हैं, वो बीन किस चीज की बनी होती है? सर तुम्बी की। ठीक है, सही है। चलिए, आप हिंदी साहित्य से हैं, कुछ कवयित्रियों के नाम बता सकते हैं? जी सर।
सर सबसे पहले तो मैं मीराबाई जी का नाम लूँगी, राजस्थान से थे वो। और उसके बाद महादेवी वर्मा जी है, छायावाद की कवयित्री है। ठीक। उसके बाद मनु भंडारी जी है। उसके बाद अभी जो वर्तमान में जो है उसमें नासिरा जो शर्मा है और चित्रा मुदगल है। स्वतंत्रता संग्राम के समय हमने ये देखा कि कवियों ने बहुत बड़ा योगदान निभाया है ना, स्वतंत्रता के लिए। तो महिला कवयित्रियों में कुछ नाम बता सकती हैं आप, या उनकी रचनाएं बता सकती हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, उनकी रचना भी चाहिए। लक्ष्मी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक। और सर इतना ही याद कर पा रहे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि राजस्थान में जातिवाद का काफी प्रकोप है। क्या आप इस बात को मानेंगे? सर अगर देखें तो जाति है राजस्थान में प्रभावित है, पर जितना उसे नेगेटिव लिया जा रहा है मेरे हिसाब से उतना देखने को नहीं मिल रहा है सर। जाति नेगेटिव नहीं है, मतलब जाति एक पहचान की तरीके से है। अगर आप उसे सीधे सिर्फ पहचान एक सरनेम के तरीके से अगर यूज़ करो तो मेरे हिसाब से ठीक है। आपने समाजशास्त्र पढ़ा है? जी सर। तो आपने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी जाति वर्गीकरण पढ़ा होगा समाज में। तो जाति तो वर्गीकरण लाएगी कि भाई मैं इस जाति का हूँ तो मैं आपसे बड़ा हूँ, आप इस जाति के तो आपसे नीचे हैं। हाँ सर, यही चीज़ इसको कैसे हैंडल करेंगे? नहीं सर, यही चीज़ जाति की जो है वो स्त्रीकरण जो करती है वही चीज़ जाति की गलत है सर। ये है जाति स्थिति के अनुसार नहीं होनी चाहिए, जाति सिर्फ सरनेम के अनुसार अगर वो जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं परंपरा के, जैसे मैं कालबेलिया समुदाय से अलग कर सकते हैं इसको। हाँ सर, प्रयास किया जाए तो मेरे हिसाब से। अंबेडकर जी ने किताब लिखी थी इस पर, क्या नाम है उस किताब का? इनहेलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है ममता जी, धन्यवाद। सर प्लीज। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में क्या लिखा उन्होंने? सर ये उनका एक भाषण लेख था जो उन्हें लाहौर अधिवेशन में देना था, पर वो मतलब उनकी स्पीच को देने नहीं दिया गया था, तो फिर उन्होंने निबंध के रूप में से प्रकाशित कराया था। तो इसमें उन्होंने यही सॉल्यूशन दिया है कि अगर जाति खत्म हो जाए तो समाज में एक समानता का स्त्रीकरण आएगा और व्यक्ति को सिर्फ अपने कार्यों से और उसकी जो कार्यों की जो स्थिति है उससे पहचाना जाए तो। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आई वुड से वेरी गुड परफॉर्मेंस। बहुत ही अच्छा था आपका इंटरव्यू। जनरली लॉजिकली करेक्ट आंसर्स। हाँ, आप लॉजिक मतलब काफ़ी इस्तेमाल करती हैं और रैशनली आप बताती हैं। दैट्स अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी। और जनरल नॉलेज बेस भी ठीक है, थोड़ा सा आपको करंट अफेयर्स आपको ब्रशअप करने की ज़रूरत है। बजट के बारे में, इकोनॉमिक मैटर्स वो सब आप देख लीजिएगा, मुझे हमने तो ज़्यादा पूछा नहीं। और तीसरी बात है कि आपका जो कंपैशन है वो बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर। मतलब लोगों के लिए आपका जो वो फीलिंग है वो अच्छा लग रहा था। ये मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो नेगेटिव भी 2-3 हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उस पर मतलब आपको इतना मतलब नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा इम्प्रूव कर सकती हैं तो बेहतर है। जी सर। जैसे अभी 14 फरवरी है ना इंटरव्यू, देखिए तो वॉइस थोड़ा सा आपका मतलब काफ़ी वीक है, बहुत ही मतलब सॉफ्ट वॉइस। तो इससे क्या हो सकता है कि कभी कभी ये भी है कि किसी को योर वॉइस विल नॉट बी हर्ड एंड देन ही विल आस्क यू 2 times, तो अच्छा नहीं लगेगा वो। हाँ, तो क्योंकि वहाँ भी मतलब लोग जनरली 60 से ऊपर हैं, यूपीएससी में 60 ईयर्स से ऊपर हैं। थोड़ा सा आप उसको कमज़ोर रखिए, सॉरी स्ट्रेंथन करिए कमज़ोर है काफ़ी। और दूसरी बात है कि थोड़ा आपका ये पॉइंट्स में जैसे ट्रांसजेंडर वगैरह आप बोल रही हैं वो बहुत ही अच्छा है, बट उसमें डोंट डिविएट फ्रॉम द लॉ। अभी जैसे आप सेम सेक्स मैरिज के बारे में सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, आपको मालूम है? सॉरी, मना कर दिया था। हाँ, मना कर दिया। हाँ, तो वो आपका मतलब क्या राय है उस पर? हाँ सर, मैं भी सहमत हूँ इससे। सहमत हूँ। हाँ, तो ये इस टाइप का मतलब डिस्टिंक्शन आपको करने की ज़रूरत है। कंपैशन एक जगह, दूसरी जगह ये है कि मतलब आपको सोसाइटी की हार्मोनी, हाँ, सोसाइटी को भी देखना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दैट इन माइंड। एंड लास्टली व्हाट आई वुड ओनली लाइक टू से अबाउट मैटर्स रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, जैसे एजुकेशन के बारे में, एनईपी के बारे में थोड़ा सा ये भी आप
ब्रश अप करिएगा. क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट लेक्चरर्स फेस, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विमेन सेफ्टी, व्हाट आर द इश्यूज कनेक्टेड विद विमेन सेफ्टी, इश्यूज कनेक्टेड विद infanticide in Rajasthan. So anything can come. तो वहाँ पे मतलब any question can come. थोड़ा सा उसको you must be very clear and focused. आप देखो बाकी सब ठीक है, आप थोड़े परेशान से लग रहे हो. वो एक जो एनर्जी लेवल होना चाहिए, एक एंथुजियाज्म होना चाहिए. आपके पास एक जॉब है जो इतने सालों से कर रहे हो, ठीक है ना, और पढ़ा रहे हो. तो आप दुखी होकर पढ़ाते हो कि स्माइल करके पढ़ाते हो? नहीं सर, स्माइल करके. यहाँ भी स्माइल करो. जी सर. ये अल्टीमेटली सब कुछ एनर्जी एक्सचेंज है. आपकी मुस्कान रहेगी तो आपको ऊर्जा मिलती है. आप हमसे ऊर्जा लोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे. जी सर. ठीक है ना? हाँ, अच्छा स्माइल कर. ठीक है ना, मुस्कुराते रहिए बस. आपकी मुस्कान ही आपको ले जाएगी खींच के. ठीक है, अब देखो कितना अच्छा लग रहा है. तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ेगा. और कोई क्वेश्चन नहीं आता, सिंपली बोलो मैं इसके बारे में और पढ़ूंगी, बस खत्म. आपका सिंपैथी कंपैशन चेयरमैन सर बोला, वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट हो रहा है आपका सब आंसर में. वो अच्छा है, आप बहुत अच्छा है. बट आप कविता बजट वगैरह देखना है, जो हो रहा है न्यूज़पेपर का देखना है, पढ़ना है. अभी जयपुर में फेस्टिवल हो रहा है, लिटरेचर फेस्टिवल, वो सब पढ़ना है. वो नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में, बट वो नोबेल लॉरिएट वेंगी रामकृष्णन, मिस्टर वेंगी रामकृष्णन इज अड्रेस्ड. वो सब देखना, कैसे साहित्य में, साहित्य से कैसे प्रगति मिलेगा, टैगोर जी ने क्या किया, उनका साहित्य का प्रभाव क्या है, संस्कृत का प्रभाव क्या है, बंगाली लिटरेचर का हिंदी में क्या प्रभाव है, ऐसा कुछ ज्ञानपीठ किसको मिला, ये सब चीज़ें जानकारी है तो बहुत बढ़िया होगा. ओके, ऑल द बेस्ट. एनर्जी चाहिए वही, एंड स्माइल. ओके. मुझको ऐसा लगा कि जैसे आप थोड़ी थोड़ी हल्की सी सहमी हुई सी हैं. क्या मेरा अंदाजा गलत है? हो सकता है सही है सर, मतलब आपका अंदाजा. क्योंकि अभी इंटरव्यू खत्म हो गया. हाँ. अब ऐसा लगा मुझको. नहीं, मैं दिल्ली सर क्या पहली बार आई हूँ. हैं? मतलब दिल्ली पहली बार आना हुआ है सर. हाँ, मुझे यही लगा जो आप बोल रही हैं. पर सही बात यह है कि मुझे आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा. मुझे ये लगा कि आप एक बहुत सच्ची सोच वाली व्यक्ति हैं, जो गलत सलत बात नहीं बोलती, जो सच बात है वो बोलती है. नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं. और जन सेवा की जो भावना है पब्लिक के प्रति, वो अच्छी उजागर हुई आपकी. तो ये सब आपके फेवर में जाएगा. थोड़ा सा देखिए, कलेक्टर जो है वो सहम के नहीं रह सकता. जिलाधीश, जी सर, वो तो बिल्कुल कमांडर इन चीफ होता है ना जिले का. तो इसलिए उसको तो पहली बार आते हैं तो क्या आसपास से रिव्यू ऐसा मिलता है कि मतलब अंदर क्या ही होगा, वो ऐसे सवाल पूछ लेंगे. नहीं तो वो दिमाग कुछ नहीं. में देखिए, आपने जो डाक बनाया है उसके अंदर से हम पूछेंगे, क्योंकि हमारा आपकी जान पहचान डाक से ही है. आपको हम पहले से नहीं जानते. जी सर. तो जो डाक में आपने लिखा है उसमें से ढूंढ के हम दो चार बातें आपसे करेंगे. जी सर. तो डाक की तो आपको तैयारी करनी है. और बाकी क्या पूछेंगे? इकोनॉमी के बारे में पूछेंगे राजस्थान की, या वहाँ के डाटा के बारे में, पर कैपिटा इनकम, बर्थ रेट, डेथ रेट, इंडस्ट्रियलाइजेशन समस्या, सोशल प्रॉब्लम्स, या इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बजट हो रहा है आज. बस. तो थोड़ा पेपर पढ़िए, और एक फाइनेंशियल पेपर जरूर पढ़िएगा. कोई पढ़ते हैं आप? सर, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ही हैं? द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ती हूँ. नहीं, इकोनॉमिक टाइम्स, चाहे फाइनेंशियल एक्सप्रेस, चाहे बिजनेस लाइन, कोई भी एक पेपर जरूर पढ़िएगा. आपके इंटरव्यू की तारीख क्या है? 14 फरवरी सर. 14 फरवरी. तो बजट के ऊपर सवाल आना गारंटी है. पूछेंगे ही पूछेंगे. ठीक है सर. ओके. हिंदू में भी आता है काफी.
ये इकोनॉमिक्स आप इंग्लिश पेपर इकोनॉमिक्स पेपर आप समझेंगे तो अच्छा है, नहीं है तो हिंदू इंडियन एक्सप्रेस काफी एनीथिंग है। एल्स? तो आप एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर एंड? आप कुछ और पूछना चाहती हैं? सर ठीक है क्या हाँ, बहुत ही बढ़िया था। इंटरव्यू ठीक में? नहीं है, इट वाज मच बेटर देन नॉर्मल। अच्छा है। ठीक है, आई वुड से यू गॉट अबाउट 180 185। हाँ, थैंक तो यू सर। और भी ज़्यादा मिल सकते हैं। चलिए, थैंक यू but you please keep in mind what the honorable member said. You are having a very dull look on your face. जी सर, इस पे मैं काम कर रही हाँ। हूँ। 13 दिन है तो 60% टाइम जो सवाल पूछे उसकी तरफ देखो, बाकी औरों की तरफ भी थोड़ा थोड़ा देखते रहो। हाँ सर, एक मैं यही पूछना चाह रही थी क्योंकि अलग Eye अलग contact. हाँ अलग अलग जगह से अलग अलग रिव्यू मिल रहे हैं। अब कुछ कह रहे हैं कि सिर्फ जिससे बात करो सिर्फ उसी को देखना है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नंबर सबकी सबने तरह देने हैं। सबका आपका कहानी लेके जाने का है, आपको कभी कभी सबको ध्यान रखना है, क्योंकि कोई आपसे ध्यान नहीं, सबका ध्यान आपसे आकर्षित करना है ना, वही काम है। 60-40 कर दो। हाँ, वो कुछ भी पर्सन करो, आप सबको लेके जाइए आपका अपना कहानी में। आपका इंटरव्यू बोर्ड ले रहा है ना, हाँ जी एक व्यक्ति ले रहे हैं क्या? सर मुझे तो आप रिव्यू तो आंसर सबको कर रही हैं। किसी हम को भी सुन रहे स्टेयर हैं। मत करना, हम भी सबको सुन लेके रहे हैं। जाइए। ठीक है। आप बीच बीच में ग्लांस करते रहिए, उनको बताइए आंसर, इनको भी देखिए, उनको भी देखिए, ठीक है? जी जी सर, स्वाभाविक, ओके, है, thank you. बहुत अच्छा है। और ऐसे हाथ को क्यों नॉर्मल रिलैक्स रहिए ना, ठीक है। ऐसे का मतलब है कि टेंशन है। अभी 3 हुए ना, सर थैंक यू। तो शुड वी वांट टेक अ ब्रेक नाउ और टेक अ ब्रेक आफ्टर द फोर्थ वन? अभी तो एक सेकंड नो, वी टेक अ ब्रेक विद ओके। अब तो 2 घंटे हो गए, चलो का you also, so I think we take a break 5 minutes. नहीं कुछ नहीं। राजा ये बता दिया खाली वाली क्या होगा? भैया जरा इसको खोल दो भाई, बाहर जाना है। कैसे चले जाए? म्यूट कर देता हूँ। अच्छा, So next is Chinmay Pyramid. So before this we have Chinmay. एक्सरसाइज भी हो गया, प्रोटीन No sir, you have cheated. I saw you eating biscuits. I ate biscuits. Yes, because, sir. I was staring at you. I was just waiting that you will look at me and I will give you a stare of criticism, of despair. You're breaking the discipline. You're tempting us to और eat. कुछ नहीं, आप Sir, please काजू का देते। eat the nuts, the best. And this thing. These have very high protein content. You asked the question about. She actually skipped the question. Which one? You asked that why India should have 3 genders or not. she She didn't answer. Didn't That was answer, no. But she is okay. No, sir, she is okay, but she is not up to the par with the competition. उसको सिंपल ही मिला है। I can agree, but sir, the concern is very different.
Yes, sir, it is. But she, compared to all others, she is better. Much better with Hindi literature. She is much better. She also answered the See, you have to look at Kavitri. it from the point of view of being a reserve candidate. She is much better. She's a jogi or something. So, whether she has a chance of getting selected, that's how we'll have to She see. will get it. She will get it. She will If get- she has, she has a chance. She will get, because that compassion and sympathy, that thing, humanism, is highly reflected. Very true. That is something rare. And it's quite sincere and honest also. Sincere Right. and honest. वही उसी में आ जाते हैं. That is the most important quality. I'm just one concern, the lack of exposure. Lack of exposure. She is only village. So it is not, teacher है. I agree, sir, but I'm discussing it with you. What if she is posted in a different state? Let's say northeastern state, in a hilly state. Now, don't you think? I agree, sir. I'm all pro with her being selected. My question is that she lacks a lot of exposure, clarity on this. What you वो तो ask. आएगा ना. With experience, I would say, but she will experience a lot. And on caste, sir, I was not satisfied with the answers that she gave. Answers are quality. Very my personal view on this. Yeah, I agree with you. I'm not. ये तो The berries, sir, you love it. very is good. Yes. There is one thing, the family or something ना. उनका आप ब्लिंकिन से ले लो. 6 berries, 6 trail mix. Trail mix. 4 berries है. काजू, dates, everything cut bit करके 5-6 चीज है. berries 3-4 berries है. बहुत अच्छा लगा मुझे वो चीज. I'll give you a different advice, sir. What I have done with my diet discipline, I've taken 8 different nuts, including these, a lot of these, cashew and almonds and so. I've just dry roasted them, and I'm grinded them with makhana. I'm not sure what it is called. Makhana. Makhana, I know. It's called something. I forgot. So I have made a paste, a powder. Oh, And very good. what I do, sir, I take a bowl of milk, I boil it, I make it hot, I take anjeer, I break 2 anjeers into them, and they actually makes the milk sweet. And then I mix that powder. It's a complete It's source of. beautiful. So you try it. We'll try it. That's a very fantastic thing. So I'm exploring with the. Last time I made something, a mixed salad, where I cut cucumber, carrot, beetroot, tomatoes, and then I mixed some paneer in that and curd, and mixed it. Very good. You are doing right thing. I'm experimenting with a lot of things, sir. It is very good. Actually, even when we go for outside, when we take any restaurant, there is no. And I asked that what type of venomous snakes are there. I hope, sir, you know. If you don't, then we will have this. There's a perception that if there's a perception that if a snake bites you, most of the time that they will catch the snake and they will go to the hospital. That should not be done. Because the anti-venom in India includes venom of 4 different snakes. Because all the snakes found in India, there are only 4 who are venomous. Only 4. So you All are don't, venomous. only 4. Only 4. Only 4 snakes in India are venomous. So if a snake bites you, you don't need to tell anything about the snake, anything. Because the dose they will give you has anti-venom for all 4. All the 4. You don't need any details. Acha, viper, great, Yes, sir. cobra. Yes, I have written that. There are 4. But actually there was a podcast on this, on awareness, that how to treat that if the snake has bitten Then you. you have to buy. No, sir, you have to do nothing. Let's say suppose the snake bite you here. Don't press it, don't do anything. Just make sure that your limbs do not move a lot. Keep it straight. The best way they have said that you take a stick there and have this, so that the hand does not move. Don't stop the blood circulation. Nothing. Don't wash it. Do nothing. Just take it. Have the stick placed here and go to any center. They have that anti-venom, and that is the protocol that it has 4 different types But of venom. within what time? Sir, I'm not sure about that, but as soon as possible. Immediately. Yeah, as soon as possible. For
Cobra venom is very. Cobra venom. Cobra is less, I think. Cobra works. Viper is. Sir, there are two types. So there are neurotoxin and there are that which create cardiovascular issues. The cobra venom works that it inflates the arteries. So what actually will happen that as the snake had bitten you, so we'll continue. Yes, sir. मेरी अच्छा हम ठीक मैडम सर को गर्म पानी दे दिया ना ग्रीन टी मैडम दे रही है आजा सर आपने गर्म पानी भी मांगा था क्या? दे रही है, गलती से नहीं दोबारा बोल दिया, मैं लिखा नहीं। मना कर दो। चलो स्टार्ट Who is the next person? कैंडिडेट वाला भैया नाम चिन्मय सर, चिन्मय प्रिमल सिंह. भाई यू आर दी ओरिजिनल प्योर वाला तो वेरी वेल क्वालिफाइड सर. हाँ भेज दो. वकील है May I come in? Come. Good evening, sir. Good morning, sir. Good morning. Please sit down. Thank you so much, sir. Chinmay Singh. Yes. Chinmay Pirmil Singh. Yes, sir. You are from IIT Guwahati and subsequently you studied at IIM Calcutta. Yes, sir. When were you at IIM Calcutta? Sir, I passed out in 2017. And after that, what have you been doing? Sir, I worked in the private sector in 2 companies till last year. So I resigned in 2024 February. Before Why? that, sir, Why I wanted did you to give resign? one full attempt with like full preparation. I was not able to dedicate enough time, so that is why. So, Took you 7 years to realize that. sir, it was more about financial condition, so it took me that much time to repay the education loan and get some savings to be able to afford this. We have the Mahakumbh Mela going on in Uttar Pradesh. Yes, sir. So when is that Mela coming to an end? Sir, it will end on 26th of February. Why is it being celebrated? Why is the Mahakumbh observed as Mahakumbh? Sir, it is celebrated because in Hindu mythology it is believed that during Samudra Manthan some drops of elixir, which is Amrit, the Okay, drops that's of... the understanding, that's the belief, faith. Yes, sir. Yeah, but why is it, I mean, apart from that, why is it that it's still relevant in today's times? So people believe that their sins or their misdeeds, they will be purified if they take a dip in the holy water at the Sangam. So that is the primary motivation. Is there a astronomical, astrological significance to it? Yes, sir. So it is based on the movement of Jupiter with respect to Sun, because of which, there are certain conditions, when those are fulfilled, that is when it starts. The time frame is determined because of that. On the day of the new moon or the full moon, or when was it? When is it? Sir, there is an auspicious day, I'm not able to recall the exact date, on the new moon, that is the day of the new moon day. So in between 45 days, it is on 29th of it was on 29th of January. And what happened on 29th of January there at Mahakumbh? So there was a stampede and Why? People were killed. Why was there a stampede? Sir, because I would say, I think that there was a little bit of mismanagement and the density of the number of peoples in a small area was
too much to handle. Now suppose, let's say you are the executive officer at the Mahako. Yes, sir. You are in charge of the arrangements. You could have planned it out differently. What else or what different steps would have been taken to make sure that the stampede didn't occur? Sir, I would have taken care of the traffic itself from the roads or the stations or the air traffic wherein the number of people are coming. So I would have determined that, I mean, if the number of people coming via the transport is more, then I would have staggered that entry itself from the starting point, so that in the area there is less congestion. No, but people were there and people fell over each other. You could have even a 200, let's say a group of 200 people there, and they could fall over each other. And if 200 people fell over each other, 10 people would die. So it's not the number alone. There was something else to it that led to the stampede. Sir, I am not aware about that. Okay. Like exactly. You haven't gone into that. No, sir. The equity markets are doing badly now. Sir, optically it would look like that, but I mean, it's not doing that bad. Okay, why would somebody invest in mutual funds now? Sir, for the long-term growth prospect, I mean, it is one of the best, or I would say the best instrument to generate money or create wealth over long periods of time. Okay. It has been seen historically as well. So you are from Izzat Nagar. Yes, sir. It's a very strange kind of a name, Izzat Nagar. बाकी जगह लोग बेइज्जतों के रहते हैं क्या? Sir, it looks like Izzat Nagar, but initially it started at Azat Nagar. It is based on a Britisher who was posted there. So the spelling was IZATNAGAR, but when it was converted to Hindi, it became somehow Izzat Nagar. That is how it is known now. और गुवाहाटी का क्या मतलब है? Sir, I am not aware about the meaning. वराह. Sir, Varaha is one of the avatars of Vishnu. So it is in the form of an animal. Half human and half animal. Animal also. Which animal? I think it's boar. Boar. So why should Indians be worshipping a boar? Sir, I am not aware about the exact reason behind that. Okay. You're talking about Kumbh Mela. So which calendar does India follow? Our astrologically, we follow the solar calendar or the lunar calendar? Sir, I am not aware. You're not aware? No, sir. Sir, I'll read about it. Okay. You are a chemical engineer. Yes. So, how come India became the pharmacy of the world? And what were the things which held us back also? So we became the pharmacy because of the low cost production of the generic drugs that we were able to do. Yeah, but what was there in the law that allowed generic drugs to be made? Yes, sir. So there was a compulsory licensing which was introduced because I mean under this law, the medicines which are which are used by the masses and which are the cost of them is very high in the developed countries. So it's not affordable for people to purchase them. So that is why. What kind of patent law we had earlier? Was it product patent or process patent? Sir, I am not able to recall. Yeah, so that is where the thing is. We used to follow process patent. Okay. So if you could use a different process, you were allowed to do that. Now India has joined WTO and we have switched over to what? Sir, I am not aware about it. Okay, but what is the bottleneck we are facing in making generic drugs? There is one thing which is still missing. Sir, we are still importing huge quantities of APIs from outside. So what prevented us from making the APIs in the first place? Sir, the only reason was the policy decisions that were there. I mean, we were, about 30 years ago, we were making APIs in India, but then somehow because of low cost of production, we switched to China completely and we lost focus on that. So it's not about the capabilities, it's just that we stopped doing that. Okay.
Yes, sir. Mr. Chinmay Pirmil Singh. Yes. Your name is Chinmay? Yes, sir. Okay. And Pirmil Singh is your father? Sir, it is more like a filler. Huh? More like a filler. I mean, there's no meaning to it. I mean, Okay. it was just like my father. All My right, parents all right, saw all somewhere and they just kept it was like that. I don't know why. Foreign service is your preference number 2. Yes, sir. So can we talk something in that? Yes, sir. Very good. Please tell me, what is rule of law? Rule of law means that the laws which, I mean, the society or the institutions are governed by a certain set of rules rather than arbitrary directions by an individual or anyone else or a group of men. Who gave the concept? Sir, I think it was, sir, I'm not able to recall the A.B. exact. Dicey. A.B. Dicey, yes, sir. So he meant that all citizens were equal before law, nobody was above law, nobody was below law. That is essentially the thing is. Now in the context of this definition, can you say if Pakistan has rule of law? Sir, theoretically they do have, but practically they Why don't. do you say that? Sir, they also follow the, technically they follow the democratic form of government. Yeah, that's not but my question. My question is that, is there rule of law there, yes or no? And please give arguments. Yes, sir. Sir, because there also there is Supreme Court which upholds the law which are arbitrarily given, and it also... Which law they follow? Pakistan follows which law? Sir, I'm not aware about it. Exactly. You heard the name Sharia law? Yes, sir. What does that mean? Sir, they are guided by the Islamic code, basically. So, in practice, what does it mean for the common citizen? Sir, I am not aware of that. Suppose if you are a Muslim, okay, and there are minorities also, Buddhists, Hindus, Christians. So, if you criticize their religion, that is one issue. Suppose if your counterpart, the Hindu or the Christian, he criticizes Islam, then what happens in the Pakistan courts? What will happen to that person? Because, because they say that they follow the Islamic law, which is Shariat law, so I think they are not allowed to criticize it publicly. No, why? Everybody is equal before rule of law. You can criticize my religion, I can criticize your religion. But they do not follow the secular principles. Then if they do not follow the secular principle and yet you say they follow rule of law. Sir, All citizens in Pakistan are not equal before law. Muslims are on a different footing and non-Muslims are on a different footing. So it is not equal before law. Okay, sir. Yes, sir. Mr. Chinmay, Yes. you are doing sociology, option sociology. Yes, sir. So first let me ask sociology. Okay, sir. Reservation has become very complex now all over India, different states. How is it 50% or more? Sir, after the initiation of EWS quota, it is more now. It is more. Now, many other sections are asking for. Do you know anything about the survey that Tribal Research Institute, some survey has come recently? You studied that? No, sir, I have not read. Anyway, some of the tribes are not traceable. Some of them want to be added. Some scheduled caste
are treated as tribe. So many issues. OBC treated as tribe. So there is a problem. The problem now, let me ask you hypothetically. Now 100% population, let's say you are Bareilly. 100% which community, which caste, whatever, social stratification wise, you put it, social caste wise, that is what we are doing, and economic criteria. Then 100% job, 100% population, proportionately we give it. No problem. What do you think? If Brahmin say, unka 1% hai, let them take 1% job. So, but then it will be detrimental to the society or to the country as a whole. How detrimental? Because everyone is getting their share. The wealth or job, anything we are giving share. Is it possible? So practically I don't think it is possible. Okay. Our problem is social stratification and polarization. How are they different? Social polarization and social stratification. So stratification is the existence of different strata, right? So there will be maybe 9 or 10 or maybe 5 or whatever the number is, there can be n number of strata, but if we say about polarization, then there are two extremes wherein people tend to incline towards extreme ends. Okay. Now question is your chemistry. Our former chief minister is saying Yamuna water is poisoned with ammonia. How is it possible? Sir, it is possible if the industrial effluents are being... Why only ammonia? What are the other chemical impurities coming into industrial waste? Yamuna water, and we will go to Allahabad, Prayagraj. Water in Prayagraj. What are the chemical impurities coming in both places? Sir, it depends on the industries. No, I am asking water quality standard. Simple question. What is the water quality standard of Yamuna? If it is not drinkable, what are the pollutants, chemical pollutants? Biological pollutants I am not asking. And same thing in your place, Uttar Pradesh. If you don't know, no problem. We will go ahead. Sir, exact pollutants. No problem. You are a chemistry student, so I am asking. Management student also. So we have to manage these things, right? Yes, sir. Now let me ask you something else. What I thought of asking is, how many water purification schemes of Ganga we have so far? And how much we spend, and what is the quality of water? Are we getting potable water? Are we getting water to take bathing in the river? These two things you answer. How many projects we did for Ganga? How many we did for Yamuna? Sir, I am not... यमुना छोड़ो, गंगा आप बताइए, आप उत्तर प्रदेश का है. Sir, exact I am not... अरे 1985 first Ganga action plan Rajiv Gandhi former prime minister created. After that Ganga action plan 2. You don't know all these. Sir, Abhi, what is going on currently? That you should know. Sir, Namami Gange... How much course we spent? That you should know. You are a management student. But I don't... You don't apply your mind to all these things. Just read IAS बोलने से IAS नहीं होता. You have to apply your mind, analyze the problems, how we can become a better country. Yes. Better water, better... Abhi, now the last question. Drinking water is a problem for Indian people. 1.4 billion people, most of them are facing. What should be the ideal quality water I should drink? Please tell me. So the TDS should be less than 200. What? What should be less than 200? Sir, TDS, total dissolved salt in the water. Only one standard is there.
You think over, okay? Thank you. Okay, sir. Okay, Chinmay, Yes. I was just going through your DAF and I found that you were earning close to 30 lakh rupees per annum. Yes, sir. So, if you are comfortable, can you tell us what amount of tax you were paying? Sir, I paid about 7 lakhs last year. 7 lakh rupees in taxation. Yes, sir. So overall, I have paid roughly 25 lakhs in about 6 years. Okay, so that was what type of tax? Income tax, direct tax. Okay, so do you pay indirect taxes too? Yes, sir. So are you satisfied after giving this amount of tax? Are you satisfied with the services that you receive in return? No, sir. Can you just point out some things that you don't like? Yes, sir. So number one would be the infrastructure, that is the roads that we use and the public transport, I mean the dearth of public transport for us to travel. That was number one. Number two is that we want potable drinking water in our houses. We have to install our RO for that. That is the job of the government to provide. Apart from that, if we see the education that is being provided to us in the primary, I mean till 12th class, that is also not up to the standard that should have been. And the healthcare services as well, there is less, I mean there are very less affordable healthcare services, especially in the metro cities. So can I say that this is your aspiration to come into civil services to remove these problems? Yes, sir. Sir, at a certain level, yes, but I mean there is a broader agenda to that as well. These would be just some of the things that I would like to do. So will you be able to resolve all of them? Sir, I will work towards doing that. You follow Indian equity markets. Yes, sir. In today's newspaper, there's a term in economic survey too that's known as financialization. What is that? Sir, it means that the increase in the financial assets of the country as a whole, or it will also mean that there is an increasing. Don't know. Now, let me rephrase this question in a different manner. Okay. A lot of Indians are investing more in financial market. Yes, sir. And here the middle class savings are getting into financial market, which is very volatile. I hope you know that. Do you think this is a good trend? Yes, sir. If they lose all their savings, who will save them? Sir, if you are not, if you are doing that mindlessly without reading and knowing where you are investing, in what type of instruments you are doing, then it is an issue. But if you know what you are getting into, then so my suggestion is that first educate yourself and then come into that. And do you think that all the investors are having financial literacy in this regard, or they are just following the social media trends? Sir, they don't have, but they should. It is their money, so I mean, they should be vigilant about it. So all the other avenues of investments are not giving returns, so that's why they are going there. Yes, sir. So, like any investment, sir, even if you invest in real estate or houses, there are good. They cannot afford the real estate investments. Okay. Just one more issue to cover. You play and watch basketball. Yes, sir. What is the FIBA ranking of India? 76. Who's that top? Top is Spain right now. Who's the coach of Indian team? Sir, I'm not able to Okay, forget thank you. the name. Thank you. Sir, please. What is the balance of trade for India per year roughly, or for let's say December 2024? If you want to talk about it month-wise. So we have roughly $40 billion of deficit. Per year, per month? Per year, sir. Per year, 40 billion. Yes, sir. How much is the FDI that comes in? And how much are the remittances that come? Sir, remittances for this year is expected to be around 135 to 140 billion dollars. Last year it was 129-ish billion dollars.
And FDI is, sir, very volatile. If we say, I mean, last year, in last FY, we received roughly $45 billion on net FDI. This year, we are roughly at about $30 billion of net FDI. And what are our foreign exchange reserves? So currently, our foreign exchange reserves are close to $600 billion. In September, they were at $700 billion. Actually, it should be going up according to you, because you're saying that the deficit is only $40 billion and we get remittances of $140 billion. So actually it should have gone up, it has gone down by $100 billion. Sir, it has gone down, sir. Overall, on a year-on-year basis, it is increasing. It is only in the last 3-4 months that it has gone down because of the depreciation of rupee. So RBI has used forex reserves to manage that. To manage what? Volatility in the rupee depreciation. And has it managed it, or the dollar has been allowed to, I mean the rupee has been allowed to depreciate, it's a free fall? Sir, it has been allowed to depreciate, but it's not a free fall. It's gliding. Okay, thank you. Now, are you ready for the feedback? Yes. The interview is over, yeah. Okay, sir. So, I mean, is this your first attempt? Second interview. Second interview at the UPSC? Yes, sir. Or mock interview you mean, or the UPSC interview? UPSC interview. What was your score last time? 190. 190? Yes, sir. So I don't want to discourage you. You should get that score once again. Last time you didn't make it. I don't know why. If you got 190 and still didn't make it. Very less marks in mains. Mains, okay. This time you've done better? Yes, sir. So that was the reason that I resigned and prepared, because You got an impressive record. IIT, IIM, and obviously from UP. So obviously we would like to take you. I mean, I'm sure the UPSC would love to take you. But today's performance was below par. I don't know why. Maybe you took it for granted, or I'm not sure what happened. When is your interview? 18th February. You still have time. So I don't want to really discourage you too much, but point is there is a certain level of curiosity that should be there. Now the stampede, why it occurred, it happened in your state and it happened, and you're a very intelligent person, so you should know why it happened. And everybody wanted to have a bath at the Brahma Muhurt time. So irrespective of what you do in the traffic, even 500 people can create a stampede. okay. So what you should have actually done is to conduct people to the ghat in a streamlined way. That was not done, and so they broke the barricades and fell over each other. Okay. Yes. So that was the problem. So it was not just the total number which was the problem, it was the actual number of people at the spot and the way they were conducted. Secondly, you very made light of your father and said, I don't care what my name is. They named me somewhat, I don't know how it happened. And Sir, actual reason is that there was not much thought given to the middle name. Yeah, whatever it is, nobody gives much thought, but then it's the parents' wish and the parents have normally named you. So, don't have to discredit them for it by being very casual about it. You just say, well, that was named by, I was named by my parents. Okay. Then TDS gave wrong information also. So you have a tendency to give wrong information. Do you think people will accept it? Total dissolved solids, not salts. Total dissolved? Solids. Solids, okay. It's not salts. And also a little casual in the way you approach the board. You're telling the board, okay, right? As if you're talking to a friend. This colloquial language will have to go out of your usage for some time, at least till the interview. Okay. It might get into your normal way of speaking, then you might have a problem. I don't think they'd appreciate that. So there are some points, kindly up. Yeah. You look a bit too serious. Okay. So smile, cheer up. You'll do well. Basically, what we are doing is energy exchange. So either you take energy from us or score. So if you smile, you give energy and you get back score. Okay, sir. Okay. Chinmay, I just want to make you aware of where you are weak, because it's important. Now the whole controversy of water is created in Delhi election. Water is important. You have to drink every moment, every hour you drink water, right? Yes, sir. So water, as a chemistry student, these are all issues have come in the newspaper. It's not that I create
A random question to you. It is the discussion. Chief Minister says, take bath here. Your Chief Minister says, take bath here. Show me. These are controversies. When you read such a thing, you are a chemistry student, you should have, as chairman says, natural curiosity. Why? What is the problem? How many rupees we spend on these projects? Why it's not happening? These are intelligent people's thought process. I think so. Do you agree? Yes, sir. Then you are very intelligent, very qualified, IIT, IIM, everything, Gogati. There are also problems you understand, okay? All the best. You will get selected. You are good, very good. All the best. I asked you about Pakistan and rule of law. Yes, sir. What do you think of your answers? So not technically correct. Not correct technically. Not correct technically. And the way you put the answer, was that correct? The way the conversation went on? No, sir. How it went wrong? So I was not aware about the situation in Pakistan about rule of law, the Shariat law at all. But then IFS preference to IIT, IIM, board will expect a better standard. And the way you were trying to defend your answer, that also left something to be desired. Because if you do not know, then you should politely say, sorry sir, I don't know, I'll read about it. Instead of saying Supreme Court and this and that. You see, there is a way in speaking English language, padding. So in serious conversation we don't do padding, no. Either you say yes or no. And for your good I am sharing with you. I got an impression that possibly there was a bit of an overdose of overconfidence in you. Exactly. Overdose of overconfidence, you see, which you can make out. And that doesn't work in your favor, you see. Because the first quality the UPSC expects in an IAS officer, aspirant, is a sense of humility. You see, Vidya dadati vinayam, that should be there. Thank you. Now there will be course correction, and I know you will do good. All the best. Aapko kuch you want to ask anything? No, sir, I think I got You it. gave some contradictory answers, so kindly avoid that. That's what I think the honorable member was also mentioning. See, CAA has been recently brought in. What is CAA? Citizenship Amendment. So what does that say? Why are people getting persecuted and why are they being allowed into India? If there was a rule of law, Yes. at least that should have rung a bell. So, I mean, these are very basic mistakes. It shouldn't happen. That's the reason. Total dissolved solid salts, okay. I mean, at least one can accept that as a slip of the tongue. But not this. This is a illogical argument. So, and you're pressing for it. You're saying, no, it's right. That's the problem. That's where it goes wrong. So, don't do that. I'm sure you'll get back to 190 as you did last time. We wish you all the best. Thank you. Okay. Thank you so much, sir. आपने अच्छा बोला, ये ओवरडोज हम आगे जा रहे हैं क्या? टाइम कितना हो रहा है? टाइम कितना हो रहा है?
अंदर कंडीशंस पार्टी खुश हो जाते हैं। हाँ, ये पैसा भी बहुत मिल रहा है। Salary based पे। नहीं ये भी सही नहीं था, मतलब वो बोल रहा था ना फाइनेंशियल कंडीशन I think he had an afterthought after getting into private sector. He had some problems there, and that's why problem. I don't think he's. अच्छा, feedback to this. I have not written the comment. कौन से I कैंडिडेट don't want to. So you can write anything. Which candidate is Mohit coming? Meena. Mohit Meena. After that, Harshita. इतना टाइम हो गया हमारा हम लोगों का सबका, ठीक है। 32 मिनट जाना है। 32। Who is sixth candidate? Harshita. अभी कम करेंगे यार। Sixth candidate. फीडबैक पे सर हमें कम करना है, बहुत लंबा फीडबैक, बहुत ज़्यादा लंबा, रिपीटेटिव ना वो सोचेगा क्या और रिपीटेटिव है ना, उसका उसका अभी ये वाला भी फिर Harshita को मिलाना। हम लोग पहले करेंगे यार। कल किया आप मोहित मीना को भेज सकती हैं। अरे यही है ये सब, ये लॉ Yes. May I come in? Good afternoon, sir. You will be interviewed in English. Yes, sir. Right. Thank you. Sit down. You are a student of law, Mr. Mohit Meena, and you studied at the National Law University, Delhi. Yes, sir. Can you tell me the difference in the judgments of the Supreme Court between the Golaknath case and the Keshwanand Bharati case? Yes, sir. There were two different judgments. Yes, sir. Sir, in the Golaknath case, the Supreme Court gave the judgment that fundamental rights cannot be amended. Whereas in the Keshwanand Bharati case, the Supreme Court said that fundamental rights can be amended if they are not part of the basic structure of the Constitution. They formulated a new doctrine. Very good. Now, what is the basic structure of the Constitution? Is rule of law one of the basic points in the structure of the Constitution? So, basic structure of the Constitution is consisted of those fundamental pillars of our Constitution which cannot be amended even by the Parliament. Is rule of law one of them? Yes, sir. Rule of law, as under Article 14, the principle of equality, which is a part of rule of law, is a part of the basic structure doctrine. So, if you go by the principle of equality, there should be no reservations. So, the principle of equality has a different meaning in our Constitution as opposed to the formal notion of equality which countries like US practice. What is that? So, we follow a substantive notion of equality, wherein equal opportunities and equal protection are given to people based on their respective positions. And reservation is one of the aspects of promoting equality. So it will have to go on forever? No, sir. For as long as there exists a difference in the opportunities that the citizens are getting, then to address that in those inherent differences, reservation is. Is there some meaning in the Supreme Court fixing a ceiling of 50% for reservation? Is there some meaning for it? Or can it go up to 75? Can it go up to 80? Yes. I mean, I agree, reservations are required. If they are required, to what extent can we have reservations? Yes. So in the Indira Sawhney judgment, the Supreme Court set the ceiling, but they also mentioned that under certain circumstances, the ceiling can also be expanded. So, but while making a decision in that regard, a report needs to be submitted as to why the ceiling needs to be expanded in specific cases. Okay. So you are from, you live in Dwarka. Yes. You heard of Bet Dwarka?
No, sir. You not heard of Bet Dwarka? No, sir. So what was Dwarka originally famous for? Sir, the Dwarka of Delhi, I'm not aware of. No, original Dwarka. Okay, sir. So it was a religious place originally, and it was also part of our Hindu scriptures. Dwarka holds an important place. Yeah. What was the significance? Who went and settled there? So the history I'm not aware of. Okay. And what is Malavas? Sir, it's a village in the Dausa district of Rajasthan. Yeah, what is the meaning of Malavas? Sir, I'm not aware. Dosa. What is the meaning of dosa? Sir, sorry, I'm not. No matter. So, chess is called what in India? Sir, in India, the equivalent that we consider is Shatranj. Shatranj. So, where does this word Shatranj come from? So Shatranj was a historic board game that we had in a country. It was originally different from how the chess is currently being played. And What was the original game called? sir, I'm aware of the word Shatranj only. Okay. You see, you can easily get it. I am a bit confused. Why you have given Danix as 7th choice? Yes, sir. You know, Danix is a Group B service. Yes, sir. So you have preferred it over so many Group A services. Why? You will be 16 years below your peers. Sir, it's mostly to do with the profile of the job that I placed it above those jobs. So, like, in what way Danix has a better profile than a Group A service? Sir, I'm not saying it has a better profile, but it more aligns with my interests that I want to have. What is your interest? Sir, I want to work both at the ground level as well as at the higher level as I progress in my career as well. Yeah, so you can work at a ground level, even in, say, defense estate service, defense account service, even corporate law service. Why not? Nobody prevents you from working at the ground level. Yes, sir. So, So the specific rankings, I did not go into that much thought process about it. okay. So, can you tell 3 schemes or things which government has done in last 1 decade, which has improved the ease of living of common man? Yes, sir. Yeah. Sir, ease of living, if I'm talking about specifically the urban areas in my first at the first instance, then we have seen development through various schemes like the Awas Yojana. There has been development of urban infrastructure, including housing. There has been better coverage of electricity. So, which scheme, this Awas Yojana, which scheme you are talking of? So PM Awas Yojana Urban. Okay. How many houses have been built under that? Sir, I'm not aware of the number. Okay, second. So second, we have various schemes which have helped the women, specifically. I just want 3 schemes. Yes, sir. So we have the Ujjwala scheme, which have provided with LPG gas cylinders. To how many women it has happened? So again, the specific numbers I'm not aware. Make a guess. So I'm not aware of it, sir. Okay. Third. So the third action which I can think of right now is probably the expansion of the development of tier 1 and tier 2 and tier 3 cities, which includes schemes like the Atal Mission for Development and various actions taken under it, sir. Atal Mission for Development. So the full form of I can't recall. Okay. Yes, sir. Mr. Meena, Yes, sir.
The OBC category, there are two classifications: creamy layer, non-creamy layer. Yes, sir. But as far as the scheduled caste and scheduled tribe are concerned, is there a classification like creamy layer and non-creamy layer? No, sir, there is, as of now, there is no classification, but the Supreme Court recently gave a judgment wherein the government can now, if they want, go ahead with subcategorization of scheduled castes. Go ahead with subcategorization also. What is your view? Sir, in my opinion, the benefits of reservation have been skewed in some aspects, and subcategorization, if based on a proper survey and proper data, wherein the benefits specifically given to every community has been identified, can be a good step forward for rationalizing the reservation. No, it is in the case of OBC, all this paraphernalia you are talking of is not there. It is a simple one line income criteria, that's all. Yes, sir. That if it is above 8 lakhs, it is creamy. If it is within 8 lakhs, it is non-creamy. Why can't we have the same yardstick for scheduled caste, scheduled tribe? What is wrong with that? So the initial reason given was that the scheduled caste and scheduled tribe. No, I am not talking of initial reason. That was given in 1947. Forget it. Yes, sir. 75 years have passed. आज बताइए ना. What is your view today? So I believe we can have a creamy layer now, because then why we are not having so far in SC, ST, and only in OBC we are having? Why? So earlier, because the Supreme Court did not allow it, that was a... No, is it, am I to understand that the wheels of government will move only if the Supreme Court moves them, or they will not move on their own? This job of classification of OBC into creamy, non-creamy, was it done at the instance of Supreme Court, or did the government do it on its own? So the government did it on its own. So when for OBC they can do it, why do they require a push from Supreme Court? So because OBC category was not initially mentioned in the constitution and was later added through the Mandal Commission, and therefore the role of judiciary in that aspect was limited only with... No, you are giving in a different act. Mention of SC, ST in this constitution, yes, sir. Does it bar the government legally? You are a law student. Yes, sir. Does it bar the government from giving the classification of creamy, non-creamy? Yes or no? So now it does not. It does not. Now it does not means? So last year Supreme Court gave a judgment that it does not. I am not talking of Supreme Court judgment. Yes, sir. I am asking you a question that it is mentioned in the constitution. Yes, sir. Presume there was no Supreme Court ruling. Then in that case, was the government competent to give that classification or not on its own in SC, ST? What is your answer? Yes, sir, the government was competent to give the But then why they did not do, according to you? Sir, if I remember correctly, they tried doing it. But the Supreme Court quashed it down. Why? They said that the SCs and STs cannot be categorized as they are homogeneous categories. But this ruling was later changed last year. What has homogeneous to do with the economic status? Homogeneous status and economic status, are they the interchangeable terms? So that view, it has... No, I am asking you why you are a law student. Yes, sir, in my opinion, Article 14 does allow for this classification even within SCs and STs, as we have also done that in OBC. So in my opinion, we can do that classification. Okay, Mr. Meena. Yes, sir. You have studied tort, right? What do you call law of torts? What is a tort? So tort deals with breach of law, which is primarily breach of duty, which is primarily fixed by law. So unlike other... What is breach of duty primarily fixed by law?
Yes, sir. I don't understand. You make me simple. I don't know this stuff. You make me understand. I am a just no. I can just follow normal way, not legal language. Okay, sir. So torts are basically uncodified rules that we have. We have borrowed these from the UK's common law system, where certain things like trespass, defamation have not been codified, and through judge-made laws, these have been classified as a separate category of offences. So when I can sue a person, Yes, sir. when I am defamed, Yes, sir. somebody defames me, when I can sue him? Yes, sir. What are the conditions required? Yes, sir. So within defamation, there are two kinds. One is the civil defamation and another is the criminal defamation. The criminal defamation aspect is covered in the criminal law, also in the Bharatiya Nyaya Sanhita. For civil defamation, we have the option of pursuing a tort claim. And it basically, the difference lies in the degree of defamation. Whereas if there is a higher damage to reputation, you can file for a criminal defamation. When we can say there is a damage to reputation, what way we can say? What are the tests? Yes, sir. So the primary test is the public eye test. Whether a speech, even if not intended to be in bad faith, will the public while hearing it perceive it to be as lowering the person's reputation or not? That is the test which is followed. Okay. And who cannot be sued under tort? Anyone cannot be sued? So they have a protection against civil actions in certain cases which is given under the constitution, and torts fall under the civil case domains. Which are those cases? Where the exceptions are there? Any idea? Yes, sir. They cannot be sued 40 days before and 40 days after the session of the parliament. Okay. Okay. Can a criminal sue another person? Convicted person? Sir, I'm not aware of it. You should be aware. You are the law student. What do you know about budget making? This finance minister and the Ministry of Finance is doing budget making. What is it? Sir, it's a process wherein, as mandated by our constitution, every year the government presents a budget in the budget session, and that budget is formed through a long process where various ministries work with alongside each Why other. should we have any deficit at all? Revenue deficit, fiscal deficit. We should go, whatever income we have, we should spend and we should be happy with that. Why getting into problems? Yes, sir. Deficits, why deficit budgets always? Sir, it's because as we are a developing country right now, and developing country needs a lot of investment, and through financing deficits by taking loans, etc., we are able to provide for those developmental needs, aiming for a long-term model. Okay, sir will ask. Hello Mohit. Yes, sir. Are you relaxed now? Yes. Sure. Yes, sir. So let's continue this discussion. India is a developing country. Yes, India facing an issue of inflation. I hope you agree with that. Yes, sir. So do you think that monetary policy is more potent or fiscal policy will be the way to go to control inflation? Yes, sir. Sir, ideally the monetary policy should be able to control inflation, but in our country the monetary policy transmission is not very good, wherein the rate changes by the RBI are not reflected as such in the market. But Mohit, we have external benchmark rate system now. Yes, sir. We have resolved that. Why fiscal policy would be better in developing country? Yes, sir. Sir, it's because fiscal policy can address challenges like taxation, wherein that forms a major source of revenue for the government, especially for a developing country. So, and also that now we have a reform tax in the form of GST, and changes to the GST system can also have impacts on inflation in the economy. You started right, but then you deviated. So, okay, we'll change the track. Let's change the track. And from track, you live in Metro View apartment. Yes, sir. So, which metro do you view? Which line? Sir, the blue line. Blue line. How many color-coded lines are there in Delhi Metro?
Sir, I do not remember exactly, but it should be around 7. No, it's 10. Okay, don't guess. Now, I was just taking metro. I daily take a metro. And when I look at the metro which is coming towards me, there are sometimes written 8, sometimes there is written 6. What does it denotes? So the number of coaches that the metro has. Okay, okay, taken. You play football and chess. Yes, sir. So one from football and one from chess. Let's say I am playing a match and I take a throw in. Yes, sir. And I throw the ball directly into the opposition's goal. Would it be counted? No, sir. It is not counted as a goal. Okay. Now you have participated in moot court competition. Yes, sir. Has chess played any role in that? So chess teaches us to strategize for unforeseen circumstances, which is also true for moot, wherein we have to create arguments for various dimensions where we are expecting the other party to ask questions. I think in that aspect, the strategy part is something which is common for both. Can you share any experience, if you remember? So, this particular mood that I have mentioned, I was dealing with the administrative law part of delegated legislations. So I went through various case laws where Supreme Court or the High Courts have given judgments which could be in my favor. So that was part of my strategy. How it correlated with chess? So even in chess, there are certain moves and openings that we follow that makes us prepared for any possible move which the other player might make. Okay, ma'am. Thank you. Sir, please. The British had come up with what was called as the Criminal Tribes Act. Yes, sir. Are you aware of that? Yes, sir. When was that enacted? So I do not. 1871. Okay, sir. Okay. Then subsequently those tribes were denotified. Yes, sir. So do you think we are better off in the present dispensation, or do you think the British government was better? So the Criminal Tribes Act was discriminatory in nature, as it forced certain tribes to register themselves at the nearest police station, and it forced them to be under constant surveillance. And so today the scheduled castes and scheduled tribes in India, yes, sir, are getting a fair dispensation under the government. So there are certain communities which are the denotified tribes, and there are many such practices which are discriminatory in nature. Yes, sir. Which were practiced then. Yes, sir. So aren't people getting a better deal now? So we're definitely better off than we were under the British government in that But aspect. it's not an ideal situation even now. Yes, sir, not in that. Why is it so? So because even if right now we have rights as per the constitution, the material reality at many places is very different. For example, even the reservation policy which was formulated to address these difficulties faced by the tribes and the scheduled castes, the benefits for the same has not been as they were projected earlier. Okay, do you support live-in relationships? Yes, sir, I am up for exercise of your personal choice. Okay, thank you. Okay, sir. You come to the end of the interview, started off very well, went into a kind of a difficult patch in between. Toward the end you managed to regain your moorings to some extent. There are quite a few observations to make, but I'd request the panelists to finish their reviews, complete them. Okay. So Mohit, you are as such a good candidate, there's no problem, but you look slightly kind of scared. That's not required. I have a batchmate, for 9 questions he said, sorry, I would like to learn more about it, and still got selected. So if something you don't know, simply says, sorry sir, I would like to learn more. That's it. Yes. It's like cricket, so next ball you can play better, that's it. And you can keep a smile on your face, it will make so much of a difference. Right? So ultimately it's energy exchange. Either you take energy from us or marks, your choice. Now you are looking much better, right? And when you reply, 60% time look at the person who has asked the question, 40% look at others. That's all. Okay, sir. Otherwise you are a good candidate. Thank you, sir. Nothing more to add. When I started discussing with you about creamy, non-creamy SC, ST, I got an impression
that you become very defensive in your replies. Very defensive. I don't understand the reason. The person becomes defensive only in one situation. When he is, either he doesn't know the truth or he is afraid of sharing it. I don't know which one of the two in your case is correct. But as far as I can make out, a student who has studied law and who is an IAS aspirant, has reached up to interview level, should have a clear head thinking. See, even when I am telling you to give your view, you every time you bring in Supreme Court, Supreme Court, Supreme Court. So then I had to ultimately ask you that, you see, when OBC classification was done, was it the government's not? So come out straight, the answer. See, you are not here as the spokesperson of the government of India, are you? We are trying to test your mind here as to how you look at things and reason out. Okay. If you want to ask something. Basically, as I said, you went through a rough patch in between. थोड़ा डर गए थे आप. You became afraid. Is it true? So, at one point, yes. Yeah. And another thing is, it's better to come out with what you feel about it. I had to coax you into an answer finally also. Do you think the scheduled castes and tribes are better off now compared to the British? Obviously they're better off. उसमें तो कोई शक ही नहीं है. There you could have said yes, but there are still issues. I mean, I don't say there are no issues, but you have to give credit where it is due. I mean, you can't say I'm always having a tough time. Yes. Isn't it? So at least that much should have been done. I don't know whether it's out of fear or whether you felt that way, I don't know, but I hope it was because of fear and not because of the fact that you feel that way. We definitely have a better dispensation now compared to what it was under the British. Yes. And I refer to the Criminal Tribes Act specifically only for that reason. Apart from that, knowledge of law is good, but you have to brush up. And fathers in telecom service, a lot could be asked about 5G, 6G and 4G, what happened, 2G spectrum. All those issues can come. About Rajasthan again, I think there could be questions. There could be questions about Delhi as well, because you are staying in Delhi. And overall, if there is anything else that you would like to, general knowledge, budget, we have not asked you questions. Finance matters, so those things you'll have to brush up your knowledge. But when you take a stand, logically argue your stand. Don't keep going back and forth. That's very important. So sometimes you are willing to withdraw. You've taken a stand, then you should argue your stand. Why you took that stand? Later on you can always say, well, if there is a need to alter your stand, you can alter it. But then it has to be done at a price. Obviously you're altering a stand. That means you didn't think about it when you took the stand. But at least it's better to alter your stand rather than to totally give up. Anything else you want to ask? So with respect to such questions where there are differing opinions, is it like I was referring to Supreme Court because I didn't want to give my own personal opinion. So is it better to just refer to some committees or... No, you can refer to Supreme Court. On which matter are you talking about? So any question, for example, questions related to one nation, one election could be asked, or... Supreme Court hasn't decided. Yes, so let's say the reservation question again. So there are Supreme Court has refused to take up any case relating to relaxing 50%. There's so many instances, but you didn't bring it up. So many states have gone before Supreme Court saying relax 50%, relax 50%. Supreme Court has never said, they've never taken up the case. I mean, you don't like it, it's a different matter. Personally, you may not like it, I may not like it. That's a different matter. But that's a personal view. But the Supreme Court, since you're talking about it, the Supreme Court did not accept, they did not admit the case. Yes. Isn't it? So what does it show? Mr. Fali Nariman gave a beautiful argument. I don't know whether you agree with it. He said, the principle of equality is enshrined in our constitution. And reservation is an exception to the principle. An exception cannot overrule the basic principle. Yes. So 50% is the maximum. It cannot go beyond 50%. I don't know whether you agree with it, but this is the argument which Fali Nariman has given in his book.
So whether the Supreme Court will repeat the same argument, we don't know. So this is for you to think over and give a proper answer. Supreme Court about same-sex marriage, about Sabarimala, there are so many times, so many cases where they have reviewed. But in Indrasani they have not reviewed the judgment. It's exceptional circumstances. According to the Supreme Court, no such exceptional circumstances has been argued before the court. Except Tamil Nadu government is getting away with 69%. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. कोलिशन गवर्नमेंट चल रहा था हाँ हाँ इसलिए।
Hi. Good morning, sir. Good morning, sirs. Yeah, good morning. Please sit down. Thank you, sir. Miss Harshita, Yes, sir. you stay in Delhi. Yes, and, sir. You're working as a migration assistant. So I worked as a migration So assistant. what is that? What kind of a role is that? So I was in migration department of Swedish embassy, Mhm. where I worked as migration assistant. My role was registering visa application and do some scrutiny of applications before the supervisors. Does Sweden accept migrants on a long-term basis, or is it more for tourism? Sir, it accepts migrants for a long-term basis, and it is for tourism also. Recently, there was a vote in a parliament in Europe, where again they said we will not like to have a strong anti-migration policy. It happened yesterday. Can you tell me in which country that was? So I'm not aware of that. Sorry, sir. But on the contrary, the USA is adopting a very strong anti-migration policy. Do you think it is justified? So I do not think that it is justified, because in a globalized world, interconnectedness is very important, and as a developed country, US has some responsibility to cater to the demand of other countries. No, but the US says we will give you visas, we will allow you to come into the country, and in case you are found to be useful for our country, you can stay on. But illegal people should go out. Isn't that a logical argument? So it is logical, and US for their benefit is segregating the migrants on the basis of skill and unskilled labor, and which is justified, but doing that only for their country is a little bit exaggeration on their So they are part. not setting a good example for the world. Yes, sir. You are also a student of political science. Yes, sir. Now, Plato and Aristotle had slightly differing views when it came to political science. Let's say you look at Plato, Confucius, and the civil service in India. What kind of a lesson can a civil servant in India take from Plato and Confucius? So I'm not very aware of the teachings of Confucius, but I can't hear you, madam, at all. Sorry, sir. Can't hear you at all. Sorry, sir. So I'm not very aware of the teachings of Confucius, but for Plato, Plato emphasized on duty, which the civil servants can take the teaching from Plato's, and they can imbibe in their duties. And more women are coming into the workplace now. Yes, This is a new phenomenon in India, and it is causing a disturbance in the sense that women's safety has become a big issue. How do you think we should approach this problem? How do you think we can streamline and make sure that women are encouraged to come out and work in the workplace, and how we can assure them about safety? So can I take few moments to... So firstly, there should be preventive measures, like the offices can be made from glasses so that the sexual harassment at workplaces can be prevented. Secondly, some structural changes, policy and gender counseling for the male members. And thirdly, women should be encouraged that they should come out if they feel harassment from the part of any member of their organization. That should be done, and the POSH Act should be properly implemented. And what about the dress that people are expected to wear when they come to a public place? Should women be more careful about the dress they wear? So if we talk about the organization, there are some dress codes, and it should be formal. But as far as in public places are concerned, recently our PM also said that skirt has also been in culture of India when he was visiting our temple. So I do not think that women should be overly emphasized about their looks and their outfits, but there should be some formal code when they are going to organization, but in public sessions it is not. Okay.
So Harshita, Yes, sir. what was your score last interview? Sir, it was 140. It was 140. So how do we make plastic biodegradable? 140. So, making plastic biodegradable. So, using some polymers which are biodegradable in nature. They are Which polymer? like starch, cellulose, polysaccharides. They are also called polysaccharides. So, if that is technically possible, then why all plastic which is being sold, why we don't convert it into biodegradable plastic? Especially for pouches and all which. So firstly, the research is not very advanced right now with regard to biodegradable plastics, and secondly, the cost benefit is right now not very good. So that is why we are not doing that. But there are some researches going on in India, like in Satara, there is a organization called TGP. They are getting fund from government to make cellulose-based biodegradable plastics. Okay. What was there in patent law which allowed India to become the pharmacy of the world? So, sorry sir, I am not very aware of that. Not aware? No sir. What kind of patents are there? Are you aware? No sir. Okay. Read about it since you are a chemical this thing. But are we making whatever is required to make generic medicines? So API is advanced production link. I am not very aware of the full form. I can't remember it. But we are only producing APIs 8% of it, and rest of it we are importing from other countries like China. So why we missed on that? What is keeping us behind? So we can say that production is not very advanced and companies are not keen on taking it, but government has rolled out production link incentive scheme recently for APIs so that we can reduce the import burden of APIs from China. Okay. Now, what is the TFR of India? TFR of India. So it is 2 as far as I remember. So if I am an 8th class student and I don't understand these things much, can you in simple terms explain to me what TFR of 2 means? So on average, women in their reproductive age are producing 2 children nationwide. This is TFR, total fertility rate. How it's linked with the replacement rate? And that is what I would like to understand in terms of population. So when 1951 to 1981, there was the reproduction rate was very high because people were producing more offsprings. Now, due to education, no, see, it's very simple. 2 people being replaced by 2 people. Okay, sir. That's what TFR2 means. Thank you, anyway, mortality is measured in 3 ways. Can you tell me how it's measured? So it is at infant mortality rate, maternal mortality rate, and death rate. Overall death rate. No, there is under 5 mortality rate also. Okay. Thank you, sir. So what is the present IMR of India? So I'm not able to recall. Sorry, sir. Well, let me tell you, it came down from 35 to 28 in just about 5 years. And due to one very important movement which was started. Which was it? So, sorry, sir, I'm not able to recall. Think about it. Did India do something about hygiene? So WASH initiative. Think Swachh more. Bharat Mission. Yeah, Swachh. Thank you, sir. So what was done in Swachh Bharat Mission? So the main goal was to make India more clean and open defecation free. One part is ODF. Yes, open defecation. Yeah. So what was done for that? So there was awareness program and toilets were built How under many? Sulabh. Sorry, sir, I'm not remembering. Okay, that is one part. Yes, sir. Second part?
Sorry, sir, I'm not able to recall. No, water. हर घर जल. Yes. नल से जल. Thank you, sir. Because what the source of infection is water. Yes, sir. तो हर घर नल से जल. Yes, sir. So if the water is there, then Thank you, sir. yes, sir. You have mentioned in your hobby cardio kickboxing. Yes, sir. What is that? Sir, it is a mixed form of exercise where kickboxing is used as fitness regime to to increase the strength and make oneself more fit. No, but I thought this is related to the person to person, it will differ. Everybody's health of heart is not the same. So how do you decide? Sorry, sir, I can't. Everybody's heart of health is not similar. Yes, sir. So how do you decide about this kickboxing? So one can ask from the doctor. I requested you to speak louder, you see. If I can't hear you, I can't give you marks also. Okay, sir. So I'm saying that one can ask from the doctor about whether it is advisable for them to opt for cardio kickboxing, and apart from it, so But younger this is people. done basically to strengthen the heart? Yes, sir. Yes, sir. To strengthen the heart? Yes, sir. Is there a medical evidence available to prove that? Sir, in 1990s it was started. In Huh? 1990s it was started. So it is going on for about 34 years. There is no such thing like. No, I am not asking that. I am saying, is there a medical evidence to prove that this exercise strengthens the heart, and to what extent? Is there a medical evidence? So I don't know about Who it. started this? Sir, in 1992 one. Where? Sir, in America. In America. Yes, sir. So is it popular in India? No, sir. Eh? No, sir. So because it is not popular, so you chose it as your hobby, right? No, sir. It was not about it. I was No, exercising. there must be a reason for choosing the hobby, no? Yes, sir. I was exercising through YouTube videos. I stumbled upon these videos of cardio So what is your kickboxing. experience? Your heart has been strengthened? Sir, my fitness, I'm becoming more fit and my core strength has increased. Okay. And what is the German on Duolingo? Yeah, yes, sir. 1.5 years back, I got to know about, when I was in Swedish Embassy, I got to know about Duolingo app, so I started learning What is German. this Duolingo? Sir, it teaches, basically it is an app which teaches you about different languages. So, Yes, sir. what did you learn? Sir, I am learning German, but it is of basic level and it is more of translation based right now. You did BSc and you had a combination of chemistry and political science. Yes, sir. That is permitted. Yes, sir. Okay. Why did you choose this combination? You could have taken physics, maths, and normally in BSc you don't take 3 subjects, you only take 2. So there are many subjects. No. This was my generic For elective. This was my generic elective. So in in BSc honors, how many subjects you studied? So for chemistry, I studied 3-4 subjects every semester, and apart from that, I as took. a subject, did you study physics? No, sir. Did you study mathematics? Yes, sir. For 2 semesters. Can you mention the name of some Nobel Prize award winners in chemistry? Sir, Jennifer Carpentier, and it was. So it was Carpentier. I don't remember her first name. And apart from that, recently it was given to David. I can't remember the surname. Sorry, sir. Any famous name from the realm of chemistry in India? C.V. Raman, sir. C.V. Raman. He was in chemistry. So, sorry, sir, but he was given award for spectroscopy, I think. Is it chemistry or physics? So,
Sorry. Is it Thank you, physics sir. or chemistry? So physics, but How do we make chemistry, physics, maths a distinction? What is the point? What way we look at something is chemistry, something is physics, something is something else? Let us say chemistry and physics. What is the distinction? So in chemistry, we study about the chemicals and molecules. Chemicals or elements? Elements, molecules, and in physics, it is about Molecules. Molecules we study. Okay, molecules we study. Molecular chemistry is also there, right? Yes, sir. What is molecular chemistry? I'm not. You don't know. You are a chemistry student, yeah? Organic chemistry and physical chemistry, how do they interact? What is the difference? So I have to read about. What is organic chemistry? It is very important. Yes, sir. But because it has been so much of time, so I'm What not is able this to chemical comprehend chain? it. Chemical chain, benzene. If I ask benzene's equation, benzene's structure, Yes, sir. there is so many chemical chain. Some chains are there. So what are those chains? Benzene. So they are chemical bonds. what are C6H6. What it is formula. covalency? So it is sharing of electrons. Anyway, you brush up fundamentals, okay? Okay, sir. Now let us get into elections, Delhi. What are the important issues, Delhi election? You are political science. Yes, sir. So the biggest issue which is coming up in Delhi is freebies. And recently from newspaper I got to know that 87% of Delhi's budget is spent on freebies, and the capital expenditure is only about 19%. How do we say it is freebie or welfare? Development related welfare activity. Sir, in my opinion, there are three things which is very important for welfare. It is education and health and women's employ them and for empowering them, and food. Okay. Food, midday meal Yes, we sir. are giving. Is it welfare or freebie? What do you think? So it is welfare. It is essential. Yes, sir. Suppose we give a sanitary napkin to poorest of the poor free from the hospital, primary health center. Is it welfare or freebie? So it is welfare. Okay. Then let us get into chemistry. Yes, sir. Now your former chief minister says Delhi water is poisoned by Haryana. Ammonia is added into water. How it happened? So from the stretches of Hatnikund to Palla region of Yamuna, there are chemical factories and there are agriculture lands from where the runoff comes and it gets mixed into the Yamuna water, which increases the Yamuna's ammonium concentration to 700%. We have two pollution control boards, Central Pollution Control Board, State Pollution Control Board. Yes, sir. Are they not functioning? Yes, they are functioning, sir. But sometimes sometimes the implementation of law becomes difficult, and the agriculture runoffs come to Yamuna and it pollutes the Delhi stretch also. And in Delhi also, there are some dyeing and distillery factories which are near Yamuna. So because of it also, Yamuna gets polluted. Now only one question, okay? Yes, sir. Whether water is polluted, which may give harmful impact. हर घर जल में क्या बोला? हर घर नल में जल है. वो जल पिएंगे तो आदमी हॉस्पिटल में जाएंगे या ना? ये पोर्टेबल वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है? केमिस्ट्री. What is the portable quality standard for Delhiites should get water which should not give them to hospital, which should not lead them to hospital after drinking? That water quality standard, what is it? So, how do we ensure water is drinkable? That is the point. So, if we relate it to Yamuna, as the ammonia levels are very high, so the the sewage treatment plants which are in Delhi, it only treats up to 1 ppm of ammonia.
So it should be below that, so it can be treated. Only ammonia is not the only pollutant. So there it are is, so many. yeah, Okay. yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So, Harshita, Yes, sir. you are into fitness. Yes, sir. Do you know what is this ultra processed food? Yes, sir. It goes through many levels of processing. So it goes through many levels of processing. So it is. We are talking about imposing a health tax on these type of foods. It was in the economic survey. I hope you have read. So, what would you suggest? Should we impose this health tax on consumer or the producer of these ultra processed food? So can I take few moments to think about it? So I think that the burden should be distributed, because as consumers, it is also our choice to make a better, it is also our duty to make better choices, and as a producer it is also important to produce a better quality of food which is not very harmful for the health of the people. So I think the burden should be distributed among the two. Okay. What is this freedom dance? So free form dance. Oh, my bad. Free form dance. So how it is different from any other type of dance? So it is only the movements, and I do not do whatever you want. Yes, sir. Hey, that's the spirit, I would say. Yes, sir. Again, I want to come back to this cardio kickboxing. So you are doing kickboxing, okay? How do you know you are training your heart? Is there any parameter? So it increases my heart rate when I move in different directions, How do you and know? when I use my strength to throw arm and my legs in certain direction, it feels like I'm sweating and my heart rate is increasing. So it. Do you wear some gadget to know that your heart rate is elevated? Yes, sir. I have a watch. You have a watch. Yes, sir. Now, question comes from here. How does this watch knows that your BPM is higher or what the BPM is? So it reads from my veins because it is connected to heart, and that is why. How? What technology it uses? Sorry, sir. Have you seen there's a laser light behind it? Yes, sir. Read about that. Thank okay? you, sir. You are reading, learning German on Duolingo. Yes, sir. There's a word known as Mittelstand. Sorry, sir. Mittelstand. Okay. Hey, that's all, Harshita. Thank you, sir. Sir, please. What is the size of the union budget last year? And today's budget, I don't know what is the size, but last year's budget, how much was the total expenditure of the union government? Sorry, sir. I'm not able to recall. Not able to recall, or you didn't know at all? Sir, I'm not able to recall. Okay. What are the important revenue receipts of the central government? Revenue receipts. There are taxes, indirect and direct taxes, and services and fines. Sorry, sir. What are the important taxes? So GST is there, income tax, corporate tax. These are the important taxes. And how much do they yield to the government, yield for the government? Sir, I'm not recalling the data as of now. Okay, thank you. Thank you, sir. We come to the end of the interview. Yeah, we started off very well, but I think in between you lost your nerve, and towards the end you became quite muted. Stop thinking. So I think you have to overcome this problem. The last time, if it's 140, it's obviously because your voice was probably not audible, Yes, sir. or you had some difficult situation which you could not handle. So I was not confident. You are not confident. Even now. I was not confident in that interview. You are not confident. Yes, sir. Even now you started off confidently, but later on you became underconfident. Yes, sir. See, the most important thing is you should not assess your performance during the interview. When the questions are put to you, every question is separate. So whatever answer you have given, suppose you have not answered a particular question, don't lose your nerve. Think about the next question which is put to you and answer that properly. And don't assess your performance, I did badly 5 minutes back, and therefore that should not happen. You try to do your best during the entire length of the interview, 30 minutes, 35 minutes, whatever it is. I think that's one fundamental problem. The second problem which I can see is that you don't have a good knowledge base, or you're avoiding the question. You can't be ignorant about basic points. I'm sure you must have read about corporation tax, how much it yields, and income tax,
And these are basic particulars which you must have learned. To say that you never did know them, I can accept it. Sir, But you are not able to recall, that means you are not brushing up your data. So whatever data you went through for the mains exam, you have to brush up. It's very important. After all, a political science graduate, so economics is not far away. And in any case, the budget is today's budget, and so you're having an interview on the 14th. You may be questioned on the budget, Niti Aayog, and balance of trade, balance of payment, exports, imports, how tariffs are going to be imposed by US, migration. So it's all, anything can come up. Okay, so please be careful. You have a tendency to laugh during the course of the interview. That should be totally avoided. You are not expected to laugh with the board. We can laugh, but then you are not expected to laugh with us. Because you're either laughing at yourself or laughing at us. It's one of the two, isn't it? So yes, sir. it's not correct. Avoid it. And lastly, I hope and you're clear about your chemistry, because that's where you will be questioned by Yamuna, and what can be done and things like that. How can you come up with solutions for problems which are faced today? Let's say about Delhi. Delhi, suppose you have a problem of pollution in the Yamuna. How can you tackle that? This question, pollution in Delhi, air pollution in Delhi, how can you tackle it? These questions may also come up. You are an excellent candidate, don't worry about it. And when you smile, it's good. So you build your confidence and you will make it, don't worry. Thanks. Okay, Ashita, you are impressive personality. But carry certain knowledge is important. You see, some of the things in your I didn't ask question because time nahi tha. One is international relations, you should know the problems, migration, immigration, illegal immigrants, all those issues. Yeah. How internal security, external security issues, what India should do with its border, migration, immigration policies. Be clear about it. Then another thing is Khalsa ISO. Is Khalsa my way? Is it a rational practice? It was required once. In suppose if I take a kirpan and going, will it be signed in modern era? Is it justified? Is it required? Rationally, if suppose somebody asks, because Khalsa is there in 5K, is it okay in the present context? So we can carry religious symbol. So as a religious symbol we do. As a secular country we practice. But rationally thinking, is it okay? Everyone is doing something or other. Is it okay? I don't know. That time it was required. Abhi to hai kya? Anyway, it is a religious thing. I don't want to ask you. I am just. Is it there? Khalsa is there. Khalsa hai na? yes, sir. इसलिए पूछा. कल्चर के बारे में पूछेगा तो डिप्लोमेटिकली आंसर. ओके. So it is essential as far as religious practice is concerned, and if we go by the Anand Margi case, essentiality is important. So it is important for them to keep long kesh and keep the kangan and the okay. If, do it in a very diplomatic way. Okay. I can see it. Where is it? Which page? Sir, it is there in she is ये स्कूल है Sri Guru Tegh Bahadur School. Khalsa College. College. Khalsa. वो कॉलेज है. कॉलेज का नाम. College का नाम. Ashita, my impression is that you came up as a sort of a withdrawn candidate. Okay, sir. You know, somebody builds a cocoon around as a defense mechanism. Okay. So sometimes one gets self-withdrawn to avoid any sort of untoward. Point is, you have come to us for a conversation. So conversation and withdrawn don't go together. They are opposite. And you have to play a proactive role
in the conversation process, because you are the one who is supposed to help us appreciate your personality, your mindset, your reasoning ability, your analytical powers, your grasp, how careful you are as a listener, how much attention you pay to what we ask you, and how do you think over it and reply. So, and then low voice also to me is an indicator that possibly you are not very sure of what you are saying, that if it goes wrong, what will happen. If you are not sure, say, sir, I am sorry, sir, I don't know about it, I'll read. It's not an offense. We'll go to next question. I don't know answer to all the questions if I were there. So there's nothing. But whatever you say, you got to argue, you got to defend, because that will show your ability to logically think, reason and take a stand. So therefore, you see, please exhibit those things, and that comes through practice and through knowledge. The deeper the knowledge and more the practice, better you are. If you have something to ask. So after the chemistry question, I got a little nervous. After the chemistry question, I got a little nervous. So it. You're assessing your performance. Yeah. So after that, I was thinking that I'm not brushing up chemistry properly. So it was going in my mind continuously. So it reflected in other questions. Yes, also. yes. That's what I was hinting. Yes, sir. Our idea is to show your weakness where you need to brush up so that you get in. Yes, sir. You get selected. That's our effort. Yes, sir. Thank you so much, sir. Do you feel that 140 is justified last time? Yes, sir. It was justified. So you know your weaknesses. Yes, sir. Okay. So now I'm sure some of these weaknesses must have been there even then. So then it was a confidence issue all the way. Right now I'm more confident, but after the chemistry question I got a little nervous, but I got to know that I'm doing it, so I will definitely work upon it. You started off very well, that's what I said. So that means you are a very good candidate. So why should you get nervous? Yes, sir. One question you don't answer, it doesn't matter. So you stand where, at 140 or your train has gone ahead? Sir, my train has gone ahead. Huh? Much ahead. So much ahead. Much ahead means 170, 180? We can go up to उससे भी नहीं, ऊपर. don't say go up to. अभी कहाँ तक पहुँच गई आज कहाँ पहुँची? Sir, अभी थोड़ा कम है, not 140, above 140, but I'll definitely work upon it. कि बहुत. 200 plus. You get the benefit of any You should quota? get. Sorry, sir. Do you get any quota benefits? Yes, sir. EWS or backward class? Backward class. Okay, so you stand a better chance in that case. I've given you 180 because you started off well, but actually I've also mentioned that these are weaknesses. So you have to work. I mean, just to encourage you, but actually you would have got only 165 today. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you. All the best. Thank you, sir. थोड़ी Should बोल्ड I होके take it? बोलना है. Yes, sir. कलेक्टर को ऐसा ऐसा नहीं होता वो ले है. लीजिए. कलेक्टर has to be bold. Thank you so much, sir. This you will get. Thank you, sir. Thank you, sir. So women are thinking Role- that
Father and mother, father is not alive, huh? We'll knock, then you will come. Close. We'll knock. दोनों एक ही नाम दिया है. सर मैं कम से Come in. इस हिंदी में इंग्लिश में? अच्छा, आइए. सर गुड आफ्टरनून सर. Good afternoon. Come. थैंक यू सर. Please sit down. You studied in IIT Madras? Where did you study? Vishwakarma. Vishwakarma. Yes, Mechanical engineering. But you participated in the annual events of IIT Madras and IIT Bombay. Yes sir. What is the festival of IIT Madras called? Shastra. Annual festival? Shastra. IIT Madras Shastra and IIT Bombay Tech Fest. Otherwise you are from Maharashtra. Yes sir. Solapur district. Tell me a few illustrious names of Maharashtra who are respected in history. So first of all, Chhatrapati Shivaji Maharaj. Then Mahatma Jyotiba Phule. Then Lokmanya Tilak. Dr. Babasaheb Ambedkar. These are the personalities able to give. Okay. Now suppose one of them was not there. Let's assume that Lokmanya Tilak was not there. How would the Indian freedom movement have been different? What was his main contribution? Lokmanya Tilak actually started two events, basically Shiva Jayanti and Ganesh festival, which focuses on exchange of ideas between different groups of societies. So it has improved the social coherence among the communities, and it also promoted the unity among the various groups of the societies. So it was the he also brought in a certain amount of militancy into the Indian freedom movement. Till then the Indian freedom movement was very sober and quiet. Yes sir. Earlier up to 1905 the Indian movement was basically based on the ideas of moderates. So he was the one. He's written a book called Gita Rahasya. Gita Rahasya. Are you aware? I know the book name only, but I am not aware of the. What is it about? Which Gita is he talking about? Sorry sir. Gita Rahasya means it's some Rahasya about some Gita, no? Yes. So what Gita? Which Gita is he talking about? Sorry sir, I am not aware. Okay. You studied mechanical engineering. Yes sir. In the railways, they have done away with all these diesel locomotives. Yes sir. And moving towards electric locomotives, entirely electric locomotives. Yes sir. Is mechanical engineering losing its sheen? Everywhere you find that nowhere mechanical engineers are in demand anymore. It's all electrical, electronics, computer science. Yes. So, you think there is a relevance for mechanical engineers in today's context? Yes sir, there is a relevance actually. Why? While in the manufacturing of locomotives, in the car sheds or factories, mechanical engineer basically. No, the locomotives are out. It's all under the control of the electrical engineers. The mechanical engineers in the railways are only manufacturing coaches. Coaches. You know the difference between locomotives and coaches. There only mechanical engineer has major role to play. Actually. Not in the railways. I am talking about the general context. In the general context, in the engineering scenario in the country. In the general context. Does mechanical engineering have any relevance? Yes sir, mechanical engineering have relevance. In terms of now India is focusing on it, such as electric vehicles. So in the designing itself, mechanical engineer plays an important role. Along with that's what I was expecting from you. The automobile industry, everything is dependent on mechanical engineers. Now, how do you think they are irrelevant? They cannot be irrelevant.
No, sir, there is a lot of relevance. How is an engineer relevant in civil services? Sir, engineering teaches us the analytical skills basically. Then it also teaches us to firstly analytical skills. Secondly, it also teaches to go into the details of any aspects. Then thirdly, engineering teaches us to even way to how to live a life, happy life. So engineering is also the way of thinking. Engineering teaches you how to lead a happy life. No, I wish everybody knew that. No, sir, not teachers, but even during the college time we used to. I think engineers are the most unhappy people. Yes, sir. But don't you think so? But sir, engineering. They're studying hard, and at the end of it, they get a lower salary than the generalists. Yes, sir. But engineering provides you different platforms and different opportunities during the college time, where a candidate can improve himself on different areas of interest. So in that way, in that sense, I am comprehending that the engineers also teach us how to live a happy life. Okay, thank you. Okay, so your name is Thank you, sir. Danaji. Yes, sir. Okay. So what is the meaning of Bhoinje? Bohinja is my village name actually, sir. What is the meaning of it? It should be having some meaning, isn't it? Might have, but I'm not able to find it. And Barshi? Barshi is a Tehsil, sir. Tehsil. What is the meaning of Barshi? Anyway, think about it. Yes, sir. Why is Solapur called Solapur? Sir, previously it was Sholapur during the British times, basically. So what is Shola? Sorry, sir. I will get into it. You know which is the largest uniformed civil force in the world? Uniform? Civil force. Sorry, sir. NCC. NCC. National Cadet Corps. Yeah. Okay. Thank you, sir. So you are from a village. How many villages are there in India? I think there are, I believe that more than 40,000 villages are there in India. 40,000? More That's than. all. नहीं भाई 40,000 से बात नहीं बनेगी. There are about 6.7 lakh villages in India. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah. Yeah, because we are a very big country, not Yes, a sir. small country. Yes, sir. Isn't it? Anyway, can you tell me 3 reforms which India thought of doing? They were started also, but not really. We have not been able to complete or deliver 3. There are many of them, but 3 of them can you tell? Firstly, sir, I am thinking of agricultural laws. Agricultural laws. Okay. So India actually government has approved You can say agriculture reforms. Okay. agricultural reforms. It's a work in progress. Yes, sir. I agree. Then Yeah. Second. government is also intent to to implement do reforms in the election. That is one nation, one election. Okay. Thirdly, government is actually also focusing on uniform civil code, which is Uniform civil code is not a reform which was started as yet. One state has started. yes, sir. Government is thinking of doing it. I would rather look at the banks. Why were the banks privatized? And when were they privatized? Which year they were privatized? Any idea? I am aware of nationalization, but I am not able to recall. Oh, sorry, nationalized. I am sorry. 1969, sir. 69. Nice. Why were they nationalized?
Actually, government at that time thought of providing social security and banking access to the common people across the country. So now what has happened? Yes, sir. You know how many accounts common people have in banks in India? I am not sure about this figure. About 56 crore. 56. Thank you, sir. Right? So we should prioritize the banks now back. The purpose for which they were initially nationalized, that purpose is over. What do you say? So there are benefits of privatization of banks also. So actually it brings some meritocracy within the banks. It can improve the efficiency also. So and it can also improve the reach actually in terms of branches and all that. Reach has already been done anyway. And disinvestment. So even banks could be they could be put on that block and disinvested. Yes. Thank you. Thank you. One company which has been disinvested recently, which one? IDBI. Huh? A bank. One company has been disinvested recently. What? Company. Yeah. Very big airline. Air India. Air India. Thank you, sir. Yes. Yes, sir. What have you been doing since 2020? Sir, after 2020, actually I am preparing for the civil services examination. For the last 5 years? Yes, sir. Alright. Before that, Do you have a fallback option if you don't make through in the civil service? Do you have a fallback option or you have none? so actually I have worked for 6 years in the private company. Yes. So I have one backup, that backup also. So on the basis of experience, but I am sure You about. didn't like that job? No, sir, not liked. But I was actually attempting the exam during the job time also. But I am not able to dedicate sufficient time for the exam. So for You have given second preference to the IAS. Yes, sir. And first preference to the IPS. Yes, sir. Why? When I thought of attempting giving civil services examination, firstly at that time, sir, I have been inspired by a few IPS officers such as Mahesh Bhagwat, sir, then Sadanand Date, sir, and then Ashok Kamte, sir. So actually looking at them, I thought that I also can contribute to the society in this through these services. Second reason is that, sir, my wife is also in police service in the Maharashtra Police. Police. She is currently assistant police inspector in the Maharashtra Police. So she has also been my inspiration for choosing the IPS as a first preference, sir. I hope you are aware that the police do not enjoy a good public image. People generally do not like the police. Why? I think, sir, there is a mix of perception also, there is a mix and facts also. So before COVID, actually, one report I have come across, before COVID there was only 27% of people who were thinking of police are doing good to the society. But after COVID, when the police have performed well during the COVID time, so almost more than 55% people are now thinking of police are doing good to the society. So I think there is a mix of perception also and fact. The basic structure of the Indian police, yes, which was there before independence, 1947, okay, and now post 1947 in the independent India, yes. Do you think the police structure has undergone any fundamental change, or it is a continuance of the colonial era? Yes, sir. It has changed actually. Earlier police have been under the colonial rule, have a brutal. They are actually
actually working for the interest of the British. No, I talked about the structure and the organization. So the structure and the organization which was there in the British rule. Okay. So does it continue the same system or it has been changed? So I'm not fully aware of the structure during the British time, but I think there might be some changes after the independence in terms of. Now, what is the structure you know of police? What is the structure you know? So whether I have to answer for hierarchy or hierarchy or The hierarchy. structure means what is the system, how it operates, what are the laws which govern the functioning of the police. Yes, sir. Previously, till 2024, the police have been working for the implementation of the laws like Indian Penal Code, Criminal Procedure Code, and Indian Evidence Act. But from July 24, government has enacted new laws, that Bharatiya Nyaya Sanhita. Those new laws, yes, are they totally different from what the IPC, CRPC and the Evidence Act were, or there is some minor changes? So there are some minor changes in the. So the basic law remains the same of the British days. But the government want to actually change the way police should work. Earlier it was the Indian Penal Code actually, so it was focused on. So why the penals. government wants the police to change? If you say that 55% of the people post-COVID are happy with the police, yes, then why the government should bother to change the police? Because government should be happy कि भाई पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, public बहुत like कर रही है. Then why the need for change? So they have to improve the actually further 55. No, why the need for change? All right. Thank you, sir. What shall I call you? Dhanaji, sir. Dhanaji. Okay. There is a concept called philosopher king. Yes, And sir. Plato wants only philosopher king should rule the state. Yes, sir. What do you say? What is your view? Philosopher king should rule or not to rule? Sir, according to me, the king should have knowledge, but there should not be a dictatorship actually. What is philosopher king? Do you know? If you don't know, you can't answer it. Do you know philosopher king? Are you bluffing or you know? I'm asking you simply. I know the concept of philosopher. What king. is concept of philosopher king? It You should don't have. know, no problem. It should have. Actually, theoretically I know, sir, but practically. Theoretically, bolo. Theoretically, It is theory. Plato is arguing for the king should have ultimate knowledge to rule the his people. He knows what way it should be ruled, because law will be. He knows law. Yes. He doesn't have to see book like you, CRPC. He is mightier than law. Bharatiya Nyaya Samhita. He doesn't have to see. Yes. Why? Why? Plato is not a. He is a thinker. Yes. He is considered to be very high philosopher king. He himself is a philosopher king. Yes. What is this concept? You should understand. Many in history, many people try to imitate philosopher king. Even now, there are rulers who are psychologically in that framework. I won't say a name, but you can understand. In history, there are people who imitated Plato's concept. What is philosopher king? Philosopher king, I will give you hint. Yes. He needs certain kind of education. He is certain kind of grooming. You know anything about that? Plato, He will become philosopher. He rules well because he knows it. Because he has certain kind of education, certain kind of grooming, certain kind of training. yes, sir. That you don't know? Anyway, we will not talk about that.
Budget you must be knowing. Yes, sir. Did you read anything about budget, today's budget? Yeah, 2-3 points I have actually. What are the points you read? Firstly, they have introduced a new tax system, income tax system. What is that system? Now they are providing. Who they? Government. Who is they? Sir, government. Sorry, government is providing. The government of India. Government of India is. They nahi hai. Yes. Only one. Yes, sir. Sorry. It's not your government, the government of India, our government. Yes. Sir. Government of India. Okay. Government of India has revised the tax structure. What tax structure? Income tax structure. Okay. So they have defined new slabs. Government of India has defined a new slab. Firstly, up to 4 lakhs, there is a zero tax. 4 to 8 lakhs, government is now will have 5% tax, and 4 to 8 to 12 lakhs, 10%. Then they say someplace, they means government of India. Government of India. Finance minister says, or somebody it is reported, 12.75, up to 12.75 lakh income. Up to 12 lakhs. No tax. Up to 12 lakhs, sir. Up to 12 lakh, 12.75 also I read. Yes, sir. 12 lakh, let us say 12 Yes. lakh, no income tax. Yes. How it can be possible? Sir, 0 to 4 lakh, 0%. That's okay. Now they say 12 lakh, no Exemption, income is. sir, government is providing exemption of 75,000. So on the basis of that, they are government is claiming that up to 12 lakh, there will be no requirement of paying. Okay, you read. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Dhanaji. Yes, sir. You worked with the steel company. Yes, sir. So, yeah. So, what is the steel production of India as of now? Sorry, sir, I have to check. Okay, so let's move away from statistics. Gadchiroli. is a place. Gadchiroli, What yes. was it is in news? Recently, government, Maharashtra government also declared that this Gadchiroli has been free from Naxalite. Anything related associated with steel? Yes, sir. JSW has made a agreement with the government of Maharashtra to establish a steel plant in the Gadchiroli district. Which state produces most steel in India, which is ranked 1? Which state? I am not aware of the state. Okay, so let's come to technology. What is a TMT steel? It is a thermomechanically treated steel. Acronym को expand कर दिया. What is a TMT steel? TMT steel. So actually it is referred to the production of rebars. So these bars are produced under the treatment of thermal. Sir, can I explain the total process of how the bars are produced? Okay. Leave it. Okay. Let's come to a different topic. You go for solo walking. Yes, sir. See, I admire Gandhiji a lot, and he as a politician used walking in our freedom movement. Why was he is so much concerned with walking? I believe that he was of the opinion that he can actually access different peoples during the walk. He can exchange his ideas with those peoples and accompany those two in the freedom movement or wherever. Suppose, for example, Gandhiji went to the Dandi March. So during that time, he was able to collect so many peoples in that moment. So I think this was the basic idea behind Gandhiji's walk. Okay, take it. Now, the 47th president of USA, Donald Trump, he has been a bit harsh with the tariff imposition. Yes. And a lot of countries are saying that it can lead to trade war. Can you explain us what this trade war is? Trade war. Actually, sir, Donald Trump actually. What is trade war? Trade war. Yeah.
imposing increased tariffs for companies investing in the suppose a company want to invest in USA. So Mr. Donald Trump is asking for making itself in a. Okay, if you are not comfortable, yes, we can say it's not clear. So you have read PSI, international relations is there. Yes, sir. I'm just mixing economy with international relation. So our dependency on USA, has it increased? Are we more dependent on USA now? No, sir. We are trying to actually diversifying our relations. So we are dependent on USA. But in terms of certain aspects, we are. My last question to you. Yes, sir. If Donald Trump deports 18,000 Indian, what will it do? Sir, government has actually cleared his government stand. Government has actually cleared the stand that we will check the details of the these returning persons, and after verifying, we will accept those because India is also of the opinion that there should not be illegal migration within any country, sir. Thank you, Dhanaji. Sir, please. You said you were inspired by some police officers in Maharashtra. Yes. What are the qualities in the police service that inspire you? What do you think a police officer can do which other officers can't? The police has access to people on daily basis. So many people have got access. Railway people have got access. IAS people have got access. So many services. Even Tahsildars have got access. Yes, sir. Sir, I am inspired from just say Mahesh Bhagwat, sir. So Mahesh Bhagwat, IPS, sir. So currently. It's okay. Any name is. I am not talking. I am talking about the service in general. Okay. You can stage encounters. Is that what interests you? That other services can't. Police has an opportunity to actually give justice to the people or just help to the people on daily basis. How can you give justice? Tell me how. That's I agree with you. Yes. It's a very good word you used. They can give justice. Correct. How? Sir, if suppose a person come to the police, he is in need of any situation. He is in a need. So police has an authority to actually first of all counseling that person to keep them calm and help within the actually framework of law. So they have an opportunity to. They have also reach also to the like other services also. They have reached to last person also. So I think, sir, police has opportunity to help the people on daily basis. This actually inspired me basically. Okay, thank you. Thank you, sir. So we have come to the end of the interview. Thank you, sir. Now, are you getting the benefit of any quota? Scheduled caste, backward class, EWS? Sir, I am from OBC, sir. OBC. Okay. And your father, mother, you put the same name. Why? Any particular reason? Actually, sir, she is unmarried mother. Okay. Now, you see, the point is, you have come up to this level. You come up to you qualified for the for the interview. Yes. How is it your knowledge of political science is so poor? You have to improve. Either yes. You have not brushed up your knowledge. Yes, sir. I have to read. You have to really read. Yes, even yes. Plato, all those philosophers and political scientists you read about. Now you've forgotten everything. Please read everything. Yes, sir. Yes. You must have a kind of a logical understanding of the subject. Okay, sir. You should be able to compare. You should be able to contrast. You should be able to derive, logic from what they have said. Yes. That is very important. Okay, so that will be used during the interview. Yes. Number one. Suppose they say, what is the social contract theory? Why is it called social contract theory? Then you talk of Rousseau, Hobbes, Locke, all these people. Then how it is called social contract? See, you should be able to link up. Okay. I am not going to ask you to tell me what is Rousseau's theory, but I will ask you what is social contract.
Yes, sir. Okay, so like that. Now, knowledge is generally important. Alertness is very, very poor. Why are you not alert during the interview? Sometimes questions have to be repeated second time. Sometimes you are thinking for 2 minutes like this and like that. I am asking you, what are the qualities in the police service that interest you? You are mentioning some names which I don't know, some Mohan somebody, but I am not bothered about that. My point is, I am talking about the service. Yes. You come for a service, you put it as number one preference, then you should come out with the answer. Yes. You have a problem of expression, or you are thinking in Marathi and talking in English. What is the reason? Sir, because of actually nervousness that I am not able to express it properly. Please get over that. Yes. How you will get over that, you will have to decide. Yes. You have to either do meditation, or you have to talk in front of a mirror, or have some nice friends to speak to who can counsel you well. Or you can talk to some people who are qualified. Contradiction should be totally avoided. Don't contradict. You give something, then you go back on it, then you come back to it, then you go back. You are contradicting yourself. आप समझ रहे हैं ना contradiction का मतलब? वो आप avoid करना. और लास्टली मैं बताऊंगा कि महाराष्ट्र के बारे में भी, जैसे लोकमान्य तिलक आप ही ने बताया, तो फिर मैंने गीता रहस्य पूछा, तो आपको कौन सा गीता हो सकता है? भगवत गीता ही हो सकता है ना. Yes. तो कम से कम उतना तो अलर्ट होना चाहिए. गीता रहस्य मतलब he can't be talking about something. Obviously he's talked about Bhagavad Gita. Yes, sir. I was thinking, but I was not sure that. So you can then say, sir, can I take a guess? Yes. Though I don't know the contents of the book, but I think it is the Bhagavad Gita. तो ऐसा भी बोल सकते हैं. Okay, sir. थोड़ा सा आप माइंड को इस्तेमाल करिए. अब लग रहा था थोड़ा सा ब्लैंक हो गया. Yes, sir. थोड़ा सा. You have to. Yes, sir. Definitely. Rev up your mind. Definitely. Yeah. You are a good candidate, and you have 6 years you have worked in GSW. Yes, sir. So you should be knowing something about what GSW does, all those things. Okay. You will do well. Good personality also. Yes, sir. Thank you. Keep a smile on your face. Thank you, sir. Put some energy and enthusiasm into the interview. Okay. Thank you, sir. And look at everybody. 60% time look at the person who has asked the question. 40% time look at others also. Okay, sir. Thank you, sir. All the best. Thank you, sir. Sanjay, budget you should read everything. Yes. And steel making, steel. What are the problems of steel industry? Because steel comes in, na? Yes, sir. You are a steel guy. Yes, sir. So steel import, export, steel problems, anything, tariff, all these things you should know. Yes, sir. Other things, political science sir has already told you. Okay, sir. International relations. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. I fully agree with Chairman sir. What he has said. Yes, sir. That exactly are the areas where you have to work upon. Yes, sir. Definitely. And improve your performance. Yes, sir. Definitely, sir. If you want to ask something. Sufficient feedback, so I will work upon that. Yeah, and then you have time, you have enough time. Yes, sir. You can avoid. You can always say, police service. You should have a very good idea. Yes. You are giving first preference. You have very strong reasons you have to give. It's a very good service. Yes, sir. But हमें लगेगा कि you probably want to stage encounters and kill some people. I don't know. You are saying I'll give justice. You are not a judge. जस्टिस आपका काम नहीं है, कोर्ट का काम है. तो आप कह रहे हैं आई विल गिव जस्टिस, तो डंडा जस्टिस हो जाएगा ना. Yes, sir. I will think of Qualify करना. Yeah. Yes. Be careful with your words. Yes, sir. I will arrest people according to the law. You can arrest them. Then cognizable, non-cognizable offence, bailable, non-bailable. वो सब जानकारी चाहिए आपको फिर. Then you should be able to mention. Yes, sir. I will brush upon it. Please brush up on that. Yes. Thank you. Generally, they say a good candidate should not be left. That is the aim of UPSC. You are one of those good candidates. You should not be left out. Okay. Sir, thank you, sir. I will definitely take this feedback positively and work OBC upon कोटा it. का है तो आपको कोटा भी मिलेगा, रिजर्वेशन. रिजर्वेशन तो but I benefit तो मिलेगा. I have to try to my 100%. Yes, that's better. Not depend on that. Yes. You should not depend on that, but it will help you. You must keep. Yes, sir. Definitely, it will help me. But firstly, So don't feel discouraged. It will help you. Yes. But point is, you have to study hard. Yes, sir. You are not studying now. Mechanical engineer, you went for a technical festival in IIT Madras or you went for a cultural festival?
No, it was technical actually. Car racing event was there. Technical means it is Shastra. Shastra. Cultural is Sarang. So I was going to ask you, but there was no time. Okay. So these things you must be thorough with. Okay, sir. The car racing, and basically how a mechanical engineer is relevant, you are not able to answer. Steel making is still relevant. Car and automobile industry is still relevant. I mentioned electric vehicles, but not exactly automobile industry, sir. Yeah. So automobile though definitely requires mechanical engineering. As long as it runs on petrol and diesel. I gave you a lead also, diesel locomotive. Yes, So yes. anything which runs on petrol I and was diesel. thinking of within railway only. Later on you actually... It's a general context. Yes, sir, general context. Yes. All the best. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Have a good day, sir. और चलो बढ़िया बैकग्राउंड देखो People don't select you for the background. but definitely it makes a difference. Why
level is very low in Kerala. Tolerance level. थैंक यू भाई. He is earning 50,000 rupees and I am earning 10,000 rupees. वही है. Very bad. If a man is climbing the coconut tree, he will calculate how much coconut, how much he should get. Yes. Take to the Naam number. Once I went to Trivandrum, so I had two small bags. I was carrying myself. So then the police said, "You can carry the bags, but to pay me my fare." I said, "But why should I pay? I am carrying my own bag." He said, "No." चार्ज भी लगा रहा है क्या करना? वो वाले ना, कौन सा वाला हैं? चार्ज पे लगा दे यार, अभी 2 में खत्म हो जाएगा फिर. डब्बी के अंदर रखो ना, चार्ज हो जाएगा. डब्बी है कहाँ? चार्ज नहीं हो रहा उसमें. वो हैंग क्यों हो रहा है? तो फिर अब Some places is good, some places no. Same Goa also, we don't have Uber here. They don't allow Goa में. So what you have to pay 500 rupees, the fellow will ask 1,500. It's an option. Local union is very strong. Very strong. नहीं होने नहीं दिया ना Uber will I asked my account started fresh. अरे क्या यार बात very simple सी है. You be stupid and you pay a price for it. This time Goa the tourism has come down drastically. ऑन है They are realizing they are stupid. बोल दूंगा. ऑन है, सब ऑन है. मैं बोल दूंगा ना, देख लो. हेलो. In 1,100 rupees and then pay 1,500 to taxpayers. Nobody Check. will do it. हेलो. उनका नया नॉर्थ 2,000 रुपए टैक्सी में है. लग ही जाता. एयरपोर्ट का मूर्खता करोगे तो कहीं तो मूर्खता भी पे करती है.
And all of them get organized at 6 o'clock. May I come in, sir? Hi. Come. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. मिस रचना, Yes, sir. अच्छा, आपके पिताजी क्या कर रहे हैं? टीचिंग? जी सर, टीचर. कहाँ पढ़ाते हैं? सर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 7 SGM अनूपगढ़ राजस्थान में सर. अच्छा. जी सर, कोशिश. सर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 7 SGM अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से सर. राजस्थान में ड्रॉप आउट रेट आप समझती हैं ना? ड्रॉप आउट रेट जी सर. वो कितना है? या आपको वो नहीं मालूम है तो एनरोलमेंट रेट बताइए कितने कितने बच्चे आते हैं स्टूडेंट? जी सर. सर रिसेंट टाइम में राजस्थान में इनरोलमेंट रेट बढ़ा है और अभी सर लगभग 95% के आसपास है सर. और हायर एजुकेशन में कितने लोग जाते हैं? जब 12th स्टैंडर्ड के बाद हायर एजुकेशन में वो जो 12th स्टैंडर्ड जो पास होते हैं उसमें जी सर. हाउ मेनी गो टू हायर एजुकेशन? सर मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ पर अप्रोक्सीमेटली 80% के आसपास होना चाहिए. 80% तो हो ही नहीं सकता. सर मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में. क्योंकि हाँ नेशनल एवरेज आप जानती हैं कितना है? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा. अच्छा, आज बजट प्रेजेंट हुआ है. यस सर. उसके बारे में आप कुछ जानती हैं? मतलब यू बीन एबल टू रीड अबाउट इट? नो सर अभी नहीं पढ़ पाई हूँ उसके बारे में. एक मेज़ का मखाना का एक बोर्ड बन रहा है. जी सर. कौन से प्रदेश में हो सकता है? सर अभी मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा है पर ये बिहार में हो सकता है. बिल्कुल. जी सर. बहुत सही कहा आपने. हिंदी मूवीज आप वॉच करती हैं? यस सर. उसमें कुछ आपने लिखा है रियल इवेंट हिंदी मूवीज, वो क्या मतलब है? सर ये ऐसी मूवीज होती हैं जो रियल इवेंट से इंस्पायर्ड होती हैं. टोटली सर रियल इवेंट नहीं दिखाया जाता है पर इंस्पायर्ड होती है किसी भी रियल इवेंट से, चाहे किसी इंसान की बायोग्राफी हो या कोई और इवेंट हो जैसे आर्मी के ऑपरेशन सर. अच्छा. आजकल ये देखने का मिल रहा है कि काफी साउथ इंडियन मूवीज पर्टिकुलरली तेलुगु मूवीज जी सर बहुत पॉपुलर है नॉर्थ इंडिया में. उसका कारण क्या हो सकता है? सर उसके पीछे के जो कुछ कारण मैं सोच पा रही हूँ सर, जो नॉर्थ इंडिया में पहले साउथ इंडियन मूवीज डब्ड आती थी उस वजह से सर उनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ गया. दूसरा सर जो साउथ मूवीज हैं वहाँ के जो डायलॉग हैं वो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं. वहाँ की जो स्टोरी टेलिंग है सर वो बेटर हुई है. लोकल जो इन्फ्लुएंस है उनकी मूवीज में वो ज़्यादा है, इसीलिए वो ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में आजकल पॉपुलर हो रही है सर. मान लीजिए आप राजस्थान में टूरिज्म सेक्रेटरी हैं. जी सर. तो आप क्या करेंगी वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए? सर राजस्थान में टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा डेवलप है. उसके अलावा जब हम इशू देखते हैं टूरिज्म में तो हॉस्पिटैलिटी का एक इशू आता है कि कभी कभी साफ़ सफाई को लेके इशू रहता है. तो पहला मेरा फोकस रहेगा कि जो वहाँ की हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा काम करे. उसके अलावा सर कनेक्टिविटी को प्रमोट करने की कोशिश वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुई है. कनेक्टिविटी को प्रमोट करने की कोशिश करूंगी. इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उनको बढ़ाया जाए. वो एयरपोर्ट तो आप व्हाट अबाउट बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशंस और रोड्स? सर डायरेक्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे बड़ी सिटीज़ में तो वो हेल्प करेंगे. उसके अलावा सर जो इंटर सिटी कनेक्शन है छोटी सिटीज़ के साथ में सर उनको बस से या रेलवे के थ्रू से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी. अच्छा, आप? थैंक यू सर. रचना जी आप खो खो खेलती हैं? यस सर. खो खो के मैदान का क्या साइज होता है? सर 30 मीटर बाय 19 मीटर का होता है सर. 30 मीटर बाय 19 मीटर? जी सर. और इसको नापते कहाँ से हैं? क्योंकि उसमें कुछ वो बीच में कुछ लगा भी होता है. सर 2 पोल होते हैं. हाँ. सर पोल के बीच का डिस्टेंस जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ 16 मीटर का होता है. ओके. तो पोल जो है वो पूरे इसके बीच में एग्जैक्ट बीच में लगते हैं? जी नहीं सर. हाँ. सब पोल को जो 6 मीटर की दूरी पे लगाए जाते हैं.
जो बाउंड लोबी होती है उससे 1.5 मीटर और 1.5 मीटर की एक्स्ट्रा लोबी होती है। फिर एक पोल होता है। नहीं, आपने 30 बाय 19 बोला ना? जी सर। तो 19 की चौड़ाई को बीच में नापेंगे, 8.5 करके उस लाइन पे लगाएंगे पोल? जी नहीं सर। कहाँ लगाएंगे? सर साइड में लगता है। सेंटर लाइन जो होती है सर लंबाई की, जो लंबाई की सेंटर लाइन है उसके ऊपर लगता है? सर लंबाई जहाँ से सेंटर निकलेगी वहाँ पे लगता है सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा, 30 मीटर का जो लंबाई का सेंटर होगा, यानी 15-15 मीटर छोड़ के? नहीं सर। सर जो 19 मीटर की चौड़ाई है उसमें हाँ। सर एक जो 30 मीटर जा रही हमारी लंबाई वाली जो रखी है उसके समांतर लगते हैं सर, ये कहना चाह रही हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। सॉरी सर। अच्छा, भारत से कौन कौन सी बीमारियां हैं जो एलिमिनेट कर दी गई हैं? सर अभी मैं जितना याद कर पा रही हूँ उसमें सब, एक तो पोलियो की दवाई है, पोलियो का इशू है वो इंडिया ने एलिमिनेट कर दिया है। सर उसके अलावा अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। चेचक? जी सर, स्मॉल पॉक्स जो थी? यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। अभी आजकल एक बीमारी फैल गई है, उसके बारे में लोग थोड़े परेशान हो रहे हैं, क्या नाम है उसका? सर एग्जैक्ट नाम याद नहीं कर पा रही हूँ। कहाँ पे फैली है, किस एरिया में फैली है? सर अभी ये महाराष्ट्र में काफी ज्यादा प्रिवलेंट है, वहाँ पे डेथ भी बढ़ रही है इसकी वजह से। GBS? जी सर। गुलियन सिंड्रोम करके है, ठीक है। चलिए ये बताइए कि TFR से आप क्या समझती हैं, और भारत का भी TFR कितना है? सर भारत का TFR अभी 2 है। सर भारत का TFR अभी 2 है सर। तो मैं 8वीं का अगर एक छात्र हूँ और आपसे पूछता हूँ कि TFR 2 से क्या अभिप्राय है, तो मुझे कैसे समझाओगे? सर TFR का मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, और इसका अभिप्राय ये है कि जो हमारी भारत की पॉपुलेशन है वो एवरेज सर 2 जो बच्चे हैं उसको आगे और प्रोड्यूस कर रही है सर, औसतन 1 औरत से। मैं 8वीं का बच्चा हूँ, समझ में नहीं आया ऐसे, इससे भारत की पॉपुलेशन पर क्या असर होगा? सर जो TFR 2 अभी दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि भारत की पॉपुलेशन है वो रिप्लेसमेंट रेट पे है, कि जो एक कपल है वो अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़ रहे हैं जो उनको रिप्लेस करेंगे पॉपुलेशन में। वो जाएंगे तो जी सर, वो आएंगे। तो फिर 2.1 क्यों कहते हैं रिप्लेसमेंट रेट? सर वो एक एवरेज लिया जाता है इसीलिए 2.1 आ जाता है सर। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। IMR कितना है अभी? सर 30 है पर 1000 लाइव बर्थ पे। वेरी गुड। MMR? सर श्योर नहीं हूँ पर 47 होना चाहिए सर। नहीं, थोड़ा ज़्यादा है, 97 है, पर ये क्या पर वॉट? सर पर 1 लाख लाइव बर्थ। लाइव बर्थ नहीं, क्योंकि माताएं तो पैदा हो नहीं रही। सॉरी सर। हाँ, MMR होता क्या है? सर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। इसका मतलब क्या हुआ? सर जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ इसका मतलब होता है कि जो एक साल में कितनी माताओं की मैटरनिटी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान मृत्यु हो जाती है। जी सर। तो 1 लाख में से 97। और UMR क्या होता है? सर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, 5 वर्ष का जन्मदिन मनाने से पहले कितने बच्चों की मौत हो जाती है सर? वो क्या है अभी भारत का? सर अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। बहुत बढ़िया। ये स्वच्छता के अभियान से IMR पे बहुत फर्क पड़ा, इसको सब पढ़ लीजिएगा। जी सर। जी थैंक यू सर। हाँ जी सर जी। आपका नाम रचना विराट है? जी सर। तो विराट का मतलब क्या हुआ? सर मेरा नाम रचना विरट है, ये मेरा विरट? जी सर, ये मेरा सरनेम है। तो विरट का क्या मतलब होता है? सॉरी सर, मुझे इसका मीनिंग नहीं पता। छोड़िए। आपको गार्गी पुरस्कार मिला? यस सर। गार्गी कौन थी?
सर गार्गी एक हिंदू सॉरी सर, गार्गी एक सर विदुषी थी 700 से 500 बीसी के बीच में, जिन्होंने सर जो हमारे याज्ञवल्क्य जी थे उनको एक डिबेट में हराया था सर। तो उनको क्यों याद किया जाता है? विदुषी आपने कहा। जी सर। तो उनके कार्य के बारे में कुछ बताएंगे? जी सर। सर मिथिला के जो किंग थे सर मिथिला के जो राजा थे उन्होंने एक डिबेट रखा था स्पिरिचुअलिटी को। राजा? सर जानकी जी थे। जानकी जी? जी सर। जानकी जी राजा थी? सर जानकी, जहां तक याद आ रहा है सर, जानकी दास नाम था उनका। जानकी दास सर। सॉरी सर, मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है सर। अच्छा, आपने बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया। जी सर। लेकिन ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी क्यों कर दिया? सर एंथ्रोपोलॉजी है वो सोसाइटी की और ह्यूमंस की एक होलिस्टिक स्टडी। वो तो ठीक है, आपने क्यों लिया? जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था वो भी तो अलाउड है यूपीएससी में। जी सर। सर एंथ्रोपोलॉजी जो मेरा इंटरेस्ट एरिया है कि ह्यूमंस के बारे में स्टडी करना, उनकी सोसाइटी के बारे में स्टडी करना, उससे रिलेटेड था। और दूसरा सर एंथ्रोपोलॉजी में कंटेंट अवेलेबल था मार्केट में यूपीएससी के लिए, इसीलिए मैंने। आपने बोला ह्यूमंस के बारे में और सोसाइटी के बारे में, तो एंथ्रोपोलॉजी में दोनों के बारे में बताया जाता है, सोसाइटी के बारे में भी और ह्यूमंस के बारे में भी? सर ह्यूमंस की सोसाइटी के बारे में पढ़ाया जाता है। अच्छा, तो फर्क क्या है उसमें और सोशियोलॉजी में? सर एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ह्यूमंस की सोसाइटी को पूरा प्री हिस्ट्री से लेकर अभी तक पढ़ती है, जबकि सोशियोलॉजी उसका ज़्यादा फोकस सर मॉडर्न सोसाइटी पे रहता है। और सर कहाँ लिखा हुआ है कि सोशियोलॉजी मॉडर्न सोसाइटी पे आता है? कहाँ पढ़ा आपने ये बात? एंथ्रो का मतलब क्या होता है? सर एंथ्रो का मतलब सर ह्यूमंस की स्टडी होता है। हैं? ह्यूमंस की स्टडी होता है सर। ह्यूमंस की स्टडी? ह्यूमंस की स्टडी। जी सर। तो उसमें सोसाइटी का वर्ड कहाँ से आ गया? लॉजी तो हो गया साइंस, ह्यूमन का साइंस, और सोशियोलॉजी हो गया सोसाइटी का साइंस। जी सर। तो आपने तो मिक्स कर दिया दोनों को एंथ्रोपोलॉजी में, ह्यूमन सोसाइटी। सॉरी सर, एंथ्रोपोलॉजी में सोशल जो एंथ्रोपोलॉजी है वो सोसाइटी की स्टडी करता है, इसीलिए सका। किसी फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम जानती हैं? जी सर, इंडियन अगर एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात करें तो एलपी विद्यार्थी थे सर। क्या काम किया उन्होंने? सर उन्होंने नेचर मैन स्पिरिट के कॉन्सेप्ट की स्टडी की। सर नेचर मैन स्पिरिट कॉन्सेप्ट की स्टडी की है। नेचर मैन स्पिरिट? स्पिरिट? जी सर। क्या होता है वो? सर नेचर मैन स्पिरिट में उन्होंने ये बताया कि जो ट्राइबल पीपल हैं वो नेचर के साथ में एक कोलिएशन के साथ में रहते हैं, और जो स्पिरिट है उनके लिए एक सुपर नेचुरल पावर होती है जो उन्हें सपोर्ट, या वो मानते हैं कि कोई घटना जो हो रही है बुरी घटना वो उसकी स्पिरिट की वजह से हो रही है। और उनके कल्चर, जी सर, उनके रहन सहन, उनके और हैबिट्स, इसके बारे में कुछ नहीं बोला उन्होंने? सर बताया है उन्होंने कि उनका जो कल्चर है वो लार्जली नेचर से जुड़ा हुआ रहता है, और सर उन्हीं पे बेस्ड। तो ये नॉलेज आपको आईएएस अफसर बनने के बाद क्या काम आएगा? एंथ्रोपोलॉजी थोड़ी आप यूज करेंगे अपने काम में। सर एंथ्रोपोलॉजी का नॉलेज मुझे ट्राइबल सोसाइटी को समझने में और दूसरी सोसाइटी को भी एक कल्चर रिलेटिविज्म के पर्सपेक्टिव से समझने में हेल्प करेगा सर। उसके अलावा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन सिस्टम जो होता है जिसके बेसिस पे हम किसी भी एरिया की लिए पॉलिसीज बना सकते हैं, वो भी सर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा। तो डीएम साहब पॉलिसी बनाते हैं? जी नहीं सर। डीएम पॉलिसी बनाते हैं? आप डीएम बनेंगी तो हनुमानगढ़ की तो पॉलिसी बनाएंगी? सर डीएम का मेन काम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट स्कीम का रहता है। अच्छा, थैंक यू सर। रचना जी सर। आप बोले ट्राइबल पॉलिसी, ट्राइबल है, ट्राइबल का काम आएगा। मैं बोल रहा हूँ इंडिया में पूरा ट्राइब तो नहीं है, जी सर, बाकी लोग भी है। पूरा ट्राइबल पॉलिसी करेंगे तो इंडिया कैसे आगे बढ़ेगा? ट्राइबल पॉलिसी कहाँ पे चाहिए, कौन सा स्टेट में ट्राइब्स है, कौन सा स्टेट में नहीं है, क्या क्या पॉलिसी है, ये बताइए। सर वैसे तो अगर देखें तो ऑल इंडिया में सर ट्राइब हैं, पर मेनली अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट में ट्राइब नहीं है।
जी सर। वो कहाँ पे वाले? कई स्टेट में ट्राइब है ही नहीं, शेड्यूल कास्ट होगा, ट्राइब नहीं। ये क्यों मेरे को पता नहीं, आप एंथ्रोपोलॉजी से बताइए। सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। हाँ पढ़ना है। हाँ जी और सर। बताइए, और बताइए। वो मैंने काफी पूछा कुछ ट्राइबल पॉलिसी क्या है सर? इंडिया का ट्राइबल पॉलिसी है। जी सर। पॉलिसी में क्या क्या चीज करते हैं, क्या क्या चीज, क्या क्या स्कीम है? सर इंडिया में ट्राइबल सब प्लान बनाया जाता है। और उसके अलावा सर अगर हम बात करें तो जो ट्राइफेड बना हुआ है इंडिया में, जो मेजर, जो उनके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनके लिए एक्सपोर्ट की सुविधा। वनवासी है ये इनका मतलब, आपका मतलब उनको वन में रखो, वनवासी का ऐसा ट्राइबल को उनका पेड़ पौधे का खाना खिलाओ, उधर रखो, वही पॉलिसी है? जी नहीं सर, ग्रेजुअल इंटीग्रेशन का पॉलिसी है। ग्रेजुअल इंटीग्रेशन, अभी कैसे ग्रेजुअल इंटीग्रेशन करेंगे? सर ट्राइबल एरिया में डेवलपमेंट किया जा रहा है ताकि वो मुख्य। कौन सा एरिया के बारे में बोल रहा है? आपका हनुमानगढ़ में ट्राइब है क्या? नहीं सर, हनुमानगढ़ में ऐसा कोई ट्राइब नहीं है। बट्टीस है ना, बट्टीस, बट्टी ऐसा कोई कास्ट है या ट्राइब है, क्या है? पहले ये फोर्ट है ना, हनुमानगढ़ में फोर्ट है ना? जी सर, बटनेर का किला। बट्टी किंग का फोर्ट है ना? यस सर। वो बट्टीज आर व्हाट कैटेगरी है? वो कुछ का शेड्यूल कास्ट, ट्राइब ऐसा कुछ आएगा? नहीं आएगा सर, जहाँ तक मैं अवेयर हूँ वो जर्नल कैटेगरी में आते हैं सर। अच्छा, कितना पॉपुलेशन है हनुमानगढ़ में? सर हनुमानगढ़ का टोटल पॉपुलेशन 17,54,000 के आसपास है। ओके, उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आइडिया है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस क्या बोलता है? इंडिसेस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस, एक तो चाइल्ड मोर्टालिटी आपने बोला, मैटरनिटी, MMR। जी सर। उसके अलावा सर ट्राइबल पीपल का बताना है या पूरा हनुमानगढ़ का बोल रहा हूँ? सॉरी सर, हनुमानगढ़ का। हनुमानगढ़ का आपको पता होना चाहिए। जी सर। कितना एजुकेशन है, मेल फीमेल रेशियो क्या है, वो पता नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है? सॉरी सर, मैं अवेयर नहीं। अच्छा ओके, आप पॉलिटी PS है या एंथ्रोपोलॉजी? ये एंथ्रोपोलॉजी से आप क्या करेंगे? ये फॉसिल वगैरह पढ़ के, स्केलेटन दे, वो सब सीख के आप क्या करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में? फॉसिल वगैरह पढ़ के क्या करेंगे आप? सर एंथ्रोपोलॉजी में फॉसिल की जो स्टडी है वो हमें ह्यूमन इवोल्यूशन को समझाती है, तो सर आगे होने वाले इवोल्यूशन के बारे में भी आइडिया रहता है कि जो इंसान है और जो सोसाइटी है वो इवॉल्विंग है सर। कैसे फॉसिल होगा आगे वाला आदमी का, कैसे इवोल्यूशन होगा? अभी डार्विन बोला पहले मछली, सम बैक्टीरिया था, फिर मछली आ गया, फिर वो सो मेनी थिंग्स बोला, फिर मंगी आया। एप से मंगी, हाउ मेनी स्केलेटन्स आर देयर? एप टू मंगी, होमो सापियन, होमो इरेक्टस एंड ऑल ना, ब्रीफली बता सकते हैं? एप टू एवोल्यूशन ऑफ फ्रॉम एप टू होमो सापियन। जी सर, मैं कोशिश करती हूँ सर। सर रामापिथेकस और शिवापिथेकस सबसे पहले आए थे 12 से 14 मिलियन ईयर अगो। उसके बाद में सर ड्रायोपिथेकस का इवोल्यूशन, ड्रायोपिथेकस में इवोल्यूशन हुआ उनका सर, ये लगभग 12 से 10 मिलियन के आसपास हुआ। उसके बाद में सर हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस देखने को मिला है। उसके अलावा बाद में सर होमो इरेक्टस, नियांडरथल, होमो सेपियंस और होमो सेपियंस सेपियंस है सर। अभी ट्राइब कहाँ से आया? ट्राइब कब आया? ये होमो सैपियन में बीच में ट्राइब आया, कास्ट आया, सब कुछ आ गया, ये कहाँ से आया, कब आया? सर नियांडरथल के बाद में सोसाइटी इवॉल्व होना शुरू हुई थी, सोशल ग्रुप बनने लगे थे, और जैसे जैसे सर आगे डेवलपमेंट होता गया, कुछ लोग सर डेवलपमेंट में ज़्यादा आगे बढ़ गए और कुछ जो है वो प्रिमिटिव पे रह गए, तो इसीलिए सर वो ट्राइब और इस तरह के वर्ड्स हैं वो इवॉल्व होने लगे। हाँ, उनको सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। यस ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। यस सर। भौतिकी को छुएं? यस सर। फिजिक्स? यस सर। श्योर? चलो ट्राई करेंगे। जी सर। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? सर एक्शन रिएक्शन का लॉ है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम
सर इनर्शिया। ये क्या होता है? Sorry, चित sir. में हारा पड़ तू जीती है। सॉरी सर थ्री लॉस ऑफ मोशन बताइए सबको। बताइए। सर न्यूटन के जो 3 नियम मैं याद कर पा रही हूँ। पहला तो है सर जो जड़त्व का सिद्धांत है, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी वस्तु। बस ठीक है। हाँ। जी सर। सर दूसरा है लॉ ऑफ मोमेंटम। ठीक है। और सर तीसरा जो बता दिया आपने। जी सर। तो फिर पहले क्यों नहीं हुआ? सॉरी सर। नहीं सॉरी मत, कोई बात नहीं। रचना, आपको पता है कि दुनिया में सिर्फ एक ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने भौतिकी और रसायन शास्त्र दोनों में नोबेल प्राइज जीता? सॉरी सर, मैं इसको अवेयर नहीं हूँ सर। उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया विज्ञान के लिए। सर मैं पढ़ूंगी इसके बारे में। मैडम मैरी क्यूरी नाम है उनका। जी सर। ठीक है। आप वुमेन क्रिकेट देखती हैं? यस सर। क्या है भारतीय वुमेन टीम की रैंकिंग इस समय ओडीआई में? सर ओडीआई में अभी वुमेन्स टीम 3rd रैंक पे है। कोच कौन है वुमेन टीम के? सर पूरा नाम ही नहीं याद कर पा रही हूँ, पर उनका नाम न्यूज़ में सर मजूमदार के नाम से आता है। अमोल मजूमदार। ठीक है। जी सर। बढ़िया है। चलिए, हाल फिलहाल में हमने अखबार में ये पढ़ा कि भारत में महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। जी सर। आपको क्या लगता है, महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है कि बुरी? सर महंगाई का अगर हम देखें तो मिला जुला इम्पैक्ट रहता है सर। जैसे कि ये जो हमारे कॉमन पीपल हैं उन पे सर भार बढ़ाता है, उनके एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देता है। उसके अलावा सर पर इन्फ्लेशन की वजह से जो हमारी कम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ती है सर एक्सपोर्ट में। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। अब ये बताइए आप जरा कि जीएसटी में कितने स्लैब्स हैं? अच्छा चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ, पेट्रोल किस स्लैब में आता है? पेट्रोल पे कितना जीएसटी? सर अभी पेट्रोल को जीएसटी से बाहर रखा गया है। ठीक है रचना, थैंक यू सर। प्लीज। वर्ण और जाति दोनों में क्या फर्क है? सर वर्ण जो है वो इनिशियली कलर के बेस्ड पे आए थे, वो जो जाति है वो जन्म आधारित होती है सर। वर्ण जो है वो 4 माने गए हैं, जबकि जाति सर काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर हम देखें तो सर अलग अलग जो इंडिया का सेक्टर है वहाँ पे अलग अलग हैं सर। कलर के हिसाब से वर्ण निर्णय क्या? इनिशियली कलर के हिसाब से ही कौन से कलर किसके, मतलब कैसे आप उसको कॉरलेट कैसे करेंगी? आप कौन से कलर होना चाहिए इस पर्टिकुलर वर्ण में आने के लिए? सर जो पहले आर्यंस का माना जाता था वो वाइट कलर के थे, और जो दाशूज माने जाते थे वो सर ब्लैक कलर के थे। वहाँ से सब बाकी 3 वर्ण और इवॉल्व हुए। तो बीच में कैसे आ गया? तो फिर ठीक है, एक तो हो गया वाइट और दूसरा हो गया ब्लैक, और बीच वाले कहाँ से आ गए? सर सोसाइटी की इंटरब्रीडिंग से आए हैं। अच्छा जी सर। थैंक यू। थैंक यू सर। अब इंटरव्यू ख़त्म हुआ है, तो यू मेंटेन्ड योर कंपोजर। जी सर। वेरी गुड, यू आर स्माइलिंग एंड यू आर एबल टू मैनेज। एक्सप्रेशन अच्छा है, स्माइल अच्छा है। बीच में आप बैकआउट कर देती हैं, कुछ बोलती हैं, उसके बाद यू से नहीं अगर आप बोल रहे हैं तो सही नहीं है तो फिर आई विल टेक बैक माई स्टेटमेंट। तो 2-3 बार हुआ। जी सर। हाँ, क्यों करती है? यू आर नॉट श्योर ऑफ योर आंसर? सर मैं इस पर काम करूँगी सर। थोड़ा सा। जी सर। क्योंकि जब आप आंसर देती है ना, यू शुड बी श्योर जी सर। एंड यू शुड हैव प्रॉपर लॉजिक फॉर इट, जी सर। एंड देन यू शुड नॉट बैक आउट। श्योर सर। हाँ ठीक है। और नॉलेज ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, नॉलेज ऑफ योर कल्चर, नॉलेज ऑफ योर, ये सब बहुत ज़रूरी है। श्योर सर। Generally, I would say this as my preliminary comments, and I think finance matters you are definitely very weak. I can make out. जी सर। तो you will have to tone up because अब budget आ गया है, तो budget में क्या expenditure है, capital expenditure क्या, fiscal deficit क्या, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ट्रेड डेफिसिट क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, सब मतलब anything about finance matters थोड़ा बहुत, टैरिफ क्या है, जी सर, ये सब। बट मखाना वाज अ गुड गेस। थैंक यू सर। अच्छा, आप? Yes, you are a good candidate. You have a good smile. Use it. Feedback form. Your energy is also good. जी सर। थोड़ा सा आपका उस दिन सुबह है कि शाम को है? सर आफ्टरनून में।
आफ्टरनून में है। जी सर। इसी समय। यस सर। थोड़ा सा अपनी आवाज़ ऊंची रखना, थोड़ा जोश दिखाना। यस सर। ठीक है, बिकॉज एवरीबॉडी विल बी अबाव 60। यस तो सर। अगर आप एनर्जी देंगी तो आपको नंबर मिलेंगे, और आप मुंह लटका के बैठोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, और सवाल नहीं आता तो कोई बात नहीं, डजंट मैटर। यहाँ आपकी पर्सनालिटी देख रहे हैं, उत्तर नहीं देख रहे हैं। जी सर। यू शुड डू वेल। गुड, थैंक यू सर। एंथ्रोपोलॉजी अच्छा सब्जेक्ट है, Yes, बहुत एनालिटिकल है, वुमेन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम आएगा। Yes, उसके बारे में आप सीख लो कैसे एंथ्रोपोलॉजी यूज़ कर सकते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, जी वो सर। सीख लो। फिर ट्राइबल के बारे में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, रिजर्वेशन, ये सब चीज़ें समझना चाहिए। एंड Yes, फोक कल्चर, राजस्थान फोक कल्चर, राजस्थान आपका बच्ची लोगों का, वो सब जैसलमेर, वो सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। Yes, sir. राजस्थान आपका हनुमानगढ़, ये पहले बट्टी फोर्ट का नाम बट्टी फोर्ट है ना? जी सर, बटनेर का किला। हाँ, वो सब चेंज हो गया। टूरिज्म में क्या इम्पोर्टेंस है, वो सब चीज़। जी यू आर सर। डूइंग वेरी वेल, Thank ऑल you, द sir. बेस्ट। देखिए, राजस्थान के बारे में जानकारी आपकी पूरी ठीक नहीं है, उसको बढ़ाना होगा आपको। जी सर। दूसरी बात है कि आपने एंथ्रोपोलॉजी ले लिया है, इसलिए जो ट्राइबल्स की समस्या है हिंदुस्तान की, जी सर। उसके ऊपर में आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और क्या सरकार के पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं। देखिए, ट्राइबल्स की डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में समस्याएं हैं। छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, वहाँ सब में ट्राइबल्स के प्रॉब्लम्स हैं। इवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, आप मणिपुर में देखिए, इतना भारी झगड़ा 2 साल से चल रहा है कुकी मैती का, जी ये सर। ट्राइबल एसटी स्टेटस को लेकर के। तो ये ट्राइबल वाला जो विषय है ना, ये इतना आसान नहीं, ये कॉम्प्लेक्स विषय है, और पूरे कंट्री को ये कवर करता है। आपके राजस्थान में भी ट्राइबल्स की बहुत आबादी है, उनकी जी बहुत सर। सी समस्याएं हैं। यस सर। तो पूछ सकते हैं कि भाई आखिर ये एक्सट्रीमिज्म, माओइज्म, वायलेंस इतना क्यों बढ़ा, ट्राइबल्स में इतना असंतोष क्यों बढ़ा, सरकार की पॉलिसी में क्या चेंजेज होने चाहिए, कैसे उनको ये वायलेंस को कंट्रोल किया जाए, केवल ताकत के जोर पे, पुलिस फोर्स के जोर पे नहीं। तो इस पर आपकी थोड़ी स्टडी अच्छी होनी चाहिए, और थोड़ी आवाज़ में आपके बुलंदी होनी चाहिए। देखिए, आप आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, इम्तिहान पास करने के लिए, तो Yes, sir. आपकी आवाज़ में बोल्डनेस होनी चाहिए, और थोड़ी मजबूती से बोलिए। सर, मैं डेफिनेटली इस पे काम करूँगी। हैं? सर, मैं इस पे पूरा काम करने की कोशिश करूँगी। हाँ। और कंट्रोवर्सी जो है ना बीच में, जैसे आप बोल रही थी, इज देयर इन योर बुक, या ये अपना जो थियरी था जो वर्ण और जाति का, जी सर। आपका अपना थियरी है या कहीं बुक में है? सर, बुक में है। क्या लिखा है एग्जैक्टली? सर, एग्जैक्टली तो यही याद कर पा रही थी कि वर्ण जो है वो इनिशियली। वर्ण क्या है, कितने वर्ण हैं? सर, 4 हैं। कौन कौन से? सर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, हाँ, तो- वैश्य और शूद्र। सारे आर्यन ब्राह्मण बन गए क्या? नहीं सर। फिर आप तो बोल रही थी वाइट वाले हैं, तो और ऐसे कॉर्लेट कर रही थी ना आप, जी सर। तो फिर कैसे कॉर्लेट होता है फिर? सर, मैं इसके बारे में दोबारा थोड़ा पढ़ लीजिए, जी सर। बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर सपोज टू बी ए स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, यस सर। यू कांट बी गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। यस। ठीक है, जिनको जिसमें टैलेंट था, जैसे दोज पीपल हु कुड डू मेमोराइजिंग पहले, वो एक कैटेगरी में हो गए। जिसका ज़्यादा ताकत था वो एक कैटेगरी में हो गए। तीसरा जो मतलब अन्य जो प्रोफेशंस में जो स्किल्ड थे वो एक में हो गए, बाकी जो बचे हैं वो एक में हो गए। ऐसे ही वर्ण हुआ। जी सर। और जो जाति हुआ बाद में वो ऑक्यूपेशन के हिसाब से हुआ, तो दैट इज हाउ इट गॉट सेपरेटेड, बट यू कैन रीड अबाउट इट। यस सर। ऑल द बेस्ट, आई थिंक यू डिड अ गुड जॉब ओवरऑल, बट यू कैन डू बेटर। यस सर। एनीथिंग एल्स? सर, एवरेज मार्क्स इफ यू Average, I'll give you 175. श्योर सर, मैं वर्क करूँगी। Not more than that. You can get more than 190. आपका कोई कैटेगरी है ना, बीसी कोटा, कोई कोटा है क्या आपका?
SC sir. SC quota. So you can easily get into the IAS this time if you get good score in the interview. जी sir. Thank you. Thank you sir. फीडबैक फॉर्म ख़त्म है, दे दो। ला मुझे दे दो। सर all the Muslims in अभी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली यार, वेट लूज किया। चलो पुराने कपड़े काम में आ जाएंगे ना इस बारे में। पुराने से सब वही मोटे और क्या है, बिग साइज। आप बैठ रहे हैं सर? नहीं यार, मेरी तो क्लास है अभी 4 बजे। मुझसे काम नहीं होता यार। जिस दिन मुझे बैठना होता है मेरे लिए दिन सजा होती है। बढ़िया है, आप बताओ। चलो सर। सर वन स्मॉल रिक्वेस्ट, ये कैटेगरी या कास्ट वाला प्लीज क्वेश्चन मत पूछिए। लास्ट में तो आप लिख के दे देना। मैं लिख के, अच्छा कहीं लिखा नहीं ना कैसे सर? क्योंकि देखो आइडिया इज टू एनकरेज देम टू ट्राई टू गेट इट because if they get into the quota then they will be able to get it. Sometimes if there is general category the competition will be more tough. तो आप लिख के दे दीजिए। UPSC has got that entry. एंड एक्चुअली पता क्या अगर नहीं पूछना तो नहीं पूछेंगे, हमें क्या नहीं, प्रॉब्लम। वो पता क्या है, जैसे कल को ये लोग एडिट करेंगे, अब वो कल को ये लोग नहीं देखेंगे क्या क्वेश्चन आ रहा है, वो YouTube पे जाएगा बाद में ना कोई YouTube में, हाँ YouTube में मत जाइए, समर माइंड से स्टूडेंट्स का क्लियर हो जाएगा ना उनके इंटरव्यू। वो मत करिए, फिर तो आगे YouTube में मत जाइए। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये शेड्यूल का नहीं तो आप ऐसा करो, फॉर्म में लिख के दे दो। फॉर्म में तो होना चाहिए ना। फॉर्म में एक फॉर्म है मेरे पास, दूसरा फॉर्म नहीं है। सर का पॉइंट यही है, वो पास होने का चांस बताने के लिए। सर मैं बिल्कुल समझ गया, हमारे जो एडिटिंग टीम है ना वो ये नहीं देखेगी क्या डालना है, वो सारा डाल देगी। बहुत थोड़ा सा थोड़ी सी निकाल, किसी बच्चे ने बीच में सोच लिया कि यार ये क्या सवाल पूछ रहे हैं, ये प्राइस के बीच में बता नहीं सकते हैं। मैं ट्राइब का बोल रहा हूँ बिकॉज़ ट्राइबल स्टडी का रिपोर्ट आया, ट्राइबल डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है। देखो भाई, आंध्र quota is there in government. Yes, you can do two things. One is if you have the tab, you give it to us. If you don't have it, you can ask them there itself. And जैसे आप यहाँ लिख रहे हैं ना, you are writing the subject and the you can write. मैं कराता आंध्र प्रदेश में ये अभी एक रिपोर्ट आया ट्राइबल। I have no problem with that. ट्राइबल एक रिपोर्ट आया, आपने पढ़ा होगा। So many tribes are yet to be added. So many tribes are not traceable. So many scheduled castes को tribe लगाया, और किसी को tribe लगाया। ऐसा रिपोर्ट आया। हाँ वो तो सही है। आपको इंटरेस्टिंग बात बताओ। हाँ जी। I was SCPC का सेक्रेटरी था, उसमें कहा था भूगी चूड़ा चबा। तो मैंने पूछा कि भाई ये नाम आपको यूज तो करता नहीं है, तो मैंने कहा इसको लिस्ट से ड्रॉप कर दीजिए, मैंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, बंद करना, ठीक है ना। अब सरकार 10 साल के बाद जानी है कि क्यों ड्रॉप किया था इसको। हमने कहा जब कोई भरता ही नहीं है फॉर्म में, ये इट इज ऑलरेडी उसका पॉपुलेशन रिपोर्ट हुआ है, तो ये पता है चीज ऐसी है। सर वो डिस्कशन में हम लोग केवल गए थे, और कुछ कमियां हैं। वन ऑफ द फैक्ट और कुछ तो मैं बोल रहे बढ़ाया जा एक बार ना, ठीक है सर। ये जो सर ने वर्ड इस्तेमाल किया, एक बार वो वर्ड किसी ने दिमाग निकल गया था एक पर्सन में, उस पर्सन को यूट्यूब पे इतना ट्रोल किया गया ना, इतना ट्रोल किया गया कि एक फैकल्टी ऐसे कैसे ये वर्ड कैसे इस्तेमाल कर सकता है, वो उसका मीम सब जगह शेयर हो गया। तो ये छोटी-छोटी चीजें होती हैं, गलत जगह चली जाती हैं, वो मीनिंग नहीं लोग समझते, और मतलब इतनी क्लिप निकाल देना है, वो दिक्कत हो जाती है। बाकी करते हैं स्टार्ट। ठीक है सर, मैंने कहा हाँ सर, थैंक यू सो मच सर। You are very keen to get it, yes, no? Sir, actually, she has to go for the feedback, so I have to give it. नहीं, पढ़ने तो दो। हाँ sir, you can take your time. जब तक कैंडिडेट को तो बात ये है, PW is a unicorn now.
रगड़ाई हो रहा है, चाय तो पिलवा दी। No, no, sir. It's not an issue, sir. No issue, sir, no. आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं ना? बड़ा कठिन सब्जेक्ट है। यूपीएससी में से उतना नहीं आता, यूपीएससी में उतना डीप में नहीं आता है। तो आप लोग थ्योरी कराते हो इंडियन इकोनॉमिक्स? इंडियन इकोनॉमिक्स ज़्यादातर सोशल इकोनॉमिक्स रहता है सर। ठीक, खाली मेरे लिए है? नहीं, सभी के लिए आई है। तो सोशल इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है? मैथ्स का पार्ट नहीं रहता सर, इकोनोमेट्रिक्स नहीं होता है। बस बहुत बढ़िया है यार, वही तो बहुत है। बस सर इसीलिए इजी रहता है। किसकी किताब ज़्यादा आप लोग? ऐसे बच्चे ये सब नहीं पढ़ते। तब कल जो आप लोग बोल दिए सर मैं तो इग्नू से लेता हूँ, मैं तो इग्नू के कंटेंट से पढ़ाता हूँ। अच्छा। बट अगर आप स्कॉलर्स की बुक्स अगर आप रेफ़र करने लगेंगे तो हो गया फिर। देर उनको कोचिंग मटेरियल से काम चल जाता है इनका। तो उतना टाइम भी नहीं कह सकते हैं। एक दो आदमी लिखे थे ना अच्छी किताब, कोई संजीव क्या नाम? संजीव वर्मा सर जेनरिक बुक्स हैं वो, एकेडमिक बुक्स नहीं है सर। वो कोचिंग की बुक और एकेडमिक बुक बहुत अलग बुक होती है। मैं पढ़ा हुआ हूँ संजीव वर्मा सर से, अब तो उनकी डेथ हो गई है, बट इट इज़ अ वेरी यूपीएससी स्पेसिफिक बुक। हाँ संजीव सर की इस एग्जाम के लिए वही चाहिए। इग्नू बेटर है सर। क्या हो रहा है भाई? और कौन हैं? सर वो लाइट बंद हो गई। लाइट बंद है? लाइट बंद हो गई थी अभी अचानक, वो पैर लग गया। ये क्या सिस्टम है, ये लकड़ी से लाइट? सर दुनिया जुगाड़ पे चल रही है। यहाँ जैसा तामझाम है ना प्रोफेसर साहब, हाँ सर। आपको लगता है फिल्म का शूटिंग हो रहा है। सर ये शूटिंग ही है। दिस इज नॉट व्हाट यू थिंक, दिस इज जस्ट शूटिंग सर, और कुछ नहीं है। उसी तरीके से लें भी इसको, शूटिंग की तरह। तो हम लोग का जो सीआर बच्चे लोग बाहर लिख रहे हैं, वो तो बेटी बताती नहीं हम लोग को। क्या खाली चीज़? हम लोग से फीडबैक ले जाती है। फीडबैक सर आपका सोशल मीडिया पे जाता है, तभी तो वो उन्होंने आके ये बोला है। सोशल मीडिया पे जाता है? यस। फीडबैक सोशल मीडिया में कहा जाता है। हम सब के बारे में, हम हर पैनल के बारे में सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन होती है। ये देते हैं? नहीं नहीं सर, बच्चे देंगे। दे हैव ग्रुप्स, दे विल शेयर एवरीथिंग। द लास्ट टाइम Gulati sir remember there was some IRS lady member, do you remember sir? IRS member ma'am, I don't remember the name। हाँ तो उनका बहुत नेगेटिव रिव्यू था, बिकॉज शी समटाइम्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती थी, कभी कभी बहुत एग्रेसिव हो जाती थी। याद है अपने पैनल? मुझे नाम याद नहीं है सर, मैं भी। हाँ तो वो टेलीग्राम के चैनल्स होते हैं, तो उनमें वो बच्चे शेयर करते हैं कि इस कोचिंग में ये होता है, उस कोचिंग में। सो आई एम नॉट अ मेंबर, बट आई नो बाय स्टूडेंट्स दैट देयर आर ग्रुप्स। दिस इज द एरा ऑफ सोशल मीडिया सर। नहीं यार मुझे मुझे हाँ ग्रीन टी दे दो, अगर नहीं ले रहा हो, नहीं तो अदरवाइज मत दो, मुझे सर को दो। हाँ फिजिक्स वाला पैनल में सर इट इज लाइव बीइंग शेयर्ड अमॉन्ग ईच अदर। Live in the sense means they are interconnected. There are a lot of Telegram groups. The students are interconnected. Video goes to YouTube, sir. When the selection will happen, sir, only the selected candidates' video will be uploaded. Okay, that yes, is fine. yes, sir. I am a student. I get a video. Will I share with others? No, it's very less possible. There's a less possibility, sir. वो YouTube में? No, sir, not that. नहीं वो सर वो बहुत
प्राइवेट है वो, जो हम जो सोशल मीडिया बिकॉज हाँ दे हैव कॉमन क्वेश्चन. दिस विल आल्सो शो हाउ poorly they perform, no? Yes, sir. So they won't put it on YouTube. Yes, please. Good afternoon. Good afternoon. Mr. Manish? जी सर. अच्छा. आपके पिताजी क्या कर रहे हैं? Please बैठो. Thank you. बैठिए. I told you to sit down. Thank you. Sir, my father is a homeopathic physician. क्या Homeopathic physician. होम्योपैथिक फिजिशियन. जी सर. होम्योपैथी और आयुर्वेद में क्या फर्क है? सर एक तो जो ओरिजिन है जो होम्योपैथी का जर्मनी से है माना जाता है, और सर आयुर्वेद है वो भारत का स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली है. और सर उसके अलावा जो प्रक्रिया है इसके निर्माण की, दवाइयों के निर्माण की, सर उसमें भी एक अंतर है कि जो होम्योपैथी है उसमें ये कहा जाता है कि जो रोग का कारक है वही चिकित्सा की दवाई है. तो सर ये माना जाता है. आप लेबर ऑफिसर का काम कर रहे हैं अभी लेबर डिपार्टमेंट में? जी सर, मैं श्रम निरीक्षक. हाँ जी सर, श्रम निरीक्षक और समझौता अधिकारी के रूप में सर मैं कार्यरत हूँ. ये लेबर रिफॉर्म्स काफी सक्सेसफुल रहे हैं राजस्थान में. जी सर. बाकी स्टेट्स में उतना सक्सेसफुल नहीं है सर. क्या कारण है? सर एक तो यह है कि राजस्थान लेबर रिफॉर्म लाने में अग्रणी रहा है कि सर जो श्रम संहिता आई उससे काफ़ी पहले राजस्थान इस दिशा में प्रयास कर चुका था. और सर इसके अलावा जो नीति निर्माण और उसके स्तर पर है, क्रियान्वयन के स्तर पर है सर, वो प्रशासनिक जो सक्रियता है सर वो दिखाई देती है यहाँ पे. नहीं, ये भी बताया जाता है कि राजस्थान में लेबर रिफॉर्म्स जब इम्प्लीमेंट करते वक्त उन्होंने क्या किया कि काफ़ी काम उन्होंने आउटसोर्स कर दिए थे, इसलिए लेबर का मतलब उतना ज़्यादा उनका राइट्स ही नहीं रहा. तो जब आउटसोर्सिंग हो जाता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर बन जाते हैं, तो किसी और का लेबर बन जाते हैं, तो हमारा लेबर नहीं है. तो हमारा लेबर जब नहीं है तो नेचुरली वो ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते हैं. ये कारण है क्या? सर जहाँ तक मुझे जानकारी है सर ये कारण नहीं है, क्योंकि सर जैसे जो गिग वर्कर है, प्लेटफॉर्म वर्कर है, उनके लिए भी राजस्थान सरकार ने सर प्रारंभिक प्रयास किए थे उनके कल्याण के लिए. और सर जो मुख्यतः प्रयास किए गए थे सर, एक तो जो श्रम कानूनों के क्रियान्वयन है उसको लेकर कॉम्प्लायंस को ईजी किया गया था. और सर जो हायर एंड फायर की पॉलिसी है सर उसको थोड़ा ईज किया गया था. जो पहले शो श्रमिक को लेकर थी उसको सर 300 कर दिया गया था, वो कोविड की आवश्यकता के अनुरूप. अब मिनिमम वेज रेट कितना है राजस्थान में? सर जो 4 श्रेणी है उसमें जो अकुशल है उसके लिए 375 रुपये प्रतिदिन है. अच्छा. और सर अर्धकुशल है उसके लिए 382 रुपये. अच्छा. और कुशल के लिए 309 रुपये और उच्च कुशल के 359 रुपये प्रतिदिन है. फॉरेन सर्विस के लिए आपने मतलब प्रेफरेंस दिया है, नंबर 2 प्रेफरेंस? जी सर. नंबर 5 प्रेफरेंस? नहीं, नंबर 2. नंबर 2 प्रेफरेंस. तो नंबर 2 प्रेफरेंस आप ये बताइए कि अभी जो माहौल है अभी, तो इसमें भारत को क्या करना चाहिए? एक तरफ आप देखें तो फिर अमेरिका और शायद पाकिस्तान अभी भी क्लोज हैं, क्योंकि जब बांग्लादेश में कोई प्रॉब्लम हुआ ना तो अमेरिका ने शायद सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा था बांग्लादेश से, उन्होंने दिया नहीं, तो इसलिए वहाँ ऑस्टर हो गया. और देखिए यहाँ पे चाइना भी हमारे खिलाफ हैं थोड़ा बहुत, और रशिया के साथ हैं. तो इस माहौल में हमें क्या करना चाहिए? सर भारत जो अभी अव्यवस्थित ग्लोबल ऑर्डर है सर उसमें एक जो ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है. सर उसके अलावा जो इंडियन ओशन है उसमें नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में सर इंडिया इम्पोर्टेंट है. तो जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है सर, जैसे जो ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, जापान है, उनके साथ में मिलकर जो अपनी नेतृत्वकारी भूमिका है सर, जो मल्टीलेटरल फोरम्स है या जो स्थानीय स्तर पर है, रीजनल लेवल पर सर, उनमें अपनी भागीदारी बढ़ा सकता है सर. लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई अटैक हो, जी सर, हमारी मदद के लिए कौन आएगा? सर इस दिशा में क्योंकि सर विदेशी संबंधों में सर ना तो कोई स्थायी शत्रु होता है ना कोई स्थायी मित्र होता है. तो सर इस संदर्भ में यह निर्भर करेगा कि सर कौन अटैक कर रहा है और किसके हित निहित है. लेकिन सर इस दिशा में हम यह प्रयास कर रहे हैं कि जो मेक इन इंडिया और सर जो डिफेंस इंडिजनाइजेशन है उसके तहत सर हम आत्मनिर्भर बन सकें. अच्छा,
थैंक यू। मनीष जी, ये बुदसू का क्या मतलब हुआ? सॉरी सर। ये बुदसू रोड से है ना आप? सर बुदसू एक गांव है नज़दीक में। इसका मतलब क्या है शब्द का? सॉरी सर, इसका कुचामन का क्या मतलब है? सर कुचामन एक यहाँ पे सर एक झाड़ी होती है, कूंचा बोलते हैं जिसे। तो सर पहले ये था कि कूंचों की ढाणी बोला जाता था सर, जो प्रारंभिक रूप में। और सर बाद में धीरे धीरे इसका सर तो उस पे क्या उगता है कूंचों की झाड़ी पे? सर जो स्थानीय स्तर पर जो इंडिजिनाइज एक बुश होती है, तो सर उसका कोई उपयोग होता है? सर उपयोग सर झाड़ू बनाने में होता है, जो झाड़ुएं होती है। और उसके अलावा जो स्थानीय स्तर पर चिकित्सा होती है कई बार, जो आयुर्वेद या उसमें, तो सर उसमें भी उसका उपयोग किया जाता है सर। नागौर का क्या मतलब है? सॉरी सर, नागौर का तो नागौर जिले का ओडीओपी क्या है? सर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सर मकाना संगमरमर है। मकाना संगमरमर, मकाना संगमरमर है। अच्छा, तो आपने दानिक्स को नंबर 8 पे क्यों दिया है? ग्रुप ए से ऊपर दे दिया आपने। जी सर। तो 16 साल के बाद आप ग्रुप ए में पहुंचेंगे वहाँ पे। जी सर। सर इसमें क्योंकि सर डानिक्स में एक तो जो अपॉर्चुनिटीज है कार्य करने को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में है, और उसके अलावा सर एक और ये कारण है कि सर मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो तुलनात्मक रूप से अगर जो दिल्ली एनसीआर है वो मेरे नज़दीक रहता है, तो सर मैं कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग। फिर ऑल इंडिया सर्विस ज्वाइन ही क्यों कर रहे हो अगर तुमको दिल्ली के नज़दीक रहना था या अपने घर के पास ही रहना था? तो फिर राजस्थान सर्विस में अप्लाई करते हैं। सर मैं अभी राजस्थान सर्विस में हूँ, और सर जो इसको लेकर है कि दानिश को 8 नंबर सर, उसमें क्योंकि एक पूछा गया था मुझे सर चॉइस, तो सर उसमें मैं किसी भी क्षेत्र में रहने के लिए सर जो हूँ मैं रह सकता हूँ सर। जैसे अभी भी मेरी पोस्टिंग जो जैसलमेर है सर, दूरवर्ती क्षेत्र है तुलनात्मक रूप से, लेकिन सर एक चॉइस के रूप में मुझे पूछा गया था। तो सर उसके अलावा सर डानिक्स में दिल्ली के साथ में अंडमान निकोबार भी है सर, वो काफ़ी तुलनात्मक रूप से दूर है। तो सर ये है एक, सिर्फ यही कारण नहीं है कि मैं। चलिए, आप लेबर इंस्पेक्टर के तौर पर कौन कौन से एक्ट हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट करते हो? सर लगभग 16 एक्ट हैं सर। उसमें मिनिमम वेजेज एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटीज एक्ट है, मेटरनल बेनिफिट एक्ट है सर। ESI? यस सर। और EPF? जी सर। अभी दोनों एक्ट तो भारत सरकार के हैं। जी सर। तो आप कैसे इम्प्लीमेंट करने बैठ जाते हो? सर राजस्थान में जो स्थानीय स्तर पर उसका क्रियान्वयन है वो राजस्थान श्रम विभाग करता है, तो सर उसके अंतर्गत। क्या भारत सरकार ने ये जिम्मेवारी राजस्थान श्रम विभाग को डेलीगेट की है? जो भारत सरकार का एक्ट है उसको आप किस क्षमता से आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो? सर क्योंकि श्रम समवर्ती सूची के विषय में आता है, और समवर्ती सूची के विषय के जो प्रशासनिक क्रियान्वयन है वो सर राज्यों की जिम्मेदारी होती है, तो सर उसके अंतर्गत सर हम इसका क्रियान्वयन करते हैं। मतलब इसको कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया? सॉरी सर। कभी किसी ने आपको इस पॉइंट पे चैलेंज नहीं किया? जी नहीं सर। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा, GST के क्या, ये जो लेबर कोई कंट्रैक्टर लेबर सप्लाई करता है, जी सर, उस पर GST लगता है? सर अगर जो अगर सेवा है उसके अंतर्गत अगर निर्धारण है तो। आपने मुझे कहा 5 लेबर सप्लाई करो, मैंने कर दिया। जी सर। तो उस पर GST लगेगा? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। GST के क्या रेट है? सर GST के अभी सर 0% है, 5%, 12%, 18% और सर 28%। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी सर जी। ठीक है, बताइए मनीष जी, ये एक कंसेप्ट है बैलेंस ऑफ पावर। जी सर। इसका क्या मतलब है? सर बैलेंस ऑफ पावर का तात्पर्य यह है कि जो शक्ति है वो किसी एक के पक्ष में ना झुकी हुई हो, तो तुलनात्मक रूप से उसका एक संतुलन बना रहे, जिसके माध्यम से जो विश्व व्यवस्था है उसमें। उदाहरण से समझाइए हमें। सर उदाहरण के तौर पर सर जैसे जो शीत युद्ध था, उस शीत युद्ध था कोल्ड वॉर सर, उसमें USA और जो USSR था उसके बीच में ये दोनों एक द्विध्रुव के रूप में एक दूसरे को शक्ति संतुलन करने का प्रयास कर रहे थे सर। चीन और भारत के कंटेक्स्ट में समझाइए। सर चीन और भारत के संदर्भ में जो इंडो पैसिफिक है उसमें जो चीन का जो उभार हो रहा है
उसको संतुलित करने के लिए सर भारत जो अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज है उनके साथ में मिलकर सर प्रयास कर रहा है। कोई उदाहरण, कोई कंक्रीट प्रस्ताव? सर जैसे क्वाड है वो सर इंडो पैसिफिक में वो बैलेंस ऑफ पावर के लिए है। जी सर। ठीक है। अच्छा, किसी विचारक ने लिखा है जी सर कि भारत में पूंजी सस्ती है और लेबर महंगा है। तो ये कुछ अजीब सा लगता है सुनने में कि भारत में तो डेवलपिंग कंट्री है, ये तो अभी विकसित हुआ नहीं है, तो यहाँ पूंजी कैसे सस्ती होगी? पूंजी की तो कमी है और लेबर जो है वो तो अबंडेंट है, आबादी बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट है, काम कम है, तो यहाँ लेबर महंगा है। तो कहते हैं कि ये विडंबना है कि साहब लेबर महंगा है और पूंजी सस्ती है, इसकी वजह से जो कैपिटलिस्ट हैं, जो लोग इंडस्ट्री लगाते हैं, वो मैन पावर की जगह मशीनरी को ज़्यादा जोड़ देते हैं। जी सर। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सर यह एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में ये कहा जाता था क्योंकि सर जो क्रेडिट फैसिलिटी थी वो सर ईज की गई थी, तो उसकी वजह से सर कि पूंजी सस्ती है और जो श्रम है वो महंगा है। और सर इसके अलावा, लेकिन इसके अलावा सर जो ऑटोमेशन को महत्व देने के सर कई कारण है, क्योंकि सर एक तो भारत में जो स्किल नहीं, वो तो ऑटोमेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ भाई। जी सर। मैं तो बात कर रहा हूँ कि ये लेबर महंगा है। जी सर। तो और प्रोडक्टिविटी लेबर की बहुत लो है। कहते हैं कि चाइना का जो लेबर है वो भारत से दो ढाई गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ महंगा लेबर भी है, प्रोडक्टिविटी लो है। तो अगर ये बात है तो इंटरनेशनल क्षेत्र में आप कम्पिटिटिव तो कभी बनेंगे नहीं। जी सर। एज ए मैन्युफैक्चरिंग नेशन। तो आपका जो सपना है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का, मेक इन इंडिया का, वो कैसे पूरा होगा? सर इस दिशा में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो ये गैप है उसको फुलफिल किया जा सके। तो सर इसके लिए जो न्यू स्किल है, अपस्किलिंग है और सर रीस्किलिंग है, सर जैसे प्रयास किए जा रहे हैं कि जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। और सर जो लेबर कॉस्ट को लेकर एक इशू है, उस दिशा में यह प्रयास किया जा रहा है कि जो लेबर की सोशल सिक्योरिटी है उसके लिए गवर्नमेंट, जो प्राइवेट सेक्टर है उसके साथ में गवर्नमेंट सेक्टर भी अपना कंट्रीब्यूट कर सके, ताकि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको सर संभव बनाया जा सके। नहीं, लेबर महंगा क्यों है? लेबर महंगा का मतलब तो ये है ना कि लागत जो है लेबर की बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को वो फाता नहीं है। क्यों महंगा है लेबर? सो इस समय एग्जैक्टली तो इस पे महंगा क्यों है लेबर? लेबर एक्सपेंसिव है ना। कहते हैं लेबर लगाना बहुत महंगा है, मशीन लगा लो। जी सर। तो क्यों महंगा है लेबर हिंदुस्तान में? सर एक तो यही कारण है सर कि जो लेबर लॉज हैं सर उसको लेकर जो क्रियान्वयन किया जा रहा है सर, उसकी वजह से भी जो इशू एक बना रहता है सर। जो नहीं, क्या इशू? सर जो कॉम्प्लायंस को लेकर है सर, जो मिनिमम वेजेज को लेकर है। हाँ, तो मिनिमम वेजेज इसका मतलब बहुत ज़्यादा फिक्स की गई है ना सर। तुलनात्मक रूप से तो सर है, लेकिन ये लगता है सर जो कंट्रीब्यूशन है उसको लेकर भी सर एक इशू। सॉरी सर, कंक्रीट आंसर। अच्छा मनीष जी, आप रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में सुना है? जी सर। क्यों सुना? सर एक तो सर वो शिक्षा और संगीत के क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया, और सर उसके अलावा जो आधुनिक शिक्षा और रचनात्मक शिक्षा है उसके संदर्भ में सर उनका जो शांति विश्व निकेतन है सर, उसका जो शांति विश्व निकेतन सर, शांति निकेतन सर, विश्व भारती और शांति निकेतन। ओके, वो तो है। और कुछ आप तो हिंदी लिटरेचर है इसलिए मैंने पूछा आपसे। सर उनकी जो कृति थी गीतांजलि सर, उसको एशिया में सर पहला साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था सर। उसके लिए उसका वो रविंद्रनाथ टैगोर जी का गीतांजलि, जी सर, हिंदी ट्रांसलेशन कब हुआ? कौन को, हाउ मेनी ट्रांसलेशंस आर देयर? सॉरी सर, इसके बारे में ट्रांसलेशन नहीं है सर। ट्रांसलेशन है सर, इसकी स्पेसिफिक जानकारी आपने पढ़ा कोई कविता, ट्रांसलेटेड कविता ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर? सर गीतांजलि का ही सर कुछ पार्ट पढ़ा है मैंने। क्या पढ़ा आपने? सर जो उन्होंने स्वतंत्रता को लेकर कहा है कि जो मेरे हे प्रभु, जो मेरे भारत को एक ऐसे उसमें आप जगाओ
जिसमें सभी को स्वतंत्रता मिले सर। एग्जैक्टली सर मैं प्रभु को बोल रहा है। सॉरी। ओके ठीक है। कॉलोनियल पीरियड का फार्मर्स लाइफ के बारे में एक बहुत बड़ा नॉवेल लिखा है, वो नॉवेल आप पढ़ा है? वो बताइए। गोदान पढ़ा नहीं है आपने? जी सर। वही प्री कॉलोनियल पीरियड का नॉवेल है वो, फार्मिंग लाइफ का। जी सर। वो फार्मर्स का लाइफ से आपका नगौर में उससे कुछ सिमिलैरिटी है? नगौर और गोदान का क्या है? होरी ना? जी सर। होरी का लाइफ और नगौर का कोई फार्मर का लाइफ में कोई संबंध है या नहीं है? सर जो क्योंकि होरी सर भारत की किसी भी किसान का जो निम्न स्तर पर जो किसान है, वंचित किसान सर, उसका वंचित है कि किसान वंचित है? क्या बोला आपने? सर जो वंचित कृषक वर्ग है सर, उसका प्रतिनिधित्व करता है होरी। ये क्यों वंचित है? सर वंचितता के सर कई कारण है सर। पहला तो यह है कि जो आज भी आजीविका कृषि से जुड़ा हुआ है किसान, तो सर उनका जो मार्केट है या फिर जो ग्लोबल एक्सपोजर है वो नहीं हो पा रहा है। कर्जे से जुड़ा हुआ है अपना होरी, फिर भी वो गाय को खरीदा, अपना भाई उसको पॉइजन दिया गाय को। ये समझ नहीं पा रहा है, ये क्यों हो रहा है? वंचित किसान अभी अपना तरह से जीना कोशिश कर रहा है, अपना भाई उनका सबसे बड़ा संपत्ति को खत्म कर रहा है। ये क्यों हो रहा है सर? ये मनुष्य का क्या प्रॉब्लम है सर? ये सामाजिक वैमनस्य है जिसमें जो तुलनात्मक अभाव बोध है सर, उसको दर्शाता है सर। सर उसकी वजह से वो कविता में जो ये गुण है ना, वो ह्यूमनिज्म, ह्यूमन बीइंग का स्वाभाविक नेचर है। जी सर। है ना? जी सर। अभी हम ये आपका नगौर में गांव में राग दरबारी का कोई सीन है? राग दरबारी आपने पढ़ा है? सॉरी सर मैंने नहीं पढ़ा नहीं, वो आपका बुक में नहीं है? सर सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप पढ़ाई नहीं किया। अच्छा, ये महाकवि कालिदास जी बहुत कविता लिखा है, 7 कविता, बहुत महाकाव्य। उसमें कोई काव्य आप जानते हैं? सर अभिज्ञान शाकुंतलम एक है, दूसरा सर एक मालविकाग्निमित्रम है। ठीक है, बहुत अच्छा। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम हीरो कौन है, हीरोइन कौन है? सॉरी सर मुझे इसकी एग्जैक्टली अरे इतना प्रभाव, सब लैंग्वेज में प्रभाव है। मलयालम में है, तेलुगु में है, तमिल में है, सब जगह में है। नहीं है? सॉरी सर। मराठी कोई कवि के बारे में बोलिए आप। सर ज्ञानेश्वर मराठी। ज्ञानेश्वर एक सेंट है। जी सर। सेंट है ना ज्ञानेश्वर? सेंट स्वामी। जी सर। संत। जी सर। अच्छा, आप ये संत के बारे में बोल रहे हैं, तो कबीर जी का एक दोहे बताइए जो आपको इंस्पायर करे। जी सर। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जानते नहीं? नहीं सर, रिकॉल। आप संघ के बारे में बोला इसलिए पूछा। अच्छा, अभी क्या बोल, आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, न्यूट्रलिटी। जी सर, सॉरी। कोई बात नहीं, ये तो आपको याद था, कोई कारण होगा ना कि आपको याद नहीं आ रहा होगा। चलिए, ये पैरेलल बॉलीवुड पे थोड़ी बात करते हैं। क्या है, पहले हम सब लोगों को समझाइए, होता क्या है, किस प्रकार का सिनेमा है? सर जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है उसके पैरेलल में सर एक सिनेमा का विकास किया गया, जिसमें जो समकालिक राजनीतिक सामाजिक विषय हैं सर उन पर बल दिया गया, उनके कंटेंट पर बल दिया गया। और जो संगीत है उस पर सर तुलनात्मक रूप से कम महत्व दिया गया। सर डायरेक्टर और जो एक्टिंग है सर उसको तुलनात्मक रूप से अधिक महत्व दिया। कुछ एक दो बताएं आप, कुछ
सिनेमा का नाम आपने देखा हो इसमें? सर जैसे अंकुर है, मंथन है, मंडी है, अर्धसत्य है। अच्छा, आपने एल्बर्ट पिंटो गुस्सा क्यों आता है देखिए? जी सर। थोड़ा सा बता सकते हैं उस सिनेमा के बारे में, क्या है वो? सर अल्बर्ट पिंटो, सर ये नसरुद्दीन शाह द्वारा अभिनीत फिल्म है जिसमें जो तात्कालिक जो सामाजिक और नसरुद्दीन शाह है इसमें? जी सर। चलिए ठीक। जो तात्कालिक सामाजिक राजनीतिक माहौल था, जो औद्योगिक हड़तालें चल रही थी, वो जो विवाद चल रहे थे, धार्मिक जो वैमनस्य था सर, उसको लेकर एक जो आम आदमी है उसके जो विचार हैं सर, उसमें ये दिखाने का कोशिश की गई है सर। ठीक है, बढ़िया। भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी? सर प्रति व्यक्ति आय अभी सर लगभग सर मैं एग्जैक्टली तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सर लगभग 1,20,000 रुपये। गलत है पर चलिए, सॉरी। ठीक है। अब भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना चाह रहा है। आपको क्या लगता है विकसित राष्ट्र में कितनी पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए? सर जो विश्व बैंक है उसके अनुसार $20,000 प्रति व्यक्ति, अगर उससे अधिक हो तो सर वह विकसित देश की श्रेणी में। चलिए मान लीजिए भारत ने इतनी प्रति व्यक्ति आय प्राप्त कर ली, उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हमने बना भी ली, जी सर। तो भी आपको लगता है कि भारत का विकसित राष्ट्र बनने में और भी कुछ पैरामीटर्स को चेंज होना चाहिए? सर उसके अलावा जो समावेशी विकास है सर, अगर हम उसको ये सुनिश्चित कर पाते हैं, ना सिर्फ गरीबी बल्कि बहुआयामी गरीबी उसका उन्मूलन कर पाए सर, ना सिर्फ सर ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 100% हो, बल्कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो सर बेहतरीन हो, विश्व स्तरीय हो। अगर जो स्वास्थ्य को लेकर जो गुणवत्ता है सर उसको सुनिश्चित कर। मनीष जी, आप आधे 50% पॉपुलेशन को तो ले ही नहीं रहे हैं। जी सर। किनकी बात कर रहा हूँ? सर महिलाओं। LFPR क्या है भारत में? सर अभी लगभग सर 42% पहुंच गया है करीब। ठीक है मनीष जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। अगर मैं आपको ये बता दूं कि भारत का GDP 320 लाख करोड़ है, तो आप पर कैपिटा इनकम हमें बताएंगे? सर मुझे कैलकुलेट करना करिए। हमारी आबादी कितनी है? सर हमारी आबादी 120 करोड़ है। 120, 140, सॉरी 140, 145 जी करोड़। सर लगभग 22,000 रुपये। सर 22,000 रुपये सर प्रति व्यक्ति। इतना कैसे हो सकता है? सॉरी सर मैं इतना कम होगा क्या? सॉरी सर मैं 22,000 एक आदमी का एक महीने में 1,000 आता है क्या? सॉरी सर थोड़ा सोच लीजिए कितना हो सकता है। 2 लाख से ज़्यादा। ठीक है, अच्छा, थैंक यू। अब तो इंटरव्यू खत्म हुआ है, बैठिए। थोड़ा सा एक्सप्रेशन इज़ वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, लॉजिक इज़ गुड, अच्छा है। चॉइस ऑफ सर्विस में आप थोड़ा वहाँ पे हेसिटेट कर रहे हैं, तो आपका जो आर्ग्यूमेंट है, लॉजिक जो है ना, वो उतना वो बैठ नहीं रहा है। क्या प्रॉब्लम है आप ज़रा उसके बारे में सोच लीजिए। जो आप बोल रहे हैं राजस्थान के पास रहना है, दूर रहना है, तो ठीक है, ये नहीं है, ये सब नहीं चलेगा। संक्षेप में आपको क्लियरली बताना पड़ेगा आपको क्यों आपको ये सर्विस चाहिए, क्यों ये प्रेफरेंस चाहिए, वो नहीं है उसमें। और टैगोर के बारे में, हिंदी लिटरेचर के बारे में, मेडिकल प्रोफेशन के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। टैगोर के बारे में भी आपको, टैगोर इज द फर्स्ट पर्सन नॉन यूरोपियन टू गेट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो ये सब आपको मतलब यू शुड हैव इट ऑन योर फिंगर टिप्स, बिकॉज एनी टाइम दे कैन आस्क यू अबाउट टैगोर। तो राजस्थान के बारे में, नागौर के बारे में भी आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है आपके पास। नागौर इज फेमस फॉर दधीची माता मंदिर, आपको मालूम है? जी सर। क्यों? सर दधीमती माता मंदिर। हाँ, दधीमती माता मंदिर, हाँ, क्यों? सर लाइक यू शुड नो समथिंग अबाउट द मंदिर, नो? सर ब्राह्मणों की कुलदेवी है। कुलदेवी है, हाँ, क्यों? वो दधीमती माता क्यों प्रसिद्ध है? सर ऋषि दधीची के जो उन्होंने हड्डियों का दान किया था। हाँ, वो ठीक है, यू आर वेरी गुड। सर नागौर इज फेमस फॉर दैट, ठीक है। फॉरेन अफेयर्स में थोड़ा आप ये जानकारी बढ़ाइए, बिकॉज योर सेकंड प्रेफरेंस इज फॉरेन सर्विस। तो आप
ओवरऑल गुड, स्मार्ट कैंडिडेट। ये ध्यान रखना कि क्योंकि आप इतने साल से नौकरी कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ा बार भी हायर होगा, तो आपको राजस्थान के उद्योगों के बारे में पूरा पता होना चाहिए, कितनी इंडस्ट्री है, एमएसएमई क्या प्रॉब्लम क्या है, और सिर्फ राजस्थान ही नहीं इंडिया के भी, ठीक है ना। जो मैन्युफैक्चरिंग की हम लोग क्यों पीछे छूट गए, चाइना क्यों आगे निकल गया, तो ये पूरा अच्छे से इसको अध्ययन कर लीजिए और क्या किया जाए ताकि अब इंडस्ट्री आगे प्रोग्रेस कर सके, ठीक है। इसका अच्छा विस्तृत अध्ययन होना चाहिए आपका। सर एक जो आपने लेबर वाला क्वेश्चन पूछा था सर, उसका क्या रीजन होगा सर कि लेबर कॉस्ट महंगा है सर? देखिए, उसका सही तो ये पहलू है कि भारत में लेबर रिफॉर्म्स जितने होने चाहिए वो अभी चाहे जो भी कारण रहा हो, ऐतिहासिक कहिए या जो भी कहिए, नहीं हो पाए हैं। इसीलिए कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर कि ये लेबर की समस्याओं को लेके, यूनियन की समस्याओं को लेके वहाँ पे पूंजी निवेश भी पूरा नहीं हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से वो स्टेट हैं। तो जब लिबरलाइजेशन का समय आ गया है तो सरकार प्रयास कर रही है उस दृष्टिकोण में लेबर रिफॉर्म्स लाने के लिए। भारत सरकार बहुत एक्टिव है इसके लिए और धीरे धीरे काम बढ़ भी रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स समस्या है, इसके सोशल रूट्स भी हैं। तो उसको, लेकिन ये है कि उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसको अगर नहीं बढ़ाएंगे तो देश में जिस गति से पूंजी निवेश होना चाहिए उसमें बाधा है। और विदेश का जो पूंजी वाला है वो वियतनाम जा रहा है, वो फिलीपींस चला जाता है, वो बांग्लादेश चला जाता है। अभी मतलब गड़बड़ हुई है, लेकिन हाल तक तो था टेक्सटाइल का हब, वो इंडिया से आगे था, नेक्स्ट टू चाइना था। ये लेबर के वजह से, इसलिए ये समस्या आप लेबर से हैं, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है और थोड़ा और अध्ययन कर लीजिए कि सरकार इसमें क्या क्या कर रही है। और राजस्थान में जैसा आपने कहा काम हुआ है, उसका भी अच्छा अध्ययन करके समझाइए। नेक्स्ट भावना बहन आदेर, Yes, sir. मिस भावना बहन, आपके पिताजी
फार्मर है, एग्रीकल्चरल असिस्टेंट है, यस सर, रिटायर्ड है। यस। अच्छा, ये भारत सरकार में थे या गुजरात सरकार में? अच्छा, गुजरात का फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना है? स्टैटिस्टिक्स में याद नहीं कर पा रही हूँ सर। अच्छा, भारत का फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना है? 300 मिलियन टन के आसपास है। 300 मिलियन टन का। और उसमें क्या क्या है उस फूड ग्रेन प्रोडक्शन में? जैसे वीट का कितना है, राइस का कितना है? सर अभी मैं याद नहीं कर पा रही। अच्छा, ये 3 फार्म लॉज जो रद्द किए गए हैं, तो वो क्यों रद्द किए गए थे और उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट था वो प्रोटेस्ट किस बात पे थी? सर 3 लॉज में से एक जो लॉज था वो APMC रिफॉर्म का था, प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करना था। तो अभी जो MSP पॉलिसीज है वो APMC के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती है। तो अगर APMC स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा तो ये फार्मर के द्वारा ऐसे परसीव किया गया कि भविष्य में कभी MSP सिस्टम को ही नाबूद कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा उनके लिए एक चुनौती के उन्होंने ऐसा समझा। किन्होंने? फार्मर ने सर। अच्छा, तो और कुछ, और कोई कारण? सर अभी मैं याद नहीं कर पाई। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने किया? अच्छा, कौन से कॉलेज में? बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय। यस सर। अच्छा, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी। और ये सब करने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर में थी, वो सब छोड़ के आप सेक्शन ऑफिसर बन के इधर आ गई हैं दिल्ली में? यस सर। क्यों उस नौकरी को छोड़ के आप सेक्शन ऑफिसर के काम पे क्यों आ गए? सर जब मैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही थी उससे पहले सिविल सर्विस के प्रति तो मेरा इंक्लिनेशन हो गया था, पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि सर्विसेज के साथ प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगी मैं। तो फिर मैंने जॉब छोड़ के सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की। मुझे सेकंड अटेम्प्ट में AFH की सिविल सर्विस मिली थी। आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स? आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स। अच्छा, अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? सर जनरल अनिल चौहान। और एयर चीफ मार्शल? एयर चीफ मार्शल AP सिंह। अभी आप प्राणायाम भी करती हैं? यस सर। प्राणायाम क्यों करती हैं? सर क्या फायदा? एकाग्रता को बढ़ाने के लिए और मन को शांत रखने के लिए। मन को शांत रखने के लिए। योगा भी करते हैं लोग? यस सर। तो योगा बेहतर है या प्राणायाम बेहतर है? सर दोनों ही अच्छे हैं, पर प्राणायाम और जो हम मानसिक रूप से कैसा महसूस कर रहे हैं उसका सीधा संबंध है, इसलिए मुझे प्राणायाम थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है। अच्छा, तो उस समय आप मेडिटेशन भी करती हैं या सिर्फ प्राणायाम करती हैं? सर प्राणायाम ही मैं करती हूँ, पर उससे आप ट्रांजिट भी कर सकते हैं मेडिटेशन में। तो हर रोज़ वो मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ, पर कभी कभार वो फेज में आप चले जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि लगभग हमारा बजट का साइज क्या है? भारत का बजट का साइज अंदाज़ा लगाइए अप्रॉक्सीमेटली। आज का बजट में शायद आपने पढ़ा नहीं। 15 लाख करोड़ के आसपास। 15 लाख करोड़? क्योंकि आप भारत सरकार में हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। यस सर। करीबन 50 लाख करोड़। अच्छा, आप मैन? यस सर। आप ST नगर से हैं। ST क्या होता है? शेड्यूल ट्राइब सर। यानी ये लिखा ना, नियर ST नगर। यस सर। न्यू 80 फीट रोड। यस सर। ये ST शेड्यूल ट्राइब है? नहीं सर, ये तो कुछ और होगा। लोकेलिटी का नाम है सर। हाँ, तो ST का फुल फॉर्म क्या है? शक्ति सोसाइटी सर। हाँ, शक्ति सोसाइटी। शक्ति सोसाइटी। शक्ति सोसाइटी से तो ST नहीं बनता। उसे वैसे ही लिखा जाता था। हाँ, उसे वैसे ही लिखा जाता था। पहले वो लोकेलिटी को ST नगर बोला जाता था, फिर अब उसको मतलब रीनेम कर दिया गया है। अच्छा, और ये सुरेंद्र नगर जो है, ये सुरेंद्र जी कौन थे? वढवान के जो प्रिंसली रूलर थे, सबसे लास्ट के जो थे शायद। कहाँ के? वढवान। वधवान के। अच्छा अच्छा, वधवान का क्या मतलब हुआ? सर ये तालुका है सुरेंद्रनगर जिले के अंदर। हाँ, तो इसका इस शब्द का क्या अभिप्राय क्या है?
अभिप्राय नहीं है सर, लेकिन इसकी एटिमोलॉजी अगर हम देखें तो पहले उसे वर्धमानपुर कहा जाता था, उसी में से इवोल्व हो के वो वर्धमान। और ये सोल्डी क्या मतलब क्या हुआ? सर कोई मीनिंग नहीं है मेरे ख्याल से। ऐसा तो कोई शब्द हो ही नहीं सकता हमारे देश में इसका कोई मीनिंग ना हो। आपको लगता है ऐसा होगा? और पढ़ूंगी इसके बारे में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, तो भारत की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? 460 गीगावाट के आसपास। अच्छा, और उसमें रिन्यूएबल कितनी है? रिन्यूएबल तकरीबन 110 गीगावाट के आसपास। बस 120 गीगावाट, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या था 2030 तक कितना रिन्यूएबल कर लेंगे? सर रिन्यूएबल नहीं, पर नॉन फॉसिल फ्यूल्स जो कैपेसिटी है वो 50% तक होनी चाहिए। हाँ, तो कितनी हो गई है? सर नॉन फॉसिल अभी 44 के आसपास है। गीगावाट में बताइए। जी सर, मैं समझ नहीं पाई। गीगावाट में बताइए, परसेंटेज में मत बताइए। 225 गीगावाट के आसपास है। तो उसका ब्रेकअप क्या है? किस सोर्स से कितनी? सोलर से सर 73 गीगावाट के आसपास, विंड से 40 to 43, लार्ज हाइड्रो से 46, स्मॉल हाइड्रो से 5 गीगावाट और बायोमास से 10 गीगावाट के आसपास। ये बताइए, ये जो सोलर वाला है ये पहले क्यों नहीं हम पकड़ पाए? भारत में धूप तो कब से निकल रही थी। ये क्या टेक्नोलॉजी में क्या परिवर्तन आया या सोच में कहाँ परिवर्तन आया कि सोलर अचानक हम लोग पकड़ करके और इतने आगे पहुँच गए? सर एक तो एनर्जी सिक्योरिटी का गोल था हमारा, और दूसरा था कि सोलर के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए आपको, सिलिका में से सिलिकॉन बनाना होता है, फिर पीवी मॉड्यूल्स चाहिए, उसको स्टोर करने के लिए एनर्जी सिस्टम में बैटरी चाहिए, तो ये सारी तकनीकें धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। तो भारत क्या अपना सिलिकॉन बना रहा है? सोलर के लिए जो रिक्वायरमेंट है, सिलिकॉन सेल अपना खुद का बना रहा है? यस सर, बना रहे हैं हम। हमारी इंडिजिनस कैपेसिटी पर ईयर अराउंड 6 गीगावाट है। कहाँ पे हम बना रहे हैं? भारत में कहाँ पे हम सिलिकॉन सेल बना रहे हैं? कौन सा स्थान, कौन सी कंपनी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ आइडिया है आपको? नहीं सर, कंपनी का नाम मैं अभी याद नहीं कर। स्थान कौन सा? सर याद नहीं कर पा रही। चलिए ठीक है। मेरा आखिरी सवाल, यूपीआई के आने से जो सड़क पे बैठ के जूस बेचता है उसको 3 लाभ हुए हो, मुझे 3 लाभ समझा दो। सर एक तो उनको बैंक अकाउंट खोलने के लिए हम एनकरेज करते हैं, तो वो उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, और जब उन्हें कैश को मैनेज नहीं करना पड़ता है तो वो उनकी बिजनेस को और एफिशिएंट बनाता है, और वो अगर ऑनलाइन सिस्टम देते हैं तो वो ज़्यादा कंज्यूमर को अट्रैक्ट भी कर पाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अब उनको बाजार जाते हैं खरीदने रॉ मटेरियल तो सिर्फ फ़ोन लेके जाना है, कैश लेके नहीं जाना, ठीक है ना? वेरी गुड। हाँ जी सर जी। मैडम आप डिफेंस मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो डिफेंस के बारे में कुछ बातचीत करें? जी सर। ओके, अभी भारत में 23-24 में फाइनेंशियल ईयर में कितना डिफेंस प्रोडक्शन हुआ, इक्विपमेंट्स का, एम्यूनिशंस का, सब मिला के डिफेंस रिलेटेड? तकरीबन 1,26,000 के आसपास। ईयर एंड रिव्यू में वो डेटा 1,26,000 करोड़। यस सर। और एक्सपोर्ट कितना करते हैं? 21,000 करोड़ के आसपास। 21,000 करोड़ के वेरी आसपास। गुड। और क्या टारगेट है अगले 3-4 साल में बढ़ाने का प्रोडक्शन? 2030 तक हमें प्रोडक्शन 6 लाख करोड़ तक पहुंचाना है, और एक्सपोर्ट हमें 50,000 करोड़ तक पहुंचाना है। एक फिगर सही है, एक में थोड़ी मिस्टेक हो गई, 6 नहीं है 3 लाख। जी और जी 50,000 करोड़, ठीक। कितने देशों को हम निर्यात कर रहे हैं?
सर कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है जैसे कि फिलीपाइंस है, अभी इंडोनेशिया के साथ भी बातचीत चल रही है। अफ्रीका क्या में क्या बातचीत हुई इंडोनेशिया से, क्या चीज के लिए? ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट पोटेंशियली हो सकता है। अच्छा, और भी कहीं ब्रह्मोस हमने बेचा है? फिलीपाइंस को सर। अच्छा, क्या खास बात है, कैसे ही हम compete कर गए दूसरे, इनके कंपटीटर कौन थे ब्रह्मोस के? सर वो डिटेल में अभी याद नहीं कर पा रही। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जो हमारी समस्या है विदेश नीति को लेकर के, कि चाइना के साथ में जैसे हमारा ट्रेड बैलेंस बहुत एडवर्स है, और अमेरिका के साथ में तो ठीक है हमारा ज़्यादा है, लेकिन वो ट्रम्प साहब कहते हैं हमारा ज़्यादा सामान खरीदो, तो क्या हम लोगों को कदम उठाना चाहिए? अगर आप कॉमर्स विभाग में सेक्रेटरी हो तो कैसे आप इंडिया अमेरिका ट्रेड को ठीक करेंगे? सर इंडिया अमेरिका ट्रेड जो है वो हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी और फार्मास्यूटिकल दो सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो हमें सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है। नहीं, वो तो कहते हैं हमसे खरीदो, क्योंकि $38 बिलियन हमारा उधर सरप्लस है। यस सर। उनका एडवर्स है, वो कहते हैं बरोबर करो। तो सर हमारा जो जैसे माना जाता है कि टैरिफ स्ट्रक्चर थोड़ा रिजिड है, और टैरिफ स्ट्रक्चर थोड़ा हमारा रिजिड है और टैरिफ ज़्यादा रहती है, तो इसको थोड़ा लिबरलाइज किया जा सकता है। नहीं, क्या खरीद सकते हो आप वहाँ से? लिबरलाइज तो ठीक है। ऑयल सर, वो ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं और एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं, हमारी जरूरत है। पर हमारी रेट के मुताबिक देंगे तब ना। यस सर। अगर हमको ईरान से, वेनेजुएला से, ब्राजील से सस्ता मिलेगा, सऊदी अरेबिया से, तो हम नहीं खरीदेंगे ना। यस सर। अच्छा, और चीन के साथ क्या करना चाहिए? वहाँ तो 100 बिलियन का एडवर्स है। सर हमारी जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज है उस पर फाइटोसैनिटरी बैरियर बहुत लगाए जाते हैं चाइना के द्वारा, तो उसको थोड़ा वो रिलैक्स कर दे तो उस पर काम किया जा सकता है। ठीक। भावना बहन, यस सर। आपका गुजरात में ऑयल फील्ड्स बहुत है। यस सर। कहाँ पे है? सर ये गल्फ ऑफ कच्छ में और दहेज हजीरा के आसपास। गल्फ ऑफ कहाँ पे बोलते हैं? यस सर। हाँ, खंभात। हाँ, और दहेज हजीरा वहाँ पे। हजीरा, हाँ, हजीराबाद, क्या बोलते हैं? अंकलेश्वर में है ना? यस सर, अंकलेश्वर भरूच के पास। हाँ, वो उधर क्या, कौन सा कंपनी है? एनी आइडिया? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं। एनटीपीसी और एनटीपीसी नहीं, एलएनटी है सर एक। ऑयल फील्ड में काम करने वाला इंडिया का कंपनी कौन सा है? अपस्ट्रीम भी है, ओएनजीसी। एक और कंपनी का नाम बोलिए। अभी ट्रम्प साहब बोला है ड्रिल बेबी ड्रिल। एक 100 साल पहले डिग बॉय डिग बोला था, वो कहाँ पे था? कौन बोला डिग बॉय डिग? क्यों बोला मालूम नहीं है सर, पर दूसरी कंपनी आईओसी। मैं बोल दूंगा आपको। हाथी के पैर में तो ऑयल देगा, ब्रिटिश वाला आसाम में। डिग बॉय में डिग बॉय डिग, फिर ऑयल मिला, लिक्विड गोल्ड। अभी बोल रहा है ट्रम्प साहब ड्रिल बेबी ड्रिल। ये ड्रिल बेबी, आप इलेक्ट्रिसिटी का आदमी है, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी पावर में फॉसिल फ्यूल है ना? यस सर। ये डिग बॉय का भी, डिग बेबी का भी फॉसिल फ्यूल है। अभी फॉसिल फ्यूल, अभी इंडिया का ड्रिल बेबी ड्रिल का एक्शन से हमें क्या फायदा मिलेगा? सर जितना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ऑयल प्राइस नीचे जाने की संभावना है, तो हमारा क्योंकि हम इतनी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, तो फॉरेन। कितना बड़ी मात्रा में? अभी ऐसा माना जाता है कि 88% तक हमारा डिपेंडेंसी रेशियो है। अच्छा, दूसरा ऑयल कंपनी के नाम भी बोलिए। एक तो आपने ओएनजीसी बोला, दूसरा आईओसीएल सर। आईओसी तो मार्केटिंग है, रिफाइनरी है, रिफाइनिंग मार्केटिंग, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। एनीवे, आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, वो गुजराती इज इम्पोर्टेंट यस। इसमें है।
गुजरात में कोई साइट में है क्या, ये इंडस वैली का एंथ्रोपोलॉजिकल साइट है, इंडस वैली का साइट है, इंडस वैली साइट एंथ्रोपोलॉजिकल है? यस सर। हाँ बताइए सर धोलावीरा है, लोथल है। हाँ लोथल है। यस इसमें एंथ्रोपोलॉजिकली क्या क्या डिस्कवरी हुआ है? सर इंडस वैली एक हिस्टोरी के बारे में आता है, एंथ्रोपोलॉजी हिस्टोरी सब मिक्स है। यस सर। ये बताइए आप थोड़ा सा। सर लोथल में एक बरियल पाया गया था, ट्विन बरियल। उसमें जो उसके ऊपर जेनेटिक स्टडीज की गई थी कि किस प्रकार से माइग्रेशन हो सकता है, जो आर्यन इन्वेजन वगैरह जो थियरी दी गई है। आर्यन इन्वेशन थियरी अभी और कुछ थियरी है चैलेंज हो गया या वो अभी भी ये वही है? सर अभी भी वो डिस्कशन में है। डिस्कशन में है। यस अभी साउथ इंडिया में ये कोई स्टेट में बोला हम पैसा देंगे ये सब करेंगे, तो वो कौन है, क्यों बोला? सर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जी ने बताया था कि वहाँ की जो एक तो वहाँ पे उनका मानना है कि जो तमिल या द्रविडियन सिविलाइजेशन जो उनका उद्भव हुआ, वो उसकी जो टाइमलाइन थी वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो खासकर जो आयरन की डिस्कवरी कौन से समय पे हुई थी और जो तमिल की या फिर द्रविडियन लैंग्वेज की जो लिपि है, स्क्रिप्ट, उसका और इंडस का क्या रिलेशन है वो समझने की कोशिश की गई है। बहुत अच्छा बोला, ठीक है। थैंक यू सर। भावना। यस सर। आप फिलिप्स कर्व जानती हैं, क्या होता है? क्या सर? फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व सर मैं श्योर नहीं हूँ, पर ये टैक्सेशन रेट और रेवेन्यू। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। ओके। तो भावना, हम आज हाल फिलहाल में देख रहे हैं बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां ना महिलाओं को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दे रही हैं। आपको पता है पिछले साल कितनी सब्सिडी दी गई थी? नहीं सर, स्टेटिस्टिक्स मुझे पता कोई बात नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम कर रहा है? खर्चा वहाँ ज़्यादा होना चाहिए। यस सर। तो पर जैसे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में तो हमें संतुलन बनाए रखना ही पड़ता है। कैश ट्रांसफ़र पूरी तरह से एक नेगेटिव एक्सपेंडिचर हम नहीं समझ सकते। कैश ट्रांसफ़र महिलाओं को एम्पावर करते हैं। इन जनरल जैसे कि माना जाता है कि घर के जो खर्चे हैं उस पर उनके ज़्यादा आवाज़ नहीं होती है, तो एक प्रकार से हम उनको एम्पावर कर सकते हैं। और जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो उनकी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे हम कुछ रूप से मदद कर पाते। पर ये कैश ट्रांसफ़र जो होना चाहिए वो टारगेटेड और लिमिटेड पॉपुलेशन के लिए होना चाहिए, कि जिनके इनकम कुछ लाख से कम है उन्हीं फैमिलीज़ को ये दिया जा सकता है, ताकि हम वो बैलेंस बना रखें। तो हम मिनिमम बेसिक इनकम ला दें, इससे बढ़िया सभी लोगों को हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट देने लगे। वही सर, मिनिमम इनकम जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट है वो सभी लोगों को हमें देने की ज़रूरत नहीं है। जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं उन्हीं को देने की ज़रूरत है। चलिए ठीक है। गुजरात का एमएमआर कितना है? सर मैं निश्चित रूप से नहीं कह पाऊंगी, पर वो 90 या 100 के बीच में है। भारत का है। चलिए, गुजरात काफ़ी अच्छा कर रहा है इस मामले में। चलिए कोई बात नहीं। एमएमआर होता क्या है ये बता दीजिए। मैटरनल मोर्टालिटी रेट का मतलब है कि अगर 1000 लाइव बर्थ हो रहे हैं तो उसमें से कितनी महिलाओं की डेथ हो जाती है। कितने? 1000? यस सर। नहीं यस सर, सॉरी सर, 10 लाख। मत की ठीक। ये गुजरात में हम बड़ा गिफ्ट सिटी का नाम सुनते हैं। यस। तो ये बताइए जरा, गिफ्ट सिटी क्या होता है? और साथ में जब भी हम गिफ्ट सिटी की बात करते हैं सुनते हैं कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। दोनों चीज़ बताइए, गिफ्ट सिटी क्या है और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? सर गिफ्ट सिटी ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है। उसका मुख्य ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारी जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको हम ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर पाए और एफडीआई वगैरह को फैसिलिटेट कर पाए, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, ये सब ऑब्जेक्टिव है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट मतलब कि
वो नया ही प्रोजेक्ट है बिल्कुल। और ब्राउन फील्ड क्या होता है? जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी है पर उसमें कुछ अपग्रेडेशन हम करते हैं। चलिए ठीक है भावना, आप सर्वाइवल मूवीज देखती हैं? यस। ठीक है भावना, मान लीजिए आप किसी जंगल में फंस गई, ऐसा ना हो कभी, पर अगर आप फंस गई तो आपको क्या क्या उपकरण चाहिए, मिनिमम एकदम लीस्ट उपकरण, जिनसे कि आप अपना सर्वाइवल सुनिश्चित कर सकें? सर आग जलाने के लिए कोई इक्विपमेंट चाहिए, मैच बॉक्स वगैरह बस। और कुछ कंटेनर चाहिए ताकि मैं पानी फिल्टर करके अपने लिए स्टोर कर पाऊँ। और बस। और अगर एक्सट्रीम वेदर होगा तो कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये तो बढ़ती ही जा रही है डिमांड। ठीक है भावना जी, धन्यवाद सर। इंडियन परिवार जो है वो कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन के कारण इंडियन परिवार एक फॉर्म में अभी है, समझ गए? तो इस परिवार को अभी देखा जाए तो खतरा है। क्या क्या ट्रेंड्स जो हैं सोसाइटी में जिससे ये डेंजर नज़र आता है आपको? सर एक कॉन्सेप्ट है ग्रे एरिया वॉरफेयर, जिसमें हमारी सिविल सोसाइटी को सबवर्ज किया जाता है मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू। तो सोसाइटी में जो जनरली एक्सपेक्ट करते हैं हम कि हार्मनी होनी चाहिए, उसको ख़त्म किया जाता है। परिवार के बारे में बोल रहा हूँ, नॉट सोसाइटी। यस सर, तो जनरेशनल गैप एक इश्यू है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। और न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा बढ़ रही है तो एल्डरली एज उनकी केयर कैसे की जाएंगी, ये एक समस्या है। और जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है तो वो अपने राइट्स को मांग रही है, पर जो पुरुष है वो इस बात को पूरी रूप से समझ नहीं पा रहे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट। क्या राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं महिलाओं को? मतलब कि किसी भी घर में डिसीजन मेकिंग पावर महिलाओं को ज़्यादा नहीं दिया जाता। जब वो शिक्षित होती है तो वो अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहेगी कि वो भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, पर शायद पुरुष अभी भी उनकी मानसिकता ऐसी ही है कि महिलाएं उतनी कॉम्पिटेंट नहीं होती हैं। लेकिन क्या उनको फोर्स किया जा सकता है कि जो इनकम वो जो कमा रही हैं वो मतलब एक जॉइंट अकाउंट में डालना है या अपने इंडिविजुअल अकाउंट में वो रख सकती हैं? अभी वो फ्रीडम है कि नहीं? नहीं है सर। नहीं है? नहीं है। मजबूर कौन कर रहा है उनको? घर में जो बड़े बुजुर्ग और जो पुरुष होते हैं। आप ही बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिली हो गया है, तो अब कहाँ है बुजुर्ग, कहाँ है घर में? सर अगर है तो, और अदरवाइज वैसे कॉन्फ्लिक्ट तो उतनी ज़्यादा नहीं होती है। भारतीय फैमिलीज़ में ये कोऑपरेशन का एलिमेंट तो रहता ही है, पर ये एक्सपेक्ट किया ही जाता है कि आप अपनी जो अर्निंग है उस पर अपनी सोवरेन ऑथोरिटी ना दिखाए। तो डाइवर्स आसान हमें करना चाहिए या मतलब जो डाइवर्स हैं, जो डाइवर्स एक्ट्स हैं, जो लॉ जो हैं, उसको अभी जो जैसा है वैसे ही छोड़ना चाहिए? सर माफ़ कीजिएगा, मैं समझ नहीं पाई। डाइवर्स एक्ट, डाइवर्स का जो लॉ है, यस सर, डाइवर्स मैरिज का जो डाइवर्स लॉज हैं, उसको और सिंप्लीफाई करके उसको आसान और करना चाहिए डाइवर्स को, या उसको ऐसे ही छोड़ना चाहिए जैसा है? सर जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है तो उस दिशा में कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं। बाकी जो प्रोसीजर है वो मुझे लगता है काफ़ी हद तक ठीक है कि काफ़ी समय तक उनको एक नोटिस पीरियड दिया जाता है, तो उनके पास समय रहता है कि अगर वो अपनी रिलेशनशिप को बचा पाए तो वो भी एक हेल्थी प्रैक्टिस ही है। तो फिर इसका मतलब है लिव इन रिलेशनशिप्स को हमें अलाउ नहीं करना चाहिए? नहीं, क्योंकि उसमें तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कभी भी कोई भी किसी को छोड़ सकता है। यस सर, पर उसका एक बेनिफिट भी हम कह सकते हैं कि लोग इस रिलेशन पे उसी कारण से आ रहे हैं। और जहाँ तक कि ये सारे न्यूज़ में आता रहता है कि खासकर महिलाओं पे अत्याचार होता है, काफ़ी न्यूज़ में आ चुका है, तो उसके लिए कुछ करेक्टिव स्टेप हम ले सकते हैं, जैसे कि अभी उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। थैंक यू। आई वुड से यू परफॉर्म्ड वेरी वेल। आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था
190 तक मिल सकता है आराम से। दो प्रॉब्लम्स हैं, एक प्रॉब्लम है आपका आई कांटेक्ट। तो आप जनरली ऐसे ही बात करती हैं, आप मतलब यू शुड टॉक लाइक दिस। यस। तो आई कांटेक्ट है ही नहीं, थोड़ा सा आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना वो ज़रूरी है। दूसरा, आप स्माइल ही नहीं करती हैं, मतलब बहुत ही रिजिड हैं, काफ़ी बोरिंग लग रहा है बीच बीच में इंटरव्यू, समझ रही हैं। तो वॉइस थोड़ा सा फ्लैट है, वो भी एक कारण है। दूसरा कारण है कि आप स्माइल ही नहीं करती है, कोई हैंड जेस्चर नहीं है, ऐसे ही मतलब जैसे स्टैचू से हम बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है थोड़ा। ठीक, यही दो बस, एक मेरा तो यही डेफिशिएंसीज नज़र आए हैं। हाँ, आप मतलब याद रखिए इसको। बट योर नॉलेज बेस इज़ वेरी गुड, यू स्टडीड वेल, यू रेड वेल, एंड यू आर ऑल्सो अ सेक्शन ऑफिसर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। I am sure you must be having the capability. I worked with these section officers; they are very good at their work. Yes. And since you are in armed forces, army headquarters, I am sure you must be very good. The only other point which I expect that you may have an issue is about anthropology, about which we didn't ask you many questions. Yes, sir. So you must be thorough with the subject. Current affairs, I am sure you will be brushing up your knowledge of current affairs. Yes. जैसा budget हो आज का, जो finance matters, we didn't ask you many questions. So that you should be thorough. Otherwise, your knowledge base is good. You should also know the equivalent ranks in civil and defense, air force, all that. I hope you know it. Equivalent ranks and also the hierarchy. Yes. दोनों. Yeah. So your section officer is equivalent to what in army? सर सिविलियन तो रैंक सेम ही रहता है। No, but what is the equivalent rank? Like joint secretary is equal to major general. Yes, sir. So that you should at least think of it. Yes. ठीक है ना? Yeah, cheer up. You're already in the job. Cheer up. Yes. Put some energy into the whole अब thing. स्माइल कर रही है थोड़ा सा। अब स्माइल कर रही है। आप है ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक एनुअल रिपोर्ट पढ़ लीजिए, वो वेबसाइट देख लीजिए। Yes. अपना सब चीज़ें एकदम हाथ में आना चाहिए। आप जो कर रहे हैं वो भी Yes, ठीक है, जो फाइल जो सेक्शन है उसके बारे में सब जानकारी होना Last time you got how much in interview? 160, sir. 160. फिर एक और चीज़ आपको देखना है, इंडिया का डिफेंस पॉलिसी एंड बैटलफील्ड में टेक्नोलॉजी, नेवल शिप, ये सब चीज़ें, मैरीटाइम, हाउ वी आर डूइंग सिक्योरिटी। ओके, इंडिया का LAC, LOC, मैरीटाइम सिक्योरिटी, Triad doctrine. ओके, फिर आप अच्छा करेंगे, आप अच्छा कर रही है। आप गुजरात और डिफेंस मिनिस्ट्री, ये दो के विषय में कितना डाटा गैदर कर सके कर लीजिए, जितना नॉलेज अपडेट कर सके। बहुत काम हो रहा है स्टेट में भी, गुजरात में भी और डिफेंस मिनिस्ट्री में भी। इसमें बजट कितना आया है मैं समझता हूँ 6.5 लाख करोड़ से ज़्यादा ही होगा। आप देख लीजिएगा ब्रेकअप जो आज बजट प्रेजेंट हुआ है, और क्या क्या उसमें ये कदम उठा रहे हैं। दूसरा, थोड़ा आपसे ये पूछ सकते हैं कि चाइना इंडिया जो ये टेंशन चल रहा है बॉर्डर पर, तो उसमें डिफेंस का प्रिपेयर्डनेस के बारे में आपको क्या जानकारी है? थिएटर कमांड, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, ये सब क्यों बना रहे हैं हम लोग? मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्मी, वेपन्स के बारे में, ड्रोन्स, साइबर वारफेयर, ये सब जो चीज़ें लेटेस्ट जो आ रही हैं, क्योंकि अब ये वो पुराने ज़माने का ट्रेडिशनल लड़ाई नहीं होता है। नाउ इट इज़ साइबर वारफेयर, और चाइना ने डीप सीक AI निकाल दिया है, तो हम कैसा तैयारी कर रहे हैं? इस ये मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, आईसेट US से हुआ, ये टेक्नोलॉजी के लिए ट्रम्प साहब का जोर है डिफेंस के कोलैबोरेशन। थोड़ा जितना जान लेंगे उतना आपका स्कोर बढ़ जाएगा। आप प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हैं। Anything else you would like to ask? No, sir. You're very good, but why are you maintaining such a rigid posture? डरी हुई हो क्या? नहीं सर। You are फिर ऐसे क्यों पकड़ के बैठी हो? ऐसे बैठती हो ऑफिस में भी? ऐसे करके बैठो ना, खुद रिलैक्स करके। नहीं, थोड़ा सा rigid and नहीं, you ये don't ठीक smile है। at all.
You are like, looks like we are talking to a statue. ये ऐसा ऐसा हाथ क्यों रख रहे हैं? ऐसा रखिए. Make your conversation interesting, engaging, modulate, use your hands, make it vibrant, alive. Yes. Okay? अगले 11 दिन नॉन स्टॉप स्माइल मारे. Eye contact. ठीक है? Flat voice. Not like this. Don't talk like this. Next 11 days, you should keep a smile on your face, come what may. ठीक है? Then you get into a habit of Don't smile all the time. It won't look good. Once in a while. Okay. All the best. Thank you, sir. Yeah. Maximum 5 minutes. You are giving ideas. अरे भाई कैसा है? आजा बैठ बैठ बैठ. क्या हाल है? कल मैसेज कर रहा था. हाँ मुझे पता, कल परसों. हाँ लगा था आप आए हो. अरे यही लगा रखा है यार, क्या बोलो. बस यार पूरा दिन निकल जाता है सारा, हिम्मत ही नहीं बचती है. सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक लगे रहो. अरे यार कुछ गारंटी नहीं, 7 बजे तक भी खींच देता है. भाई हो गया था आपका काम? कितने और रह गए हैं? बोले तो दो कर रहे हैं, और कोई बड़ी बात नहीं. और बता भाई, छूट गई गलियां. बहुत दिनों से मेरी क्लास नहीं हुई यार. सब्जेक्ट भूलता जा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ तो. किधर किस वाले पटेल नगर पे ही है? आज तो नहीं चल रही. नीचे वाला इसमें तो अजय सर की चल रही होगी ना? किसकी चल रही है? अजय सर का. सही है. अरे प्रतीक सर आए थे, उनकी कायम है उस वाले में कितने बैच चल रहे हैं?
क्या बात कर रहा है? B7 बैच तो आ गया वो भी खत्म ही नहीं। हाँ। उसमें एक पार्ट रह गया अभी मतलब ये पोर्शन डिफेक्टेंस हाँ। किसी किसी बैच में तो प्रतीक सर काहे में ले रहे हैं? वो किस बैच में ले रहे हैं? हाँ। वो नया बैच है। अच्छा। पहले स्टार्ट होता है। B3 और B4 अजय सर ले रहे हैं B8 में क्लास। वो भी नया हुआ है। वो अभी आ रहा है। अच्छा। 30 तारीख को। और तो अभी पता ही नहीं कब बैच आएगा। देखो क्या हो रहा है। और जो नए आए हैं वो विवेक सर, तो नहीं पता होगा। अच्छा अकेडमी वाले। हाँ। अभी नहीं आए। है। मेरे बड़े भाई जो हमें बैठा है सो जाता है बीच में इंटरव्यू में। मेरे को भी नींद आने लगी है इसलिए आधे घंटे में तो खत्म हो जाता है। हाँ, आधे घंटे से ऊपर कर देते हैं, खींच देते हैं। कल भाई फिर मिलेंगे, मुझे पता नहीं है बट अरे सर मैं तो यही मैं भी हूँ तो यही है। कैंडिडेट्स आ रहे हैं। तुम बस काम बताओ। सर आई शेयर्ड द समरी ऑफ दिस बट हाँ कहाँ है? अंदर ही रखी है। गाय कैसे, गाय को क्यों पॉइजन किया? कैसा माहौल है सर आज अंदर? मेरे बगल वाला सो जाता है यार, लिटरली सो जाता है। हमें जो मेरे बगल में है ना। और इतना बोलता है यार, रुकता ही नहीं है यार, नहीं सुनते यार, यकीन मानो नहीं सुनते। प्लस
इस बात से बहुत डिपेंड करता है कि चेयरमैन कौन है। कुछ लोग मेरी बात सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं। Shubham, right? Yes. Shubham, let me know your optional. And okay. And what's your major? Okay. हाँ मेरा फोन So she's also there. मतलब दोनों आ गए हैं साथ में. मेरा फोन हमारे चार्जर में लगा है, ठीक है। It is like the first battle of Panipat, second battle of independence, ऐसा करके हम टाइम कम कर देते हैं। Actually, the problem is in the feedback. The questions are not taking too long. फीडबैक तुम देना, बाकी कोई नहीं। So feedback takes time. feedback. हम शुरू से ही हमने थोड़ा सा डिसिप्लिन तोड़ा आज। Sir, there's a slight change. Varsha will come first. She's saying that she has to go somewhere. नो इशू, नो इशू। Okay, जो पहले आ गए, जो हमारे घरों में जिसका हमने पढ़ लिया वो Sir, Varsha's optional is Hindi literature. नहीं, वर्षा नहीं आएगी बेटा। अरे सर जाने दीजिए Why फिर। should you change it? I mean, I don't We're understand. not done, na. You should not do it like this. Actually, the chronology was Varsha and then Shubham. No, that's not the point. The point is, see, they can't. Who came here first? They just came now. Yeah. And then they can't say, I'll have to go in half an hour. It can't happen like that. Sir, they mutually decided this. वो meeting is there. You said Sir, already decided. Okay, so I No, you will say get it's that. already decided. Okay. You said chairman has called the other whatever. You should stick to our guns. Okay, future discipline. They have to learn the value of obedience. First battle of independence हो गया, second battle हुआ, फिर हुआ, no problem. Otherwise, you know, they'll be taken for granted. और ये start, बस बैठो। सर रेडी, मैं तो रेडी हूँ सर, मैं तो 100% रेडी हूँ। You know what happened? Feedback ज़्यादा नहीं देना, हमें जाना है time पे. He told her when he came, I like to go to the bathroom. So, do I have 2 minutes? He said, yeah, go and come. Then, I think now he's probably come back and said, let me see first, let the girl go first. I'm telling you very frankly, the girls have become very, very different. I mean, the girls are more confident now. The girls are better also. Yes. Girls are better. The last girl also, she is very confident. She knows her subject. She is. She's in good command. अगर एक बार ये IAS officer बन जाएगी ना, हाँ अच्छा होगा. below her will have to really work hard. हाँ, then she will be good. She was good with data, she was confident, answers were, yes, she was good sir, she was good. वो जो हम लोग बोले वो सब पढ़ेंगे वो. तो सीरियस लेंगे. And she will make it also. Chief regional manager मतलब बैंक में है, बैंक. What is her name? Her name is Vandana. The girl who comes in. अभी जो the one who comes and goes, what is her name? वंदना, वृंदा। वर्षा वर्षा नहीं. वृंदा एक वर्षा है। वो जो लड़की आई थी अभी, जो बात करती है। So takes her own decisions. So the guy who is coming has monthly remuneration of 5 lakh. No, I saw that. Yeah. भेज दो भाई, टाइम हो गया ना, अदरवाइज ऑलरेडी 5:15 हो गया। 5:15 हो गया ऑलरेडी, थोड़ा जल्दी जाना है। ओके नहीं ठीक है, रहने दीजिए।
Generally, we had a good time today, laughing away. I really liked your Godan. Sir, may I come? Please come. Good evening, sirs. Good evening. Yeah. Please sit down. Thank you, sir. Mr. Shubham, Yes, sir. you studied in IIT Mumbai. Yes. When did you pass out? So I graduated in 2020, sir. 2020. Yes, And sir. after that, you took up a job or you went in for higher studies? So I worked for 3.5 years. Okay. Yes, sir. Where were you working? So I was working as a quantitative researcher in APT Portfolio. It's a high frequency trading firm in Delhi. And I'm told you were drawing a salary for 5 lakhs a month. Yes, sir. Now, why would you leave that and come to a job where you may not get even 1.5 lakhs, 1/3 of the amount? Sir, my job was very challenging and very rewarding. But sir, over the years I felt that I am more inclined towards serving people directly, having that public interaction. And so that human element was missing in my job, sir. So I've seen my father who is in public sector, my sister is a doctor, and other seniors also from the college who have joined civil services. And so they are working in various fields and are quite satisfied with the job, sir. Is your sister working for the government? Yes, sir, right. Where? So she is in Jhansi, in Bandha Medical College, sir. As what? As an assistant professor. So when did she take up that job? Sir, 2 years ago. So it was after that you had a change of heart. So that was one of the factors, yes, sir. Yes, sir. So how do you think you can contribute to the benefit or the welfare of the people? You may not get into the IAS necessarily, you may get into any of the civil services. Yes, sir. So I think the technological background that I've had and my experience in my job, sir. So I think that will give me an edge in implementing the technological reforms that the government is coming up with. And sir, overall I think, sir, I am a very positive person and a hard working person, and sir, I'll definitely contribute in the nation making, sir. Oh, nation building is very interesting, but are we building a nation now? What do you think? Or are we destroying the nation that's already there? There doesn't seem to be any concept of national integration anymore. Sir, I think we are definitely building the nation, and sir, there are differences that are there in the nation between various communities and various ethnic groups, but sir, that is a part of development. Those differences are Can there. you tell me because three common characteristics from north to south, east to west, which we can call as Indian? Anything which is liked by all Indians all across the nation. So the development aspect is liked by everyone, be it. No, I am not talking about something abstract as that. I am saying something which can be seen, perceived, touched, felt. Any three features, any three characteristics, any three items. Like I can give you an example, cricket. Cricket is welcomed all over India. So like that, give me two more. So the joint family system that is there. That's already breaking away. It's not there anywhere now. So the and family it's not liked by orientation most is of the there. women anyway. So the things are changing, but again that the cultural ideal is there, sir, of being Okay, a part then of what it. else? And so the religion aspect, people are religious. You can't make everybody belong to one religion. No, sir, but the spirituality element, sir, that is there in Indians. Okay, what is the spirituality you see in the Mahakumbh, or is it superstition? No, sir, I would not say it is superstition. I would say that it is a very interesting concept that people from all over the country. Yeah, it's nice to see so many people flocking there, but what is the item? What is it that makes them come together? So the religious significance, if we see, it is that they are like the sins that you may have committed during a lifetime that are washed away. This is the like mythological That people significance. say it's a superstition. How can you just bathe in a polluted river and say your sins are washed away? Sir, I think it is the belief that matters. You can have a belief sitting at home. Why should you come all the way? So it is a belief and it is a part of their religion, sir, to
the Prayag, sir, that has a very good significance, high significance in the Hindu. Okay, something emotional. Okay. Can you tell me something emotional about a human being which propels him to take a particular decision, even though logically it may not sound right for him? Like you are, for example, giving up a job and coming for a job where you're going to get 1/3 of the salary. Something similar to that? So one thing I would say is suffering. If people see human suffering directly with their own eyes, so that moves them. So okay. Okay. So Shubham, you're from Naini. Yes, sir. What does Naini mean? So it is a region inside the Prayagraj district. Nani in itself is, so Nani name is of a goddess in Hinduism. So that is the significance goddess? of the name. Which goddess? Sorry, sir, I'm not aware, but the Nani Tal also, for example, is based on the goddess name. Same goddess. Sorry, sir, I'll read about it. What is this? Is it ADA colony or Ada colony? ADA colony, sir. It stands for Allahabad Development Authority. Okay, okay. And what does Chandoli mean? Sir, the meaning I'm not sure, sir. Chakonia? So Chaknonia is the sector in which I am. Yeah, what does Chaknonia mean? Sorry, sir. Name. And when you say Mughal Sarai, Yes, sir. so what does it mean? So Sarai word, it stands for a place where people like travelers reside. So Okay, good. So which are the CAPFs in India? Sorry, sir. The Central Armed Police Forces, which are those? Can you name them? Yes, sir. So ITBP one. How many total? Total 7, I think, sir. Okay, which are the 7? So ITBP, then Assam Rifles would be one. Then sorry, sir, I'm not able to recall right now. It doesn't matter. Okay, can you tell me 3 social turning points of India of last, say, 10-20 years? So in the last 10-20 years, rights-based approach has been taken in the 2000s, early 2000s. So right to education, for example. So that is a very good social initiative. And 20 years, 30 years, after you were born maybe. So one was 1991 reform, sir. That has changed. Social turning points. Social. So the COVID. COVID is not a social turning point. Sorry, sir, I'm not. Mandal was there. Yes, sir. Then Nirbhay Kand happened. Yes, sir. LGBTQ. Yes, sir. Right. Right, sir. And PAL also came in the spirit only. Yes, sir. There are a lot of things which have happened in India. Vishaka guidelines. Yes, sir. Okay. Okay, sir. In the realm of computer science, yes, sir. What are the latest developments taking place? Latest developments in? Taking place. Taking place, sir. So first would be AI, so artificial intelligence. Second would be quantum computing, sir. And third would be growth of automated technology in warfares, for example, drone technology and all. In computer science, nanotechnology is something that computer science plays a huge role in. And so the information communication services in education and health, these are also there, especially with the emergence of 5G. Yes. Don't you think if you would have continued to work in your domain knowledge field, yes, sir, you would have contributed much more to the nation building, because so many sectors, education, health, defense, everywhere this has become
an essential Yes. requirement. So But definitely, civil service, yes, sir. it doesn't require this level of domain knowledge in any case of computer science. You see, suppose if you are a graduate in humanities, political science, anthropology, sociology, ठीक है, you can also manage. But country needs today people of your domain knowledge. In the month of November, the exports by service sector were 35 billion, more than merchandise. Yes, sir. So, your group is the biggest contributor to foreign exchange. Yes, sir. So, if you really are keen about nation building and service to the nation, then I think you should stick to your field. So, definitely in my Apart field, from the financial aspect, that of course is there. yes, sir. So in my field, sir, definitely I would have done well, and I would have contributed in the computer science domain. But sir, I think, sir, that the knowledge that I have acquired through my graduation or even through my job, it has given me that analytical bent of mind, sir, which I think is applicable throughout, even in governance sector. And so with the increase in technology in governance, with the push towards e-governance and the AI that is coming up, I think, sir, this knowledge will be helpful even in civil services, sir, and I'll be able to contribute. How many ministries are there in the government of India? Any idea? So I think around 57. 57 ministries. Yes, sir. And IT is one of them. Yes, sir. So the remaining 56 are other than IT. Yes, sir. So what is the guarantee that you will get posted only in the IT ministry? So I think it's not just. Suppose you have posted in rural development, Yes. youth affairs, sports, child development. Then what will you do with your machine learning and computation? Sir, if we see the technology, it can be No, applied. no, give me a straight answer, bhai. So it can be applied in any field. How? In child development, how will you apply? Yes, sir. So we can use. I am just giving an example, sir. For example, we can use a data-based decision-making system, and we can actually use the data of the nutritional aspects which we have collected through maybe hospitals or various other government programs, and then we can actually make a decision based on that. We can predict problems, sir, the health problems. But that otherwise they are predicting. So it's not necessary that you have to know cloud computing or machine learning for that. They are otherwise also they are doing it. sir, I think it gives a different perspective, sir, from the. What perspective? Sir, computer science, for example, it helps you to. No, what perspective? So how to adapt to technology, how technology can be used in various things that Is that the main job of a district magistrate? No, sir, but what is his main job? So his main job is to coordinate between the various departments that are there. So That's all, only coordination. No, sir. He has nothing else to do. So he has a lot of. What else? So elections. Election, that is once in 5 years. Yes, sir. What And about so day to policy day? Policy implementation. Acha. And law and order. And law and order will be somewhere priority number 10th? No, sir. Because you counted so many things. No, sir. Sir, these are the top two, sir. The policy implementation and law and order, sir. So machine learning is required for law and order? It can be used definitely, sir. Yes, sir. For law and order? Yes, sir. Its application can be used in it, sir. Shubham, Yes, sir. the true computer force, computer power Yes. was behind ChatGPT. Yes, sir. DeepSeek has used something else. Yes, sir. It has used algorithmic supremacy. Right, sir. Now the question is, what are the opportunities in this scenario for India? Sir, DeepSeek in a way has shown India that a very cheap model under $7 million can be made by a country like India if they have the proper resources aligned to it. Secondly, sir, it is an open source model. So even we can use it for application based services till our own model is developed, the AI model.
And thirdly, sir, it has shown that the big tech companies which are there in US, which have spent billions of dollars towards AI, even if we lack the resources, we can do with what we have. Did you download DeepSeek I have, sir. Yes, sir. and you have experience? It's okay. Yes. Sir, it's like there are some concerns with respect to it. First is that the data, it shows in its policy that the data is stored in secured servers in People's Republic of China. So the data privacy issue is one thing that I found concerning. Apart from that, the performance wise, if we see, then it was better. And it was alleged that they have also used certain patent rights of yes, other company. yes, sir. So Okay. OpenAI has. Now let us come to the Prayagraj. Yes. You are the computer engineer. You were saying to sir that you can use Yes. computer techniques. Why these Kumbh Mela failed? Use your deep learning, machine learning, whatever you want to, and see root cause. Why it failed? How we can prevent next snan. These problems should not repeat ever again. Yes, sir. What can be done? So the stampede situation, that the incident that happened, so it was a issue of crowd management. If we see scientifically, if a crowd, the We are population. getting into data analytics, okay? Big data analytics. You are the man. Yes, sir. No, go in. So, sir, if we see the science behind it, because we'll use it eventually. So, if we see the science behind it, there are if the per square meter occupancy crosses 7 people or equal to 7 people, people lose their individual character in it. They no longer have the control over the crowd. It acts like a fluid. We have to prevent such a situation to happen. Now, so various things were done. For example, multiple entry and exit points were there, but the Sangam nose point, which is the confluence region, so there the population increases rapidly and crosses that threshold. There we can use some methods. For example, we can use the drone facilities and other cameras. Drone facilities are there. Yes, sir, they are there. We can use it in a new way, that we can actually analyze the crowd density so that it never crosses a particular threshold, the safe limit that we can have. We can segment the crowds, sir. That was not done right now. We can segment the crowds in different groups, which, for example, it is done in New Year's Eve at Times Square. Different groups for what purpose? Just grouping. You will group them and make them wait for when auspicious omen, when they have to drown themselves or take the dip and get to moksha. You are preventing them by grouping and putting them in barricades. So, the exact point, which is the bathing site. They should reach on the right time to the dip. That is their objective. So the time is, there is an interval of time that is auspicious, and in that we can divide the entry and exit of those groups, sir. So guards, will you segregate the guards where they have to come and dip, different channels for different dip and go away, different routes, that kind of thing? Maybe a clerk in the department may know these without computers. Yes. Maybe an experienced person who sees the bathing scene, he will know the intelligence which you don't have. Do you know that? Sir, from what I can do, like using the technology. Yes, tell me. So that would be to kind of use the aerial systems, surveillance systems that we have to better manage the crowd flow. Now, Yes. sir, that can be done by even in the nose point, Sangam nose point, we can ensure multiple entry and exit points, because that is a certain range of places. What I am trying, I understood you. Yes. What I am saying is, we need computers. Yes, sir. We need the expertise of the people who are handling this issue Yes, sir. and ground realities. Yes, sir. Okay? Yes, It's sir. not deep data anymore. Yes, sir. It's Deep always data been. is an aid. Okay? Yes, That's sir. Thank you, sir. Shubham, when is your interview? Sir, it's on 14th Feb, sir. 14th Feb. Okay. So, have you read today's newspaper? Yes, sir. What is disinflation? Sir, disinflation is when the rate of inflation comes down. Then what is deflation?
So deflation is when it becomes negative and goes down. Which one is good for economy? Sir, if deflation is there up to a certain level, मतलब it's positive. Again, And but which one? Deflation or disinflation? disinflation. Okay. Yes, sir. Continue. Because sir, if inflation is contained within a certain range, then it is good for the economy. Don't you say disinflation will eventually go to deflation? It can go, but we can control its. What is the range we are talking about? So for India, we have adopted 2 to 6%, sir. 2 to 6%. Right. So do you think that, let's say, the top inflation, I hope you know what is top inflation? Tomato, onion, potato inflation. Yes. Okay. The top inflation is at, let's say, 5.5%. Is it good? Sir, eventually the target is to bring it to 4% or less. Now, top inflation, generally it has been seen to cross 6%. Didn't give it a thought. Who will be most affected by top inflation? Think about it. So, top inflation is not good. Just a second. Yes, sir. Tell me the price of 1 kg of onion. Sorry, I'm not Why? right. Why? Because you are not bothered about it. Who is bothered about it? So it mostly affects the poor people, poor So a section of the society. 5.5% inflation, Yes. and you very well know what is real income. Yes, sir. What is real income? So if we adjust for inflation, then what is the So growth? think about you earning 5 lakh rupees. I'm just giving a hypothetical example. You're earning 5 lakh rupees. Someone earns 15,000 rupees per month. 5.5 inflation is Yes, sir. 8D. Okay. Okay, coming that. Now, there was one more thing in economic survey, that is financialization of economy. Yes, sir. What is that? Sir, I think it refers to people investing their wealth in more productive assets such as financial assets. No, don't go there. My last question. Yes. Wrong. Okay. No. My last question: that do you really think that the middle class saving going into financial market, is it a good thing? Because they don't have anything else left. Yes, sir. So generally it is good for the economy because their assets are diverted to more productive assets. But if overvaluation occurs of these companies, then it is an issue. Secondly, sir, it is not protected. The returns are not protected in the stock market, for example. That may not be an issue for the higher income people, but that is definitely an issue for the middle income and lower income people. So. Okay, Shubha. Thank you. Thank Sir, you. please. You're talking about DeepSeek, so I was interested in knowing whether it retains the same IPP, though it's an open source model. Yes, sir. Anybody can work with it, Yes, sir. but the IPP will remain with the original designer, Yes, sir. right? Yes, sir. So the data will get back to him at any Yes, sir. point of time. Yes, sir. So maybe it looks like it's just a trap laid by the Chinese to get global data. So that is the concern, sir, right now, because that is what people are actually concerned about. That the data is going there, and whether it is secured or not within the company's server is not sure, because in China we see that the government's control is too much even on the companies. So you can't take China to court anywhere. Yes, sir. Thank you. We come to the end of the interview. It was a good interview. I rated you as an excellent candidate, but आप पहले बता दीजिए. Good, smart chap, no doubt about it. But given your past, you should be somebody who should be dancing into the room, So that energy, that enthusiasm I could not see. You should be smiling, you should be cheerful. You have worked in corporate for 4.5 years. Yes. So you've seen the other side so well. So that I would be expecting from you. Yes. And since you are IIT also, the bar will be much higher for you. Yes. The questions will be tougher. Yes. And now you are smiling. Yes. So that smile is required. Okay. Somebody who is being in IIT is a big thing. Right, sir. So, Yes, I will. yeah, so that cheerfulness, because everybody will be above 60, so Yes, you sir. either take energy from us or take marks from us. Yes, sir. So give energy. Okay, sir. Thank you, sir. I have nothing much to say. What were you doing in APT portfolio? So I was a quantitative researcher. So
It involves two things majorly. First is making strategies, financial models to automatically trade at high frequency of microseconds and nanoseconds. And second aspect is risk management, monitoring those strategies in live market and making parameter changes based on its performance. Is portfolio management using technology? Yes, basically data. And using algorithms, sir. Algorithms. Yes, sir. That is very good, excellent. You are fine. You just apply socio-economic aspects of India, poverty, issues like grassroots level problems of UP. Right. A state, developing countries problem, that agriculture, manufacturing, service sector, unemployment, disaster, Uttarakhand disaster, ecological problems. Yes. This kind of issue and international relation, whatever you read newspaper, related. That's it. Okay, thank you, sir. All the best. Thank you, sir. Shubham, when we were talking about the relationship of your domain knowledge with the civil service, and when I was asking you questions, yes, sir. I got a feeling that you were somehow trying to defend your decision. Yes. You see, it was becoming a little too apparent. See, if something is coming out of conviction, then it should appear so, because after all you did your BTech in 2020. Yes, sir. And now it is 5 years. So somebody can say that you have woken up to the beauty of the civil service after 5 years. And if you are so keen, then in the initial stage, why did you go for BTech to IIT? The nation has spent more than 1 crore of rupees on training you as an engineer. Yes. Now that money has gone waste. You see, so the answer has to be such that it looks convincing, not sort of trying to defend. Yes, sir. So think a little more about the way you will answer this in the board. I was just going to tell you two things. I think you are an excellent candidate, as I said. There are only two areas where you will get into trouble. One is on gender issues, because you started talking about joint family. If there is a lady chairperson, you will be hammered. Yes, sir. Okay, so don't ever get into the joint family. Right. Okay. Now, I gave you a clue also. I said most of the women don't want it. Sir. Yes. Now, because you see, now if I ask you to give 3 features which are accepted all over India, you can say something like Indian flag, Indian national anthem, the national anthem, the flag, cricket. These are things which are accepted. Right. So you think of something like that, because you said you're promoting national integration and you want to engage yourself in nation building, and so be careful with your answer. That's one area you might get into trouble. The second is, as was mentioned by the honorable member, you are trying to push your engineering knowledge beyond limits. Trying to say that I'll be able to use this wherever I go. Yes. It's not going to happen that way. You must have seen your father working in the bank. Okay. Most of government work is doing work without any expectation of rewards. Yes, sir. Okay, so don't think that they'll put you into the right ministry at the right time for you to contribute to something. Okay, sir. You might be the best person to develop DeepSeek in India, but then you may not get a chance. You may be posted in some vague subdivision in Uttar Pradesh. So that will not help you. Right. So you must be able to clearly state as to how engineering knowledge will be useful in the civil service. Apart from this analytical and logical part, you said, to make me a better person, I can think logically, I can analyze well. That's fine. Apart from that, because you are, as was mentioned by my colleague, we are both batchmates actually. So he was clear. He said you are from IIT, so naturally the expectation will be much higher. Yes, sir. So what was your rank in JEE? 19. 19, Yes, All India 19. Yes, sir. So the expectation will be there. Yes, sir. Okay, so coaching also you must have taken quota and all that. From my hometown only, sir. Okay, whatever it is. So about coaching also you can expect some questions. So the engineering part, you be careful. Okay, sir. So don't overstretch it.
So, you say after working so many years of engineering, Yes, sir. you wanted a change. It seems to be a good service, and you have every. He worked only for 3 years. eligibility. He worked only for 3 years. What is it? He worked only for 3 years. Ah, He's been an engineer only for 3 years. 3 years. Yes. So I worked for 3.5 years. 3 years, whatever. So you have taken a decision, yeah, Yes, sir. to get a career change because you feel that is the best place where you want to. Yes. You have gained enough experience in engineering. There is nothing stops you. You write a proper answer to this. Okay, sir. Why you want to be in IAS after whatever, with so much salary, why you want to change. Yes. I think so. You have to come back with a good answer. Think of it, discuss with your father, then come back. All the best. So, anything else? Yes, I have a few questions. So, sir, regarding the engineering aspect and governance. So, sir, if I'm not posted in the IT sector, for example, so how should my answer be? Because technology can be. Simply say that engineering gives me analytical capability. Bas, Okay. I know how to divide a problem into parts and solve. solve it. Without computers उसने and तो without he mentioned that. yes, But sir. That's all. Don't have to say anything else. any department, sir was listing 57 departments. Everywhere computerization is there. Yes. Taxation, it is all integrated data communication. Yes, sir. Direct and indirect taxes networked, Right, sir. exchanged the data, big, anyway. see, there is a lot which can be done in the area of computerization and data processing. Not only, it's not necessary that you have to be in the IT department. Right, sir. Even as a DM, SDM, let's say you are in secretariat, you can, if you are in the finance department, you can do something about the budget computerization. If you are in the field, you can do something about last mile connectivity. You can make sure that more people get access to government services through a e-center and electronic, something like that. Right, sir. So you will have to broaden your vision and think of the possibilities. Yes. Don't say that I'll be doing coding and sitting as a DM or a ADM. Yes. That's never going to happen. Right. That's what I'm trying to say. Yes, sir. You may not get that opportunity at all. Right, sir. Okay. Yeah, thank you. Thank you, sir. Anything else? Nothing, sir. Regarding my body language. The language is good. I mean, I think you moved your hands quite well, and only thing is you'll have to shave your beard. So actually, the photo that I have given, that has the beard, so I'll have to maintain the same. No, I'm told, somebody told me a couple of days back that they don't have to necessarily conform to the photograph. That's what the UPSC seems has relaxed the norm. But I don't know whether that's No, true. sir. From last year only it has come. Correct, but I was told only 2 days back. So if that's true, then you can check up and you can have this, Yes, you sir. can probably alter your looks. Anyway, from my common sense says that even if you shave, they will not reject you for if you are eligible. And don't unbutton here. You come From there only. Yeah, come outside. Whether you are comfortable in buttoned or unbuttoned, you decide and come that way. Yes. That's distraction. But Unnecessary. hair has to be combed. It looks very. Yes, I will. And the tie should cover the buckle. Yes, sir. Tie. Belt. Belt. Will you start? You're a very good candidate. You will make it. You properly focus. Yes. Tell you. Okay. All the best. Thank you, sir. Thank you so much. I'll just ask you. Sir, Hindi. We will allocate all our time.
Yes, sir. Please ask questions on Hindi literature. On Buddha. But the more I read, I enjoy it more. I think really shooting past, going beyond 6. Candidates coming, come. पुश May I come in, sir? Come in. Good evening, sir. Indian. बैठे. Okay, sir. Thank you, sir. यो मिस वर्षा. Yes, sir. अच्छा, आप कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश से हैं? जी सर, मध्य प्रदेश अच्छा, के और आपके प्रेफरेंस जो मैं देख रहा हूँ, पुलिस सर्विस आपका पहला नंबर, जी सर। फर्स्ट प्रेफरेंस है. तो पुलिस सर्विस में ऐसा मतलब क्या खास बात है तो आप प्रेफरेंस नंबर 1 में उसको रखा है? सर, इसमें मेरी खुद की एक व्यक्तिगत आकांक्षाएं, मेरी पर्सनालिटी और दूसरा जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, सर ये तीनों मेरे मेन कारण रहे हैं इसके प्रति रुचि के. अगर सर मैं इसका जो शुरुआती पॉइंट बताना चाहूँ तो एक सीरियल आता था मेरे कॉलेज के समय पे, दिया और बाती हम, उसमें जो संध्या राठी का जो आईपीएस का कैरेक्टर था, तो सर उसकी जो इंटेलिजेंस थी उसने मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया था. उसके साथ ही सर जो तो आप फील्ड में काम करना चाहेंगे? यस सर. नॉट एज इंटेलिजेंस ऑफिसर जो रॉ में या आईबी में, ऐसा नहीं? नहीं सर, मैं अपॉर्चुनिटी इस चीज़ को चाहूँगी कि मुझे मिले, आईपीएस के थ्रू मैं आगे बढ़ूँ और मुझे ये अच्छा होगा मेरे लिए कि मुझे इन फील्ड में काम करने का अवसर भी मिले. अच्छा, अभी जो ज़्यादा विमेन अभी वर्क प्लेस में आ रहे हैं, तो इसलिए इसका कारण क्या हो रहा है? इसलिए क्या हो रहा है कि मतलब विमेन सेफ्टी हैज़ बिकम एन इशू. यस सर. तो विमेन सेफ्टी को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकती हैं एज ए एसपी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट? यस सर. सर एज ए एसपी अगर मुझे वुमेन सेफ्टी को अगर बढ़ाना हो तो मैं 2 फ्रंट पर कार्य करना चाहूँगी. सबसे जो पहले कानून व्यवस्था के स्तर पर कि उसे बेहतर किया जाए, जैसे कि कैसे? जैसे कि सर पेट्रोलिंग डेली के बेसिस पे किया जाए, सार्वजनिक प्लेसेस पर सीसीटीवी कैमरेज हों. इसके अलावा सर जो दूसरा मेरे द्वारा किया जाएगा कि जो भी आपराधिक वहाँ के तत्व हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया जाए. कुछ एक निर्भया स्क्वाड का निर्माण किया जाए, एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड का निर्माण किया जाए. इसके साथ ही सर जो स्कूल कॉलेज में लड़कियां हैं उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जाए. इसके साथ ही सर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे जिले की महिलाओं को, जो प्रमुख हैं, प्रधान हैं, उन सबको जोड़ा जाए ताकि अगर कोई भी समस्या. ये सब आप करेंगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई पुलिस स्टेशन में आता है कंप्लेंट लेके, यस सर, आपके जो ऑफिसर हैं पुलिस स्टेशन में वो रजिस्टर ही नहीं करता, तो उस पर मतलब आप क्या कर सकती हैं? सर इसके आपको पता भी नहीं चलेगा. सर इसके लिए सर जितना मुझे जानकारी है कि एज ए एसपी डेली बेसिस पे सारे थानों की रिपोर्ट ली जाती है कि उनके द्वारा कौन कौन से केसेस लाए गए हैं या उनका कैसे सॉल्यूशन किया गया है. तो सर मैं डेली बेसिस पे उसकी जानकारी लूंगी. इसके साथ ही अगर कोई ऐसा इशू होता है कि किसी महिला की कंप्लेन, विमेन को ज़्यादा मतलब संख्या में आप पुलिस सर्विस में मतलब पुलिस फोर्स में भर्ती करने से ये प्रॉब्लम का आप सॉल्व कर सकती हैं क्या? यस सर. इससे जो पुलिस की सेंसिटिविटी का लेवल है वह जरूर इंक्रीज होगा और इससे कहीं ना कहीं सर फायदा होगा. 1-2 स्टेट्स में ऑल विमेन पुलिस स्टेशंस भी वो उन्होंने स्थापित किया है. ऑल विमेन पुलिस स्टेशंस के बारे में आपका राय क्या है? सर स्टेट्स की मुझे जानकारी नहीं है कि किस स्टेट ने यह इनिशिएटिव लिया है, किंतु अगर ऑल महिला पुलिस स्टेशन अगर स्थापित किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं यह महिलाओं में विश्वास को बढ़ाएगा. उनकी जो पुलिस तक पहुंच है उसको भी कहीं ना कहीं उत्साहित करेगा, उन्हें प्रोत्साहित करेगा ताकि वह वहां पर जाएं. और कहीं ना कहीं सर यह सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेसिटी है उसमें भी फायदा होगा. सर ये डांस फॉर्म जो आपने ड्राफ्ट में लिखा है कि गंगोर डांस, यस सर, ये क्या है? डांस फॉर्म क्या है?
सर यह जो डांस है ये मुख्यतः राजस्थान और मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में एक गणगौर फेस्टिवल होता है उस समय से परफॉर्म किया जाता है। सर अगर इसका शुरुआत हम देखें तो ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर और माँ पार्वती का विवाह हुआ था तब माँ पार्वती 9 दिन के लिए अपने मायके आई थी। उसी के हर्षोल्लास स्वरूप इस त्योहार को मनाया जाता है और इसमें यह डांस परफॉर्म किया जाता है। बरंगा गांव से हैं। यस सर। बरंगा का क्या मतलब हुआ? सर मुझे इसके अर्थ की जानकारी नहीं है, मैंने खोजने का भी प्रयास किया पर मुझे इसका अर्थ अभी तक समझ नहीं आया। हरदा का क्या मतलब हुआ? सर हरदा का अर्थ एक अलग अलग संदर्भों में अलग अलग देखा जाता है। अगर सामान्यतः का अर्थ देखा जाए तो इसे एक अच्छे दिल वाला भी कहा जाता है और इसका नाम का जो अर्थ है वो एक हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध है हरदोल महाराज, उनके नाम पर यह सर नाम रखा गया था। चलिए अच्छी बात है। आपने दानिक्स को 8वीं प्रेफरेंस क्यों दी है? जी सर इसको 8वीं प्रेफरेंस देने का एग्जैक्ट ऐसा कोई रीज़न नहीं रहा है, क्योंकि प्रेफरेंस के क्रम में किसी न किसी को फर्स्ट सेकंड 7th 8th ऐसे देना होता था, इसके कारण 8th पे जाकर के दानिक्स को मैंने प्रेफरेंस दी है। मतलब ये रैंडम नंबर है? नहीं सर रैंडम नंबर नहीं है। क्योंकि ये ग्रुप बी सर्विस है, इससे ग्रुप ए में पहुंचने में आपको 16 साल लग जाएंगे। सॉरी सर मुझे इसका आइडिया नहीं है कि कितने साल उसको उसमें लगेंगे। चलिए भारत के बिजनेस के टर्निंग पॉइंट्स बताइए। 3 ऐसे टर्निंग पॉइंट जिससे भारत का बिजनेस में बहुत फर्क पड़ा। यस सर। सर जो फर्स्ट एक टर्निंग पॉइंट होगा हमारा उदारीकरण की जो हमने 1919 के दशक में नीति अपनाई थी, एक सर वह है। इसके अलावा सर जो हमने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए कई सारे उपाय अपनाए, जैसे कि इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम, ईज ऑफ डूइंग को सुधार करने के लिए भी हमने टैक्सेशन जैसे जीएसटी। पहला आईपीओ कब आया था आपको पता है? सॉरी सर मुझे इसका आइडिया नहीं है। 1977 में रिलायंस का आईपीओ आया था। जी सर। और एक चीज़ आप भूल रही हैं, जो पहली गाड़ी इंडिया की जो बहुत चली थी, कौन सी गाड़ी थी? सर श्योर नहीं हूँ पर हीरो होंडा, सुजुकी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इतना कुछ इंडिया आगे आ गया है, कौन सी गाड़ी आई थी? सॉरी सर। मारुति 800। जी सर जी सर। 1983 में आई थी। जी सर। तो मारुति भी हमारे देश के प्रगति में बहुत बड़ा मील का पत्थर था। जी सर। ठीक है, और कोई चीज़ आपको याद आती हो? सर इसके अलावा जो टैक्सेशन के सुधार हम लगातार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, जैसे कि जीएसटी को लाना। सर मैं अभी यही सोच पा रही हूँ। कोई ऐसी योजना बनाई गई है जो रेडी लगाते हैं उनके लिए? यस सर। क्या योजना है? सर मैं उसका नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मुझे उसकी जानकारी है पर मैं फिलहाल उसको रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कितने लोगों को उसमें लाभ दिया गया है? पीएम स्वनिधि। जी सर थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा आप गांव की हैं? यस सर। तो आपके पास गांव में रहने की जगह है, रिहायशी जगह है? यस सर। है ना? जी सर। कितनी है? सर इसका एग्जैक्ट मान लीजिए 500 गज है। यस सर। उसका कोई आपके पास कागज है? जी सर। क्या कागज है? सर मुझे इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि उसमें स्टाम्प होते हैं या फिर क्या उसकी। स्टैम्प तो तब आता है जब हम जमीन बेचते हैं, तब स्टाम्प पेपर पे लिखते हैं। यस सर। मूल कागज क्या है? सर प्रॉपर्टी पेपर्स क्या रहते हैं? सॉरी सर मुझे उसका आइडिया उसकी नहीं एक योजना बनी है, स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना। जी सर। उसमें अभी प्रधानमंत्री जी ने बांटे हैं। यस सर। तो अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने कौन सी जमीन के कागज बनाए थे या डाटा बनाया था? सर एग्रीकल्चर लैंड्स के। एग्रीकल्चर लैंड का। जी सर। जो लाल डोरा कहाँ से आया? सॉरी सर मुझे आइडिया नहीं। जो रिहायशी जमीन थी, अंग्रेजों ने छोड़ा कि यहाँ, सोचा यहाँ से हमें लगान नहीं मिलना, तो उस पर लाल गोला लगा करके छोड़ दिया।
ये तो बेकार है, लगान के पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार थी, बात ठीक थी उनकी। जी सर। इसलिए उसको लाल डोरा कहते हैं। और वो जो जमीन के कागज हैं वो स्वामित्व योजना में बनाए गए, और अभी प्रधानमंत्री ने बांटे थे कागज। कितने कागज बांटे थे? सर 10 लाख या 10 करोड़, सॉरी मैं एग्जैक्टली श्योर 65 लाख बांटे थे। जी और सर। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि इससे लोगों को कितनी धनराशि की स्वामित्व हो गया उनका। कुछ आपको याद है कितनी फिगर बोली थी? सॉरी सर। 169 लाख करोड़ जी सर। कि उनकी संपत्ति के स्वामित्व में उनके पास अब कागज आ गए। जी सर। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी से बताइए, लोगों के जीवन पे क्या फर्क पड़ेगा? सर सबसे पहला जो फर्क होगा कि वह उस जमीन के कागज के बेस पे ऋण ले सकते हैं। इसके अलावा जो कोर्ट्स के में कचहरी में जो मुकदमे चल रहे हैं उसकी संख्या में भी कमी आएगी, और कहीं ना कहीं उनका जो आत्मविश्वास है, एक जो संसाधन पे उनके जो अधिकार होना चाहिए, संपत्ति का अधिकार, सर वह भी उन्हें मिलेगा। और वो व्यक्ति शहर में शिफ्ट कर जाता है तो भी उसकी जगह सुरक्षित हो जाती है। यस सर। ठीक है। हाँ जी। जो वर्तमान में भारतीय पुलिस का स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है, और जो ब्रिटिश पीरियड में जब कॉलोनी थी भारत, तब जो स्ट्रक्चर था, दोनों में क्या फ़र्क है? सर जो मुख्य फ़र्क मैं समझ पा रही हूँ, एक तो उनके उद्देश्यों में फ़र्क आया है कि कॉलोनाइजेशन के टाइम पे जो पुलिस थी वो मुख्यतः नियंत्रक का रोल निभाती थी। नियंत्रक का रोल सर। और वर्तमान में जो पुलिस है उसका जो मुख्य भाव है वह सेवा भाव है। तो सर कहीं ना कहीं तो पुलिस जो है यस सर, वो किस आधार पे काम करती है, क्या बेसिस है पुलिस के काम करने? मान लीजिए आप जिले की एसपी हैं, यस सर, तो आपके फंक्शनिंग जो होगी, जो काम करेंगी, उसका बेस क्या होगा? सर मेरी फंक्शनिंग का बेस जो भी नियम कायदे कानून जो बने होंगे उसके बेस पे। ठीक है, नियम कायदे कानून जो बने होंगे। यस सर। तो वो कौन से नियम कायदे कानून हैं और वो कब बने थे? सर वर्तमान में जो 3 लॉज लाए गए हैं, जैसे कि भारतीय न्याय वो तो ठीक है। जी सर। उनका आधार क्या है जो 3 नए आए हैं? यस वो सर। नए बनाए गए हैं या कि कोई पुराने को नवीकरण किया गया है? सर इसमें जो पुराने कानून थे वो कब बने थे? सर जैसे आईपीसी था वह सर मैं उसके ईयर के बारे में श्योर नहीं हूँ, पर आईपीसी 1961 सब 19वीं शताब्दी में बने। यस सर। तो उस वक्त तो अंग्रेजों ने बनाए थे जब भारत कॉलोनी थी। तो आज भी आधार तो वही है ना, थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। तो आपने जो कहा कि पहले नियंत्रण का रोल था और अब सेवा भाव का हो गया, जी सर। तो कैसे सेवा भाव हो गया? वो तो मूल स्ट्रक्चर तो वो ब्रिटिश वाला ही है। यस सर। सर उसका मूल स्ट्रक्चर जरूर ब्रिटिशकालीन है, किंतु उसमें कुछ परिवर्तन ऐसे किए गए हैं। क्या परिवर्तन? जैसे कि सर सार्वजनिक जो सेवा का भाव दंड है उसमें डाला गया है, वो कहीं ना कहीं। क्या सार्वजनिक सेवा का भाव डाला गया? सर सार्वजनिक सेवा इन द सेंस कि अगर किसी का ने कम स्तर का अपराध किया हो या उसका पहला अपराध हो, तो उसे जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट करना या फिर किसी स्थान की साफ सफाई करना, जैसे तरीके एक सार्वजनिक उसमें वैल्यू डेवलप करना, उसमें सुधारात्मक जो एक उपाय। मेन काम क्या है पुलिस का? एसपी का मेन काम क्या है? सर एसपी का मेन कार्य अपने जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। और डीएम का? सर डीएम का मुख्य कार्य सर वहाँ की जो सिविल न्याय प्रणाली है, सॉरी सर, जो सिविल न्याय प्रणाली, सॉरी सर, मुख्यतः जो योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करना, राजस्व संबंधी कार्य, और कहीं ना कहीं सर कानून व्यवस्था का बनाए रखना, और सभी विभागों कानून में व्यवस्था तो आप कह रहे हैं एसपी रखेंगे तो डीएम भी रखेंगे। ओवरलैपिंग? सर ओवरलैपिंग नहीं, यह मुख्य कार्य एक तरीके से पुलिस व्यवस्था का होता है, पर कहीं ना कहीं इसमें जो सहयोगी भूमिका होती है वह डीएम की भी होती है। सहयोगी? एसपी की सीआर कौन लिखते हैं? सॉरी सर, मुझे डीएम लिखते हैं। जी सर। तो जो सहयोगी होता है वो सीआर लिखता है कि बॉस होता है वो सीआर लिखता है? सॉरी सर, मैं सीआर वर्ड से ही अवगत नहीं हूँ। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट? जी सर। कौन लिखता है? सॉरी सर,
मुझे अवगत नहीं हूँ उस चीज़ से। बॉस लिखता है। जी सर। अच्छा अच्छा वर्षा जी, जी सर। आप ये शायरियाँ गुलजार साहब का शायरियाँ के बारे में पता है? गुलजार सर की? हाँ। जी सर, मैंने सुनी भी है। जी सर। उनको कब साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला और ज्ञानपीठ मिला है ना? यस सर। कब मिला? सर मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रही हूँ हाल ही कुछ वर्षों में मिला है, किंतु मैं 2024 या 23 में मिला है। यस सर। उनका एक शायरियाँ बताइए। आप डांस भी करती है? यस सर। हाँ बताइए कोई शायरियाँ। जी सर, मुझे कुछ समय चाहूँगी सोचने के लिए। ज्यादा टाइम मत ले लो। सॉरी सर, फिर रिकॉल नहीं कर पा आप हिंदी साहित्य किया है ना? रही। यस सर। ये राग दरबारी सुना? जी सर। उसमें वो कहानियां अभी भी वास्तविकता में होता है क्या इन मध्य प्रदेश में? अभी विलेज में जाए, आपका हाड़ा में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, फिर विलेज में जाए, ये राग दरबारी का वो जो लिखा है, ऐसा कहानियां होता है, रियल में होता है? सर मैंने राग दरबारी को अभी पढ़ा नहीं है, तो पढ़ा नहीं, वो सिलेबस में नहीं है इसलिए पढ़ा नहीं। जी सर। अभी जयपुर में कुछ हो रहा है साहित्य के बारे में, कुछ पता है जयपुर में क्या हो रहा है? सॉरी सर, मुझे वो लिटरेरी फेस्टिवल है, उधर अमेरिका में नोबेल प्राइज, इंडियन अमेरिकन को नोबेल प्राइज मिला है। वो वेंकी रामकृष्णन आके अपना भाषण दिया है साहित्य के बारे में। जी सर। आप पढ़ते नहीं है ये सब चीजें क्यों? सॉरी सर, मैं न्यूज़पेपर सॉरी से नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। जी नहीं? सर। जी मैं सर। पढ़ूं, आप पढ़ो, मैं पढ़ूं? सर मैं मानती हूँ कि मुझे पढ़ना आपको पढ़ना है, मैं तो कोई एग्जाम नहीं है मेरा। जी सर। मेरे को आप पढ़ाई करवाते हैं। अभी गोदान में आप क्या समझते हैं? गोदान सब आपने पढ़ाई किया है, मेरे को पता है। जी सर। उसमें क्या सीखा आपने? सर गोदान में जो सबसे बड़ी सीख मिलती है, हाँ। वह जो हमारे वंचित वर्ग हैं, जिसमें उन्होंने मुख्यतः किसानों पर फोकस किया है, उनके प्रति जो उन्होंने सेंसिटिविटी दिखाई है, जो ग्राउंड लेवल पे वो कौन कौन सी चुनौतियां फेस करते हैं, किस तरीके से क्या चुनौती फेस किया? अपना भाई से अपना गाय को मार दिया उसने, क्या चुनौती है वो? मेरे को समझ नहीं पा रहा है। अपना खुद का भाई अपना गाय को पॉइजन कर रहा है, तो उसमें क्या चुनौती है? सर उस चुनौती यही थी कि उसमें जो होरी जो एक मुख्य पात्र था, उसका जीवन का एक मुख्य उद्देश्य ही था कि वह गाय खरीदे, किंतु जब उसने गाय खरीदी तो उसके भाई जो हीरा था, वो जलन के बेस पे उसने उसके मार दिया था उसे। तो कहीं ना कहीं सर उसकी जो एक इच्छा थी, वह भी एक अपनी जो एक तरीके से जलन बोल सकते हैं, या दूसरी तरीके से फिर उसकी जलन ही है, जलन ही वो जलन लिखा है, वो तो क्लियर है। यस सर। हाँ, बोलो। तो सर अभी आप IAS हो जाएगा तो कोई जलन होता है? आपका सिस्टर को जलन हो के आपको कुछ गड़बड़, आपका एग्जाम का पेपर सब उल्टा करेगा, आपको जाने का दिन आपका साड़ी चोरी करके आपको तकलीफ देगा, वो वही अच्छा है? नहीं सर, ये कहीं से भी अच्छा नहीं है, और चूंकि व्यक्तिगत स्तर इससे आप क्या सीखते हैं? यही मेरा क्वेश्चन वही है। Yes, आप क्या सीखेंगे ऐसा कहानी में? सर अगर इसी संदर्भ को देखा जाए होरी और हीरा का, तो कहीं ना कहीं यह हमें दिखाता है कि हमें किसी भी दूसरों की खुशियों से कभी इस तरीके का मतभेद या फिर जलन का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंत में जाकर के होरी को इसमें पछतावा भी हुआ था। तो सर यहाँ से यही होरी को पछतावा, सॉरी सर, हीरा को पछतावा हुआ। हीरा को पछतावा होगा, बट होरी ने उसको बचा दिया। यस सर। नहीं, वो है हमारा पॉइंट। होरी ने क्यों हीरा को इतना तकलीफ देने वाले को अपना भाई समझ के फिर बचा दिया? वो आप क्यों नहीं बोला? यस सर, वही है अच्छा चीज। यस सर। अपने को इतना तकलीफ दिया फिर भी अपना भाई को बचा दिया। जी सर। वो अच्छा लगा मुझे। जी सर। आपको अच्छा नहीं लगा? जी सर, वो बहुत अच्छी चीज थी। उसकी मानवीय चेतना की जो एक अपर स्तर होता है, वो उसको दिखाता है। अभी आप बताइए, इंडिया का फार्मिंग कम्युनिटी में यही तकलीफ अभी भी है क्या?
जी सर, यह कहीं ना कहीं गाँव में। आप अपना गांव के बारे में, मध्य प्रदेश में लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म भी है, माओइज्म भी है, यस सर। नक्सलिज्म भी है। जी सर। उसमें ऐसा गरीब का जीवन में ऐसा समस्या अभी भी है क्या? जी सर, यह कहीं ना कहीं हमेशा हर जगह ही मौजूद होती है, चाहे वो किसानों का एरिया हो या फिर कुछ नक्सलिज्म या गरीबी का क्षेत्र हो। जो एक हर प्रकार के जैसे इंसान पाए जाते हैं, कोई एक अच्छे इंसान भी होते हैं। आप फार्मर्स का सुइसाइड के बारे में पढ़ाई किया है कभी? फार्मर्स सुइसाइड यस सर। कहाँ पे होता है? सर फार्मर सुसाइड जो मैंने अभी देखा है कि सबसे ज़्यादा फिलहाल में कर्नाटक की न्यूज़ आई थी, जहाँ पे फार्मर सुसाइड भी बहुत ज़्यादा मात्रा में देखे गए थे। और कहीं ना कहीं सर ये महाराष्ट्र में नहीं है? यस सर, महाराष्ट्र में भी है और लगभग जहाँ। आपका मध्य प्रदेश में नहीं है? सर मध्य प्रदेश में भी है यह समस्या। डेट में डूबता है? यस सर। वो सब आपका ये कहानी में है, ब्रिटिश पीरियड में हो रहा है, ये सब होता था। यस सर। अभी भी हो रहा है। जी सर। यही आपको सीखना है। यस सर। अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के आप क्या करेंगे वो आपको बताना है। यस सर। अभी मेरे को नहीं बताना, बाद में आप सोच लें। जी सर। सर थैंक यू सर। वर्षा जी सर। साहित्य, यस सर। तो बहुत सारी कवियत्री हुई हैं हिंदी साहित्य में, जी सर। आपकी पसंदीदा कौन सी हैं? सर कवित्रियाँ जैसे कि मन्नू भंडारी, एक सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा जी, ऐसे कई सारी लेखिकाएं हुई हैं। इनमें अगर जो मेरी सबसे फेवरेट मैं बताऊं तो मुझे महादेवी वर्मा जी सबसे अधिक पसंद है। अच्छा, कवि और कवियत्रियों ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा योगदान निभाया। यस सर। कुछ बता सकती हैं इसके बारे में? यस सर। सर जो हमें कवित्रियों के स्तर पे देखें तो जैसे महादेवी वर्मा जी ने भी स्वयं लिखा है कि जाग तुझको दूर जाना, तो इस तरीके से उन्होंने जो आम जनता थी उन्हें भी प्रोत्साहित किया है। इसी तरीके से रानी लक्ष्मीबाई जी ने, जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर जो कविताएं लिखी थी कि तो सर उन्होंने भी कहीं ना कहीं महिलाओं से लेकर के हमारे जो गौरव को आगे बढ़ाया था। आपको क्या लगता है भाषा का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान रहा? जी सर, भाषा का राष्ट्र निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि भाषा हमेशा एक संचार का माध्यम होती है, तो यह पूरे देश को, क्षेत्र को एकीकृत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सर जो एक राष्ट्रवादी चेतना होती है उसको भी प्रसारित करती है। साथ ही सर अगर कोई हमारे समाज में कमियां हैं, कुरीतियां हैं, तो उन्हें भी साहित्य के माध्यम से या फिर नारों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से ही प्रसारित किया जाता है। ठीक है। अब बीएससी आपने किया? जी सर। भौतिकी, यस एक प्रश्न भौतिकी से। जी सर। न्यूटन का दूसरा सिद्धांत बताएं। सर न्यूटन का दूसरा सिद्धांत संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है, बढ़िया है। जी सर। एक बहुत वैज्ञानिक हैं, ऐसी इकलौती वैज्ञानिक जिनको भौतिकी और रसायन शास्त्र दोनों में नोबेल प्राइज मिला, कौन है वो? सॉरी सर, मुझे इसका आइडिया नहीं है। बिल्कुल पता होना चाहिए ये तो। जी सर, मैं जरूर पता करूंगी इन्हें। चलिए, बिल्कुल पता कीजिएगा। जी सर। आप यात्रा करती हैं? यस सर। कहाँ? सर यात्रा मैंने अभी तक लगभग 7 से 8 स्टेट में की है, और सर इसका कोई ऐसे स्पेसिफिक मेरा पॉइंट नहीं होता है। मैंने आध्यात्मिक से लेकर के प्राकृतिक, ऐतिहासिक लगभग सभी स्थानों पर जहाँ तक संभव हो सका है मैंने यात्राएं की हैं। आप कोई एक ऐसी यात्रा बताइए जहाँ आपने तीनों जो आपने बताए, यस सर, सारी जगह एक जगह पर गए, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक और प्राकृतिक। सर इसके लिए मैं फिर सांची के स्तूप का नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि जो सांची के स्तूप का। आखिरी प्रश्न, सांची के स्तूप होता क्या है? सर स्तूप एक तरीके से जहाँ पे अवशेषों का संग्रह किया जाता है। सर ये किसी के भी हो सकते हैं, जैसे कि जो वैदिक काल थे उस समय भी संरक्षित किया जाता था, और जो मौर्य काल थे उस समय जो भगवान बुद्ध थे और उनके जो शिष्य थे उनके अवशेषों का संग्रह किया गया है। ठीक है वर्षा, धन्यवाद। जी सर, थैंक यू। एक एफआईआर और चार्जशीट दोनों में क्या फ़र्क है? सर एफआईआर तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है जो सबसे पहले दाखिल की जाती है। सर और चार्जशीट शायद उसके पश्चात कोई एक्शन होता हो, पर सर मैं श्योर नहीं हूँ। चार्जशीट के बारे में आपको पता नहीं, उसके बाद क्या होता है? सॉरी सर। एक एफआईआर दी जाती है, उसके बाद क्या होता है?
सर एफआईआर के बाद अगर मैं सही हूँ तो उसकी जो जांच पड़ताल करने के पश्चात एक जो पूरी समरीज तैयार की जाती होगी वो चार्जशीट कहलाती होगी, जिसे फिर कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता हो। सर मैं यही समझ पा रही हूँ। अच्छा, और पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी के बीच में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या अंतर है? सर मैं श्योर नहीं हूँ, किंतु मैं अनुमान लगा सकती हूँ। बिल्कुल सर पुलिस कस्टडी जहाँ पुलिस के अंतर्गत कस्टडी में रखा जाता हो, और जुडिशियल कस्टडी जब कोर्ट इस चीज़ की परमिशन दे हो या फिर आदेश दे कि इसे फिर कस्टडी में रखा जाए, तो शायद सर उसे जुडिशियल कस्टडी कहा जाता हो। नहीं, पुलिस कस्टडी के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति ज़रूरी है क्या? सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। अच्छा, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। तो अब इंटरव्यू ख़त्म हुआ है। जी सर। तो आपके जो इरादे जो हैं ना बहुत ही नेक हैं, यस सर, अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा जानकारी में कमी है। पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में आपको जानकारी मतलब और ज़्यादा होनी चाहिए। यस सर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज पुलिस डिपार्टमेंट अगर आपको पुलिस सर्विस चुनना है, यस सर, नेचुरली यू शुड हैव बेटर नॉलेज। ओके सर। और दूसरा इकोनॉमिक मैटर्स, फाइनेंशियल, बजट वगैरह आप मतलब उस वाकिफ़ हैं क्या बजट से? सर अभी मैंने इसको नहीं देखा है, पर मैं पिछले साल का बजट मालूम है आपको कितना था? नहीं एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू रसीट्स कितना? नहीं सर, मुझे पिछले साल तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि आपका इंटरेस्ट सिर्फ मध्य प्रदेश और जो बॉर्डरिंग इलाके वो है बस उस पर मतलब उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। ये फीलिंग आता है आपसे मतलब बात करने के बाद। जी सर। ये लगता है कि थोड़ा सा आपको ये ब्रॉड बेस्ड नॉलेज नहीं है। ओके सर, मैं इसे सुधारूंगी अभी। जैसे आप बोल रही थी ट्रैवलिंग के बारे में, कहाँ गई आप? तो मतलब आप मैं सांची स्तूप तक गई। यस सर। ये क्या हुआ, आप मध्य प्रदेश में ही है बस, कहीं बाहर तो नहीं गई? नहीं सर, मैंने जैसे एक स्थान का सिलेक्शन करना था तीनों के अनुरूप, तो मैंने आप मध्य प्रदेश से बाहर कहीं नहीं गई? गई हूँ सर मैं। कहाँ पे? सर उत्तराखंड, राजस्थान। तो फिर वो बताइए, थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। यस सर। हाँ, ये बताइए कि ये सिर्फ आप सांची स्तूप कहाँ दूर, कितना दूर है आपके यहाँ से? यस सर, मैं दूसरा स्टेट अब वो भी बताइए। जी सर। और थोड़ा ये जानकारी बढ़ाइए। जी सर। और पुलिस मैटर्स में यू शुड नो द डिफरेंस, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, चार्जशीट, ट्रायल, कन्विक्शन, एक्विटल, कस्टडी, पुलिस कस्टडी क्या है, जुडिशियल कस्टडी। यस सर। तो बेसिक पॉइंट्स यू शुड नो। ओके सर। ऐसा नहीं कि आप पुलिस ऑफिसर बन जाएगी, आप तुरंत किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, ऐसा नहीं है। यू हैव टू फॉलो द रूल ऑफ लॉ। कानून में लिखा है उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। जी सर। तो दैट फीलिंग शुड बी आउट ऑफ योर माइंड, ओके, दैट यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट। आई एम श्योर यू विल नॉट से दैट। मैं सिर्फ आपको सावधान कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। यस सर। आप गुड कैंडिडेट। थैंक यू सर। पर पुलिस में आना चाहते हो और बाकी सेवाओं को छोड़ के आना चाहते हो, उसका कुछ स्पष्ट कारण होना चाहिए। जी सर। ठीक है, और थोड़ा सा आपके अंदर उमंग, उत्साह वो दिखना चाहिए। आपने कोई सीरियल देखा है इसलिए मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता, दैट इज नॉट अ गुड एक्सक्यूज। सर ये शुरुआती पॉइंट था, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहती थी। आप करिए, क्या बताइए। जी सर, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा शुरुआती पॉइंट इससे रहा है, उसके पश्चात सेकंड जो मेरा पर्सनालिटी है, जैसा मेरा एटीट्यूड और एक पुलिस ऑफिसर के रूप में जो साहस और संवेदनशीलता का गुण होना चाहिए वह भी मेरे भीतर है। अगर इसके सामाजिक कारणों को देखें सर, तो जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मैंने देखा कि अपने समाज में आसपास जो महिलाएं हैं वह कई तरीके के मेंटल और फिजिकल एक्सटॉर्शन का सामना करती हैं, किंतु पुलिस व्यवस्था में महिलाओं की संख्या कम होने के कारण कहीं ना कहीं उनकी पहुंच बाधित होती है। तो मैं सर उन्हें एक न्याय दिलाने और के पर्सपेक्टिव से एक सामाजिक जिम्मेदारी को भी फील किया। और इसके साथ ही सर एक पुलिस का एक मेन फीचर होता है कि वह इंस्टेंट रिलीफ देने का गुण रखती है। किसी के साथ भी कोई भी अन्याय होता है तो वह सबसे पहले पुलिस के पास जाता है। तो सर मैं यह सौभाग्य प्राप्त करना चाहती थी। आप बहुत ब्रीफ बनाइए आपका आंसर। यस सर। बहुत छोटा आप बोलो, मेरे को अच्छा लगता है पुलिस सर्विस, जी क्योंकि उसमें अन्याय का कुछ तो रोल है। यस सर। हाँ, जस्टिस आप दे नहीं सकते, बट आपको कुछ रोल है हेल्प करने का, उतना छोटा कर लीजिए आपका आंसर। यू वांट टू फिनिश? और कुछ आपको पूछना चाहते हैं आप, और कुछ बताना है आपको? न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर अखबार पढ़ते हैं ना? यस सर। वो सब पढ़ लीजिए, सोच के पढ़ लीजिएगा बस। जी सर। बजट बोला, बजट पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशन पता होना है। जी सर।
और कुछ पूछना है आपको? नहीं, इनको he has to give feedback. देखिए, जो आम धारणा है समाज में, वो पुलिस के प्रति लोगों की सिंपैथी नहीं है। लोग पुलिस को अपना मित्र नहीं मानते। यस सर। उसके ऐतिहासिक कारण हैं, यस सर। औपनिवेशिकवाद से। तो आप ऐसी सर्विस को ज्वाइन करना चाहती हैं, पुलिस को, जो कि लोगों की नज़र में उसे अच्छा नहीं मानते, बल्कि पुलिस से उल्टा जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का पद है या तहसीलदार का पद है या कलेक्टर साहब का पद है, वहाँ मिलने के लिए लंबी लाइन लगी रहेगी। जी सर। महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सबकी। क्योंकि जो IAS अफसर हैं, उनको सारे जितने भी सरकार के अंग हैं, महकमे हैं ज़िले में, उनको सबको वो कोऑर्डिनेट करते हैं, वो उसके मेट होते हैं, हेड। यस सर। तो मतलब जैसे त्रिवेणी संगम है ना, कि सब नदियाँ मिल गई, तो वैसे कलेक्टर जो हैं वो वास्तव में हर तबके के लोगों के लिए कार्य करा सकते हैं, जबकि पुलिस का क्षेत्र बस क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम इन्वेस्टिगेशन। तो जो जस्टिस की बात आप करती हैं, यस सर। वो जस्टिस का बहुत एक विस्तृत अर्थ होता है। कोई बूढ़ा आदमी है, उसको पेंशन नहीं मिल रही है, यस सर। किसी को ज़मीन नहीं मिल रही है, उसकी ज़मीन कोई छीन रहा है, तो वो रेवेन्यू कोर्ट जो है, वो कलेक्टर साहब उसका फैसला दे के उसके फेवर में ज़मीन करा सकते हैं, वो तहसीलदार साहब करा सकते हैं, SP साहब नहीं करा सकते। जी सर। समझे आप? और लॉ एंड ऑर्डर 144 धारा, पीस रहना, ये सभी चीज़ों का जो है वो, इसलिए थोड़ा पढ़ लीजिए। यस सर। भावना, मेरे को ऐसा लगा, क्षमा करेंगे, कि आप कुछ भावना से प्रभावित हो करके और अपने सर्विस की चॉइस दे रही हैं। पुलिस बहुत अच्छी सर्विस है, मैं ये कभी नहीं कहूँगा, यस सर। लेकिन उसको 1 नंबर और IAS को 2 नंबर देना, वो थोड़ा आपको और अध्ययन करना चाहिए। ये मेरी सलाह है आपको। दे चुकी है तो कुछ आप कुछ तो कर तो नहीं सकते हैं, जी सर। पर सोच समझ के जवाब दीजिएगा। नहीं बाद में नहीं ना। But she must have a good justification, argument. You must have a good logic. हाँ, and यस, answer. आपको Yes, कुछ sir. कन्विंसिंग देना होगा। जी सर। ओके ऑल सर। द बेस्ट। ओके सर। आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, आपको कुछ पूछना हो? सर, इस परफॉर्मेंस के बेस पे कितने नंबर का रेंज डिजर्व करती हूँ मैं? आप तो 175 to 180। ओके सर। आपको फीडबैक मिलेगा पूरा। फीडबैक मिल जाएगा। तो मैं तो आई विल टेल यू, सी यू आर वेरी गुड, बट योर जनरल नॉलेज आई एम वरीड। आपका जनरल नॉलेज कहाँ तक है? अब बजट नहीं जानती हैं, इकोनॉमिक मतलब देखिए, इंटरव्यू तो इट कैन गो इन एनी डायरेक्शन। यस सर। हाँ, इट मे नॉट बी ओनली लिमिटेड टू women's issues. ओके सर। If there is a lady chairperson, you will get very good mark. Maybe you will get 200. यस सर। But it may not go in that direction. It can go in some other direction also. It can go in the area of Madhya Pradesh tourism. यस सर। तो मान लीजिए, तो आपने तो लिखा है ट्रैवलिंग इज अ हॉबी। यस सर। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म में बता सकती हैं कि क्या क्या आप कर सकती हैं वहाँ मध्य प्रदेश टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए। इस टाइप का भी हो सकता है इंटरव्यू में। जी सर। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। जी सर। हाँ, यही है मेरा पॉइंट है कि आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट यू विल गेट लो मार्क्स, यू विल गेट वेरी वेरी गुड मार्क्स, बट इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन विच द इंटरव्यू विल टेक। Yes, So you have to be prepared for everything. Yes, sir. Are you understanding? So my only point is, if you want to enter police service, why? Yes, sir. You must have a very good argument. Okay. Now, police service, how you can improve the safety of women? जैसे आप बोल रही थी कि I was inspired by some serial. So now the point is, how can you improve the safety of women? उसके बारे क्या क्या measures what can be taken by the police? Okay, sir. Then law में इसके लिए क्या प्रावधान है? जी सर। वो भी मतलब anything about Domestic Violence Act, anything for विशाखा कमेटी, this POSH तो आप जानती हैं? Yes, sir. Prevention of Sexual Harassment Act.
Yes, all these things you must be thorough. Yes sir. So that is very important. तो इसके अलावा आपको मतलब आप बताइए और क्या चाहिए? सर फॉरेन सर्विस तो आपको मिलेगा नहीं, क्यों पुट इट वेरी आई थिंक एट 5th or 6th place. Yes sir. So naturally you are a very you want to remain within Madhya Pradesh. यही मुझे लग रहा है. नहीं सर, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है मुझे. जहाँ भी जिस भी स्टेट में जॉब मिलेगी मैं सभी दूर प्रेफर करूँगी. फिर वो जो फीलिंग है ना उसको दूर करना होगा आपको, जो आपके डैप से जो हमें नज़र आ रहा है ना उसको आपको दूर करना होगा. जी सर, मैं जरूर तैयार करूँगी इस चीज़ को. तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए. ओके सर. योर डैप इज गिविंग एन इम्प्रेशन दैट यू वांट टू बी वेरी क्लोज टू मध्य प्रदेश. और सांची स्कूप मत बोलिए. यू टॉक ऑफ उत्तराखंड, यू टॉक ऑफ राजस्थान, ऐसा कुछ बोलिए. यस सर. ठीक है. तो दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग. बट व्हेन इज योर इंटरव्यू? सर 7 फरवरी. तो दिस इज योर फर्स्ट इंटरव्यू? यस सर. हाँ, तो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग बताइए. और क्या यू थिंक 175 180 इज लो? यस सर, मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम 190 तो आ जाए. 190 के लिए तो यू हैव टू इम्प्रूव योर नॉलेज ऑफ पुलिस. यस सर. हाँ, तो जी सर. पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, FIR कुछ भी नहीं मालूम आपको. सर मैं बचे टाइम में जितना कुछ अपने लेवल पे कर सकूंगी मैं पूरा ट्राई करूंगी. See, I am telling you based on today's performance. जी सर. If it will help you, I will give 190. मुझे कोई इसमें no problem. But please understand, marks are not given like that. Marks are based on performance. जी सर. So I can understand there are some mistakes, there are some problems. Yes sir. You improve upon that. दो काम करो. तुम किसी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को जानते हो? नहीं सर, डायरेक्टली. रिटायर्ड SHO हो, इंस्पेक्टर हो, कोई पुलिस ऑफिसर को जानते हो? नहीं सर. कोई भी आप पढ़ सकते हैं. She can read. You read police reform. आप कहाँ रहती हो? सर फिलहाल तो अभी यहीं दिल्ली में रहती हूँ. बाकी मेरा जो होम स्टेट है वो MP. तो दिल्ली रहती हो तो पुलिस लाइन में जाओ. यस सर. वहाँ जा कर के उनका जो इंचार्ज होता है पुलिस लाइन का, उसको बोलो कि मैंने एग्ज़ाम में फर्स्ट चॉइस दी है, आप मुझे ज्ञान दीजिए, समझाइए पूरा. वो बता देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है. ठीक है? यस सर. हाँ, उनसे 1 to 1 पूछोगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा. No, you are a very good candidate. लीजिए. ठीक है. मैंने पहले ही बताया ना. और जो साड़ी पहन के जाओ उसका आपको पता होना चाहिए. आपका इंटेंशन वगैरह नेक है, यू आर वेरी गुड, वो सब है. बट थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन के लिए नॉलेज बेस की ज़रूरत है. जी सर. ओके सर. So don't feel bad. You still got time, no? You can read. पुलिस रिफॉर्म के बारे में पढ़ो, अपने आप सोच लो. आप जो देखा है पुलिस स्टेशन में सब, आप सीरियल में जो देखा है, इंटरव्यू कब है? 7 फरवरी. 7th है. लाइक कस्टोडियल डेथ. 7th है क्या आपका? कस्टोडियल टॉर्चर, कस्टोडियल रेप. सर ने बोला क्राइम NCRB डेटा में क्राइम है. विमेन्स क्राइम आपको बहुत दुख देता है, इसलिए आपने पुलिस सर्विस में आना चाहते हैं, क्योंकि विमेन्स क्राइम बहुत ज़्यादा है, सब जगह में है. यस सर. निर्भया केस हो गया, उसके बाद भी अभी कलकत्ता में हुआ. ऐसा कुछ कहानी 2-3 सेंटेंस में बनाइए. आप ये सब चीज़ें पढ़ो. क्राइम अगेंस्ट विमेन, जो एक्ट, ये सब पढ़. मुझे किरण बेदी से जैसा मैं बोल रहा था मिली. हाँ, आप ठीक है. जैसे मैं बोल रहा था, पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं. जैसे मैं बोल रहा था, आपको अगर लेडी चेयरपर्सन वहाँ पे है UPSC में, आपको 200 जरूर मिलेगा. 200 मार्क्स, 200. ओके सर. इन केस इट इज नॉट अ लेडी, सपोज एन आर्मी पर्सन इज देयर, राज शुक्ला भी है वहाँ पे, कोई भी है. यस सर. तो सपोज इट्स समबडी एल्स, देन दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट पुलिस. यस सर. तो देयर आर समथिंग एल्स. तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा. यू डोंट नो विच बोर्ड यू विल गो टू. यस सर. दैट इज व्हाई आई एम क्वेश्चनिंग यू. एक और काम कर लीजिए. होम मिनिस्ट्री का वो वेबसाइट देख लीजिएगा. यस सर. होम मिनिस्ट्री का. जी सर. उसमें है BPRND, फॉरेंसिक साइंस, सब के बारे में है. इंटरनल सिक्योरिटी, लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म, वो सब पढ़ लीजिए आप. Most importantly, you have to remember you are not a police officer for women. You are a police officer for the people. Yes sir. That includes men, women, children, everybody. Yes sir. ठीक है. तो while you can focus on women, I have no problem. Yes sir. You cannot be entirely focused only on women. Yes sir. Then that will give another wrong slant. You understand? वो कह के biased हैं.
ओके सर। बायस नहीं होना, ऑफिसर हैज टू बी न्यूट्रल, Yes, sir. इम्पार्शियल। लॉ इम्प्लीमेंटेशन, लॉ इज इक्वल फॉर मेन एंड वीमेन ना। यस सर। मान लीजिए अब अतुल सुभाष का केस तो आपको मालूम होगा, जी सर। तो उसमें उसके बारे में आपका राय क्या है? सर उसमें यही राय है कि जो कानून है उसका महिला के द्वारा जो दुरुपयोग किया गया था, तो वो कहीं ना कहीं जेंडर न्यूट्रल वहाँ पे कमी दिखाई देती है कानून में भी और प्रशासन में भी, तो उसमें सुधार करने की सर ज़रूरत है। तो कानून को जेंडर न्यूट्रल बनना चाहिए, क्या बनाना है? यस सर। हाँ? यस सर। दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन। यस सर, मैं सपोर्ट में हूँ इस चीज़ के कि कुछ चीज़ों में हमारे यहाँ पे जो लॉज हैं वो कहीं ना कहीं जेंडर बाइज्ड हैं, तो उनमें सुधार करने बट की लॉट जरूरत ऑफ विमेन आर सेइंग इट इज नॉट द टाइम टू मेक इट जेंडर न्यूट्रल। उनका कहना है कि अभी काफ़ी विमेन अभी भी बैकवर्ड हैं, Yes, so sir. you can't make it gender neutral, but you should be more sympathetic to the case at hand, the particular circumstances of the case. You should be sympathetic in case the man is the victim. है। यस सर। So like in Atul Subhash's case, he is the victim. यस सर। So in that case, of course, you have to be sympathetic. When he is given a dying declaration against his wife and mother-in-law, Yes, so sir. naturally it is the truth. Well, dying declaration is as good as the final statement. No, that is as good as it can be taken in a court of law. Yes. जी सर। ठीक है, so person can be even convicted based on Yes, yes, yes. ओके सर। तो ये आपको पढ़ना होगा, आपको मालूम नहीं है ना डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। यस सर। See, if you are interested in police service, थोड़ा सा जानकारी हासिल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यस सर। रेप इज ऑल्सो डेफिनेशन BNS में रेप न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल नहीं है। आपका रेप है ना, यस सर। IPC में जेंडर न्यूट्रल है, इसमें नहीं है। हाँ, that is true. But you think about it. Maybe you can call her for another interview. We can try to help her. टाइम कम है ना, 7th है यार। I think so she will read 5 दिन तो very टाइम well. है। She doesn't have to be so much worried as she is looking nonplussed. That's not the reason. You don't have क्यों to be घबरा worried. क्यों रहे हो? 180 में और 180 तो कम मार्क नहीं है, ठीक है, 190 दे देते हैं आप। नहीं नहीं सर, जेन्युइन मुझे चाहिए थे। I think she can read on All her the own. best. Yes, sir. Too much Okay, sir. effort. Okay, all the best. All the best. Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू। You are this, if you want. Good day. Thank you very much. बोलने लगते हैं तो रुकते ही नहीं है सर।